areas around that place, rainfall is almost from 6 to 7 to 8 months, and the water levels are very high. And when the flood prone places, during the monsoons, they become absolutely difficult to navigate. And this is dual nature of this project. I think somewhere this talks about the actual Viksit Bharat being comfortable in their own strength. And if the time is cut down from 1 hour 17 minutes, it is easy for us to go across and provide the flood relief. And the seismic region is prone to earthquakes and all. So this kind of infrastructure, when it is developed, definitely you can provide not only humanitarian assistance and disaster relief, but the motorability has come into a strip from where the fighter jets can take off, which is as per, even when we were discussing and listening to Dr. Jha, he also made a mention that these are wonderful things and India needs infrastructure like this. So it just not provides the relief, but also enhances Indian Air Force ability to sustain operations in border areas, something like Assam and Arunachal Pradesh during contingencies. It provides operational flexibility also. See, we have seen after the Galwan, the crisis was because of the infrastructure issues also. It became very, very important for us to have projects developed like this. And when you have projects like this in the border areas, it not only improves confidence of people from Northeast region, it also aids trade. When the 16 aircraft have not just landed for optics, they have also told the world that, we are ready for business and open these areas. And I think this is going to be a boon for northeastern areas to do much more business, to travel faster, and, to mobilize their assets where needed. Shivani. Absolutely, ma'am. That is a very important point. Optics, that's something that, the Prime Minister could have just landed in a C-130J and then moved on to Guwahati for the inauguration of the bridge. But Group Captain Jha, we saw 17 aircraft take off and land from that narrow strip of highway. Goes on to show how efficient our pilots are, goes on to show that in times of emergency, we can land anywhere. And we will, in fact, if you destroy our airstrips that are established, we can land even on the highways without sophisticated ATC towers. We do not need that. We just need a highway, and we will, in fact, make sure that our fighter aircraft, our helicopters are agile and responsive. Shivani, I'm aware, I think it is somewhere around 2006 that there was a presentation in the Ministry of Defense, when at that time, out of the 228 odd national highways, Indian Air Force had identified about 21 highways into which such dual purpose airstrip could have been launched. But at that time, subsequently during the UPA days, government was not very keen to make such arrangements wherein dual type of roads could have been made, because it needs special care. When we use any highway for the aircraft landing or operating purposes, there are many challenges, there are many requirements which has to be kept in the mind. The location, which has to be clear of any obstruction on the path, either the landing or takeoff. There can't be any of the high poles, high voltage wires in and around there. It has to be in a direction wherein sun doesn't come onto your eyes, whether it is the morning time or it is the night time. So it has to avoid 90-degree or 270-degree of the approach or takeoff. So and the place where you make a landing, first impact, when PM today landed in the 137G, it is the hundreds of ton amount of the loads that gives a first impact onto the roads. So these roads have to be strengthened almost about 10 feet or so with the asphalt concrete which has to be there. And it is not only small piece, it has to be over tens of meters, almost about 100 meters of this which has to be there, because aircraft can't make a pinpoint landing at one place. It may be even if it is
2 seconds or 3 seconds later landing. It goes to about say 50 feet, 50 meters or 100 meters beyond. So those landing grounds is for over a reason. Secondly, most of the heavy lift aircraft or the fighter aircraft, they need a landing zone or landing run of about 2.5 to 3 kilometers. So these highways in that direction without any obstruction have to be of that much of length. So these are the fewer things that I am mentioning to you right now. But like this, there are many other things. They can't be a meat shop somewhere in and around in the city where birds activity may be there, where trees activity may be there, where any other challenges are there. So it can't be in that region. So these requirements, they are the prerequisites for making this dual purpose aircraft landing ground, emergency landing ground. And it is for the different purposes. And now it is not only an indicator to the enemy that we are nearby, it is also a very big boost for the morale of the military as well as the paramilitary who are deployed in that area. That should a need be there, we are just minutes away from giving you the assistance, whether it is logistics or whether it is the evacuating any of the patients or any casualties. So that is how it all gives you the impact. And over the period, you don't have to be restricted that yes, so and so air base is there. What happens if in today's days of missiles, wherein the enemy aircraft need not come, the missiles can hit the airstrip, can damage your runway? Then what happens there in that? You don't have any landing ground. So under those circumstances, these road come runway, this becomes so much of vital. Over a very short time, additional infrastructure can be created in and around these roads, wherein you can set up the complete operational basis. Absolutely. In fact, Commander Bhushan Dewan, if I can also get your observations regarding the optics over here at play, because this is very close to our eastern border, to the line of actual control. All right. Before I come to you, sir, these are live visuals that we are getting from the Moran airstrip, where the Indian Air Force Chief is briefing the Prime Minister about that emergency landing facility, about ELF, and he's showing the details of what kind of aircraft have actually landed and taken off from there. We saw a Su-30 Rafale take off and land at the airport airstrip over there. We also saw helicopters perform rescue and relief operations as well. So the Indian Air Force Chief is just giving a debrief to the Prime Minister of what all is actually happening and how this facility can actually be useful over here. So this is the Prime Minister Narendra Modi we earlier saw, who was attending this aerial display of fighter programs, transport and helicopters at the Moran bypass. In fact, let me now go across to Commander Bhushan Dewan for his observation regarding this optics that we were talking about, how India is flexing its muscle, because we have always been very perturbed about the chicken's neck, the the Siliguri corridor, how it can cut off the northeastern region. If we are looking at roadways, we have airstrips, but those can be in fact taken out in times of a hypothetical war. But now with such emergency landing facilities, we are making sure that relief, rescue and operations are conducted on an immediate manner. Exactly, Shivani. The whole approach is you need to have several standby options. As Group Captain Jha was also mentioning, we need to have several standby options in case there's one facility gets damaged, you have another option, and so on and so forth. Only with such, I think this is part of overall deterrence to the potential enemy, that we are around everywhere and we are not cannot be subdued
It is altogether a different mindset from the earlier era of 30, 40 years back, where the feeling was, no, don't go near the border areas. I mean, don't inhabit the border areas instead, unless, the Chinese will also come and do that. So that is wrong approach. And we are not an aggressive country. We do not initiate aggression any time. But we need to be so well prepared and visibly prepared for the enemy to see, so that he does not dare to take any untoward step. And the war also, Indo-China war, it is Chinese finally called for the ceasefire, because why? This NIFA region, Northeastern Front Agency, this region is a place where the Chinese logistic lines become so overstretched that they can't take up the things, and they cannot match up with us. And this is what we need to do aggressively, so that they do not think that, any potential aggressor can, as you rightly mentioned, come and threaten our chicken neck, Siliguri corridor and so on. So this omnipresence of armed forces, inhabitants, this is the thing to do, and this is being done. So this is a very clear message to anybody. And we know that new scenario, even though the new elections in Bangladesh have thrown up a more moderate government in the form of BNP government, but the Pakistan has been trying to foment trouble and trying to control, trying to muck around, if I may say so, in Bangladesh, incite them, incite terrorism, and they have been trying to Lohargat airfield, old airfield, which is the south of Siliguri corridor. So those tricks they have been trying to play with. So our presence is really a message to all the Western theater or the Eastern theater enemies, even Bangladesh emerging yet to be wait and watch. So they know the best form of protection and defense is total preparation, and that is what we are doing, and total presence. And yet we have to still cover a lot of ground. I must tell you, we still have to cover a lot of ground, and which we are doing. The momentum has picked up, and we are going ahead, and whole armed forces are very proud of this. I'm sure the common citizens of the Northeast are proud of it, and we make sure that what is ours is rightfully used, fully used, for every inch of land is used for the purposes that we have every kind of purpose, economic purpose, defense purpose, and so on and so forth. But that is sends a message that India is a strong country, India is a powerful country. India doesn't let things just lie for anybody to come and walk in and so forth, which might have been the case earlier on, regrettably. Absolutely. Absolutely. In fact, let me also go back to, all right, unfortunately we are running out of time. I thank Commander Bhushan Dewan, Lieutenant Colonel Himanshi Singh and Group Captain Dr. V.N. Jha for joining us on the broadcast with that valuable perspective on this historic day today. With that, we are wrapping up this bulletin and slipping into a short commercial. जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता।
मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू ज़ेब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ेब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू ज़ेब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। Hello and welcome to Legally Speaking with me, Tarun Nangia. We are today going to discuss an issue that will touch about the entire population of India, which is close to 150 crores, that will be affected by the Electricity Amendment Bill 2026. This sector is also very interesting because this is the most litigious sector. There is so much of litigation in this sector. There's so much of, and pan India. I mean, every state will have hundreds and thousands of litigations, and there is just so much happening in the power sector. And that's why this bill, of course, will have a far reaching impact, principally being the whole talk of having multiple players who can provide the electricity services to commercial and domestic users in a single geographical area. As of now, we had carved out areas for different companies where there was only principally one seller of power which we could buy from. This is a sea change. Indians have never seen this before. Even I don't understand how this is supposed to play out, given that the infrastructure is common. But I think that's for the experts to answer. I want to welcome Senior Advocate Buddy Ranganathan. Thank you for your time and thank you for joining us on Legally Speaking, and Advocate Sri Venkatesh, and most of all whose comments we would await on this whole issue is Justice R.S. Chauhan, who we all know has served as the Chief Justice of Uttarakhand, and he sort of has a keen bird's eye view and has studied this subject, and we request you to share your overview on the show. At the outset, let me request Senior Advocate Buddy Ranganathan to give the opening comment, and then we move on. Over to you. Thank you, Tarun. Thank you for inviting me on this show. And it's very nice to share the same screen with illustrious people like Justice Chauhan and my friend Sri Venkatesh, whom, of course, I affectionately call Venki. He allows me that privilege. But it's very nice to be here. The electricity sector is surely one of the sectors which currently ongoing a lot of changes, a lot of turmoil, a lot of new developments. And that is something that, fortunately for us, keeps people like Venki and me in demand. So, we remain grateful for these changes and for these things which are taking place in the electricity sector. So, Tarun, in terms of the new national electricity policy which is being promulgated, there are several good points, frankly. There are several points which have been brought into focus, which are surely there to stay for the next good 10, 15 years. But like most other policy documents, I think it could have done a little more. It could have also focused on certain aspects of the electricity sector, which I think need urgent attention. And there are certain aspects which I simply cannot agree with, which we will deal with in a little more detail. So maybe I can hand over to Justice Chauhan and we can hear from him first. And then Venki and I can take a go at it.
Point well taken. I'll go to Advocate Sri Venkatesh, who will give a curtain raiser on the electricity amendment bill and raise some head points on what he finds the bill is taking forward in the sector and where what issues need a relook. Some issues do they need some more discussion? All of that and more in his comment. Over to you. Thank you, Tarun. So, as Buddy just indicated, that this electricity sector, while has had its good run for the last 23 years in terms of, a lot of privatization, a lot of investment coming into the picture, a lot of disputes, a lot of problems also that we have seen encountered over the years. But there is actually now a requirement to shift the focus from electrification to something other than that. When the 2003 Act came, the idea was really electrification. That seemed to be the primary objective, because ultimately that was something where we were lagging behind. That was a focal point in 2003. Now in 2026, we have two documents to discuss. One, of course, is the bill, which is right now not been tabled before the parliament. Therefore, I don't know to what extent would we want to get into it. What is actually also available in the public domain is the policy document, because policy is nothing but a sort of a vision of the central government, which they issue every decennial, every 10 years. They issued in 2006, they issued in 2010, and then now issued in 2026. In those policy documents, the government really wants to bring out its vision for the power market or the power sector to progress towards. So I think that is what is interesting that we need to look at. I agree with Buddy that there are certain issues which are very interesting, certain issues which are very alarming, which may have a far-reaching consequence on the larger consumer interest, so to speak. So there are about 5 things that I could come across which are found to be a little radical, which is very different from what 2016 policy contemplated, and which, in my understanding, would be a challenge if the act is not amended. Because simply having a policy which does not have the backing of the parent statute would be a difficult document to implement. So these are the 5 things that I could think about. First and foremost, there is now a concept of automatic index tariff revision. See, Delhi is a battle where Mr. Ranganathan has been a bulwark in fighting against the Delhi regulator. They don't revise the tariff. So now the policy says automatically it will revise. So this is something very interesting, very welcoming. But what is the enabling framework under the parent statute still required to be seen. Second is there is no universal service obligation for a consumer of 1 megawatt and above. Now, what that effectively means is that all the high-end consumers in a distribution licensees mix, they are up for grabs from anybody and everybody. So it's an open play, open competition. While very good for industry per se, because industry will have the choice to choose between X licensee and Y licensee and optimize its cost of procurement. But having said that, the distribution licensee will lose out on a lot of revenue. So that is something which needs to be balanced. Thirdly, of course, they want to abolish cross-subsidy surcharge on manufacturing activities, which was never the case because the Act only exempted it from captive consumption, not on any activity, which is also a radical idea. And lastly, I think the government realizes that with all this renewable energy which is being produced in the country, and we've met all the targets. In fact, we've surpassed all our goals, international convention goals, etc., etc. There is a need to have a balancing network of battery storage operators in the country, because this RE power is not effectively being utilized throughout the day in the country. So therefore, there's a huge let's say emphasis on storage capacity. So these are the 4 or 5 broad indicators that I could see through the policy, which I find to be radically different than what the current scheme is. Of course, they have their own challenges that they will have to perhaps amend the parent statute. Then only this policy could perhaps be implemented. But that is again not tabled before the parliament yet. So that is for time to see. Therefore, this is my opening understanding of the 2 documents which are before us today in terms of debate and discussion. Thank you, Advocate Sri Venkatesh, for sharing your opinion on the draft. I'd go to Justice R.S. Chauhan for his opening comment. Firstly, thank you for inviting me to your show, Tarun. Basically, I agree with what Mr. Venkatesh and Mr. Ranganathan have said. If you really look at the policy 2026, it's almost like an outline sketch given by an artist. Now, he will tell you that this is what overall the picture will be. However, the nitty-gritty details of that painting are yet to be pushed in. Number 1. Number 2,
Yes, what is interesting about this policy is that it is looking at two aspects. Number one, the practical problems that are faced by the electricity sector today, and yet at the same time, it looks at the future. And to me, that is a very good policy perspective. Yes, there are certain details that we are still waiting for to see how it will be resolved. But as Mr. Venkatesh rightly put it, it all depends on how you amend your act. For example, when you talk about automatic tariff revision, now that is a good thing to have because as Mr. Ranganathan has been fighting the battle to get the tariffs revised. But the other question is that there's a cap in the act which says that thou shalt not revise it to the extent that it starts hurting the consumer. Now, how do you work both these things out together will be very interesting to see because they are practically opposed to each other. Suppose if the yearly tariff gets revised to the extent that it starts hurting the interest of the consumer, then who will step in? Is it that the commission will step in and say, I'm sorry, you are not permitted to revise to this extent? How will it work out? But anyway, all those nitty-gritty details naturally will have to be worked out before this policy is actually put into action. But I think the vision of the policy is very interesting, and as pointed out by both Mr. Ranganathan and Mr. Venkatesh, there are a lot of dynamic thinking that's going on, and that is very heartening to know, especially with regard to the variable renewable energy sector. Let us see where India leads, because now we are entering into the green hydrogen sector. Perhaps we will become one of the leaders of the world. So I think the prospects are very bright, but let us see how it translates itself. You know what I want to highlight, which I will read out to you, and I would request the opinion of all three of you, is what our MOS for Power, Mr. Shripad Yeso Nayak, said in Parliament. He said that the draft amendment bill, electricity amendment bill, is aimed at cutting infrastructure duplication in the power sector, and this it's doing by allowing multiple licensees in the same area to share the infrastructure, and the costs that for using that network will be decided by the regulatory commission. He also said that this will sort of save a huge cost. Otherwise, every licensee will have to build its own network, resulting in duplication of poles, wires, substation. That only makes power costlier. And he said this in Rajya Sabha a few days ago, this 2 days ago. And now he also went and highlighted that there will be regulatory oversight to this whole process, because this is the first time that we are going to sort of undertake such an initiative where for every area there could be multiple sellers of power, and a clear framework will be sort of brought out so that this could be done smoothly. I actually don't understand how is this going to be possible, because this, on the face of it, looks very confusing. Maybe the experts know it better, but let's take the opinion of someone who litigate a lot in this sector. I'll go to Senior Advocate Buddy Ranganathan for his comment. Thank you, Tarun. Yes, you're absolutely right. This is a very interesting concept, but it is not being introduced for the first time in this new amendment bill. The possibility of having multiple licensees already exists in the Electricity Act 2003. We already have situations of multiple licensees in the same area in 2 or 3 parts of the country, the primary being Bombay, where the northern part of Bombay is covered by Adani and Tata, and the southern part of Bombay is covered by Tata and BEST. So we already have areas where you have multiple licensees in the country. You have Torrent in Ahmedabad, for example, where you have the state discom and you have Torrent. You also have places in Bengal, which is called the Asansol Raniganj district, where you have 3 licensees. So you have the West Bengal State Distribution Company, you have DVC, which is very close to Venki's heart, and you also have another third licensee called called India Power Company Limited.
So you actually have 3 licensees in the same area giving supply to consumers. So what is being proposed is actually not very new. It already exists even in the 2003 Act. There are, of course, some differences. In the case of the Raniganj Asansol district, all the 3 licensees have to use their own networks. There is no network sharing. The network sharing actually started or even continuing even till date in Bombay. And all this actually started many, many years back. But the sharing of the network emanated from a judgment of the Appellate Tribunal for Electricity in Appeal 246 of 2012 of the case of Tata Power versus the MERC, where the tribunal said that the commission must explore the possibility of sharing the network for 2 reasons. One is the saving of cost, because as you very rightly said, that if 2 licensees create their own independent networks, obviously the cost is going to be double. But the second part, of course, also was about the sharing of the network. Now, this sharing of the network has been attempted by the MERC, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission, in a series of orders starting from 2012 onwards. But the sheer number of disputes and the sheer number of differences which have happened between the 2 licensees in Bombay is humongous. Those disputes are still being fought in the courts today at various levels, some in the MERC, some in the APTEL, some in the Supreme Court, and those disputes are still going on. There is virtually, literally a dispute on every single new line which is sought to be laid, every single new substation which is sought to be set up. So maybe it's good for consumers, maybe it's not. That I think time will still tell. But it's surely good for the legal profession. I mean, I can tell you that, because of the sheer number of disputes which have happened on that small area. But having said that, even today in the Draft Electricity Amendment Act and in this new National Electricity Policy which is there is no clear framework as to how this will be effectuated. We have learned from the Bombay experience. We have learned that the disputes and that the areas of controversy are huge. But there is no clear framework as to how it will be done. That's one. The second is, what happens to existing networks of existing licensees? So today, for example, you may have the Delhi Discoms, you may have the UP Discoms, you may have Gujarat, you may have Tamil Nadu, you may have wherever. Now, all these distribution companies have set up their networks over the past 50, 60, 70, 80 years. There are costs which have been incurred on the setting up of that network, and there are costs which are being incurred on the continued upkeep and running of those networks. Now, who pays that cost? So if a new licensee walks into the same area and now says, Mr. Existing licensee, please give me over your network because I need to now come and sell to consumers in that area. What happens to the cost of the network which is already laid? What happens, more importantly, to the cost of the network which is laid but not yet recovered in tariff, which all of us call regulatory asset? And India's got a surfeit of regulatory asset. Today we are talking about 1 lakh crores and 1,70,000 crores and numbers which are mind-boggling. So what happens to that unrecovered cost which is supposed to be spent on that network? Now, who's going to recover that cost? So just to give you an example, so in Delhi, for example, you have, say, BSE's Rajdhani in the south of Delhi. It lays its network. It has a pending claim today of several thousand crores of regulatory asset, which it has spent on its network and not recovered. Tomorrow, a new licensee walks in, tells BSE's Rajdhani, boss, I'm taking your network, I'm going to sell to the consumers in that particular area, maybe Friends Colony, maybe Maharani Bagh, maybe Niti Bagh, wherever it is. Now, the new licensee comes and sells in this area. What happens to the unrecovered cost of the network in these areas? Will the new licensee collect it? Will the new licensee collect it and make it over to BRPL?
Will BRPL continue to recover this unrecovered cost in addition to what the new licensee is going to incur? These are all very, very complicated issues. There are no easy solutions to this. And unfortunately, neither the Electricity Amendment Act nor even the policy come anywhere close to laying down a framework for how this is going to be done. So in theory, it's a brilliant principle. Absolutely no doubt about it. But it has been done in things like, say, transmission. So where you have the central transmission utility laying down the power grid network for the whole of the country and everybody then uses it. It's a common transmission network which everybody can use. Now, if you're going to conceive a distribution network in the same frame as a transmission network, there are a host of issues. So in theory, it sounds very nice. It is very nice. But the practical working of it is going to be very, very difficult. Point well taken and shared about the sunk investment cost in the infrastructure created by the DISCOM. I'll go to Advocate Sri Venkatesh for his analysis of this predicament. So, Tarun, I'll tell you, I had the occasion of being part of this. I'm sure Mr. Ranganathan was also part of this dispute, this Bombay dispute between Tata and Adani. See, our act, when it came in 2003, it actually contemplated parallel licensees, but it contemplated supply of power through your own network. That is the original act as it stands on the statute book. Now, the tribunal was faced with a situation saying that, look, there are two licensees, Tata's and Adani. Tata's wish to lay the network. Adani's, or that time Reliance, were against that laying of network because they said, look, they are laying networks only in high density areas and not in low density areas. So they're cherry picking consumer. That was the allegation. So the question that which came up for consideration was that, look, why should a duplication network be permitted? Why can't one use the other? Now, this was actually in teeth of what the act actually said. The tribunal said, no, try and explore the opportunity of, using each other's network. Now, that was the genesis, and how till date in Bombay, there's something called as changeover and switchover consumers. Changeover means a Tata consumer buying power over Adani's line. A switchover consumer means a Tata consumer switching physically to Adani line. So that's really how they operate in Bombay. So to Mr. Ranganathan's point, while I agree that the enabling framework is not yet on paper, it's not discernible from the paper, but in my own experience, how MERC maturely handled, it derived a fixed cost of the existing assets of Adani for the purposes of supplying power through changeover. It said, look, Tata, if you wish to use the network of Adani and supply power from your network, supply power yourself, then you will have to recover this additional cost and give it back to the licensee who owned the wires. That was of course, to begin with, that was a very simplistic formula to make sure that the incumbent licensee who set up the network gets paid. The licensee who's using the wires, the supply licensee, also recovers that cost and pays that money to them and makes his profit in terms of selling power. So it started with that. That was the basis and how Bombay started. Of course, now after that, there has been a lot of disputes because there is still some gray area saying that who will lay new network, because there are some protocols set up by MERC, the regulator there, that who will lay network in terms of. Bombay has a very unique problem. Bombay does not it grows vertically. So you may have an existing network, one substation very close to a big building coming up. So the fight is who will supply in the building. So let's park that aside for a minute. I personally foresee, as long as regulators are willing to emulate what MERC did on first principle basis, which is to decide what is the required recovery of cost of the existing network, this wire and supply licensee business can work itself out, because then you will not be competing to lay network. You will actually be competing only on cost optimization and supply of power, because a large part of your supply of your as a distribution licensee is not just the cost of network, the cost of power procurement. So the real fight will be who will be more cost optimal in terms of giving the final price to the consumer. Of course, here I still feel that the legacy licensees will have a tough time, because they have signed contracts for 25 years in 2010 and 11, whereas the newer licensee will not sign 25-year contracts. So they will have to emulate some kind of pooling of power purchase, etc., so that this is socialized. But ultimately, with these 2-3 safeguards, if done correctly,
according to me, this parallel licensing can actually do wonders in many parts of our country where there is an urban requirement of power, more so when it comes to HT and EHT consumers. They require large quantum of power and they are actually landlocked to an incumbent licensing and they're finding it difficult there. So this is really going to be, the advantages may not flow to end consumers like us immediately, but it will definitely flow to the economy as a large. So I think that is where there is an opportunity, according to me, that of course this framework will have to be created. Bombay did it, MERC did it. It stood the test of time, and therefore things are still operating very proficiently there. Similar forward thinking is required from all the regulators across the country to sort of implement this scheme, because right now the plain text of the law is not very clear on how this scheme is to be implemented. That's where I see a lot of opportunity. Of course, regulators will have to be a little forward thinking in that aspect. Indeed, and as far as you said about long-term PPAs already in place, there's not much that can really be done in changing the cost of procurement once you have signed a long-term PPA. Yes. So for example, there was a proposal for at least central government generating stations that all the long-term contracts should be pooled to one particular entity, and then he should supply power on an average basis to everybody else, as opposed to a fully depreciated plant supplying power only to, let's say, Tamil Nadu, and an high expensive power plant supplying power to a state like Delhi. They said, let's socialize it. Of course, these are all regulatory interventions that the government is trying to look at, and even the regulators are trying to look at. But this will have to be done at some level. Otherwise, you will have a new licensee supplying power at 1/3 or 1/4 the cost of an existing licensee. Then there is no fun of competition. So competition should be within the limited means and safeguards. So I think that should be the idea of doing. Point well taken, Advocate Shri Venkatesh. I'll take this to Justice Chauhan and also want to ask him, sir. Many people have signed PPAs at rates of 6 rupees and 6.5 rupees also, and they are still continuing. They will continue for a few more years. You can't really wish them away. And then when you have new, discoms, suppliers allowed, the existing one has a PPA at 6 rupees or 6.5 rupees. The new guy will come and offer it at 3.5 rupees. Using the sunk infrastructure cost of the existing guy, the new guy can take over his whole market. Do you think that this is a badly planned policy? To this limited extent, more thought is needed. I don't think it's a badly planned policy, no. The mere fact that there's a possibility of too many chefs coming into the kitchen and spoiling the stew does not mean that we cannot regulate the coming of the chefs into the kitchen. Rightly pointed out by Mr. Raghunathan that yes, you will have conflict of interest. May have too many, people saying that, look, who pays if I use your facilities for transmission or for distribution? But at the same time, what Mr. Venkatesh is suggesting that we already have experience. It's not that we are beginning a new game. We already have some experience. We know what the rules can be set up. And as I said, this is merely an outline. We have to wait till everything nitty-gritty details are filled in, and hopefully, A, they will be filled in by those who are experts in the field. B, yes, I hope when we are talking about amending the act, I hope they will discuss this with the electricity producers, the distributors, the generators, and with legal luminaries like Mr. Raghunathan and Mr. Venkatesh, that how do we go about it? Because these are the two gentlemen who see it from the inside the boxing match. They're not sitting at the ringside. They see it what boxing goes on. With their vast experience, I'm sure the government can, chisel out an act which will save us from all the future pitfalls, because we are already anticipating those pitfalls. People are already putting the red flag that please watch out, don't do this. Okay, if you do this, ultimately it's not the consumer, ultimately it's the economy of the nation that suffers. And I agree with Mr. Venkatesh that at times it might appear prima facie that the consumer is not benefiting, but the economy is. So it depends on whether you look at a short-term goal or whether you're looking at a long-term goal. My hunch is that the government, since it's already talking about this policy being carried till year 2047,
My hunch is that the government has a very long perspective on it, and we should trust what the perspective that the government is trying to implement. Point well taken, but Justice Chauhan, I disagree. I see these two people, as boxers who are chosen to go and punch and fight. Please remember, the best of the boxers then become coaches. If they don't get Alzheimer's before that. So I think there'll be a few more episodes on this, because I'm sure that there'll be fine tuning to this draft. Though it's being discussed in Parliament, of course, what happens in the committees, there is a lot of boxing, in fact, even goes on in the committees, I am told. Much of it's not out in the media, so we have no idea what goes on. But of course, information flow will come. We will just move to a round of closing comments for part one very quickly. Senior Advocate Badi Ranganathan. So, in terms of closing comments on this aspect, Tarun, I would say that before we try and put this plan into action, we should also try and work out on the nitty-gritties. We shouldn't try and put a plan into action and then start thinking about how to solve for the nitty-gritties. Let's do it properly as a package deal. Let's work out the nitty-gritties and then put this plan into action, is how I would like to see it. Point very well taken. Advocate Sri Venkatesh. Tarun, my closing comment would be that I think the government is there are two things. One is electricity is actually a concurrent subject. So a lot of this, what is being done, needs to be agreed by the states for it actually to be implemented. Therefore, I think they will have to play a conciliative role in terms of getting the states on board to agree to these radical changes in terms of tariff revisions, etc., etc. And discom more to do with tariff revision and the utilization of discom network, because there seems to be a lot of opposition in certain states on this aspect. So that I hope that is done on time. Secondly, I think the government is now realizing very clearly that our value of our sector, our power chain, is with the distribution company. And if that value is getting locked because of political pressures, because of non-cost effective tariff being fixed, because of regulatory asset. I mean, regulatory asset judgment, let's take us 30 seconds to dwell upon this. This judgment where Mr. Ranganathan was appearing and I was appearing for another party, which was delivered last year, is a landmark judgment on how regulatory commissions have sat on tariff revision year after year, only on the pretext of keeping, the larger forces happy. And that is a complete, it's a complete sad depiction of sad state of affairs in India, despite regulatory commissions being created. So therefore, the government realizes this problem. Now, this problem is now sought to be addressed through either policy initiatives or amendments to the Electricity Act. So therefore, I think it's a step in the right direction, but one must we as individuals have to also get alive to the fact that the cost of supply is going to go up, because internationally it has gone up. It is not that, we are sitting in an isolated scenario. Therefore, these are few things that one has to keep. The society at large has to come up to speed with this aspect, and then only the sector will flourish. So I think these are my closing comments. I think government realizes that we need to unlock the value of the distribution sector as early as possible. And I think they need to anyways consult the state governments, because ultimately, constitutionally, it's still in the concurrent list. So therefore, they will not have an act which would, which would centralize a lot of things without their consent. So I think these are two things they must keep in mind, in times to come. Point well taken. I'll go to Justice R.S. Chauhan for his comment. While we are looking at the present, I think we should also think about the future. And that is what the policy is all about. It opens up a new chapter. And now that India is committed to cutting the emission by 45% from the level of 2005 by the year 2030, which is just around the corner, our next international commitment is that we will go for net zero emission by 2070. Therefore, there's a need to encourage renewable sources of energy. Plus, how do you bring that into your entire electricity sector? How do we grow? How do we do the storage? How do we do the firming up? What will be the rules and regulations regulating that sector? I think that will be what will be exciting. And to Mr. Ranganathan's and Mr. Venkatesh's future, I can assure them you'll get enough disputes from that sector also to keep all of us busy. But to me, that is the exciting part, because those are what the international community is now talking about.
I mean, what was surprising in the last meeting in Dubai, a oil-rich company where the entire international community commits itself to committing emission and saying that we are no longer going to rely on, fossil fuels. Okay. To me, that is the exciting future that awaits all of us. And that is what we should all look forward to. Point very well taken, but the last word has not been said on this issue yet. I think a lot of feedback from the states, and of course, I think the all crucial parliamentary committee, what inputs are given will also be very important. We take that on the next discussion, but I'd like to thank Justice R.S. Chauhan, Advocate Sri Venkatesh, Senior Advocate Buddy Ranganathan for coming in on this one and sharing their insights and speak as this policy is evolving. The final word on this will be out in a few months, if at all. These things do take time sometimes, but much more to be discussed. But this multiple players in one geographical area is something that is a touchy subject. Of course, Mr. Ranganathan highlighted that this has been done. Of course, there is railways that crosses through all geographies and is a separate supplier, but that's a different issue to be discussed. Appreciate your joining us. Thank you so very much. Thank you. Thank you very much, Tarun. Thank you, Justice Chauhan. Thank you, Venki. Thank you. Thank you. Thank you. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। A very good morning. You're watching Newsx and I'm Shivani Singh. Now we are looking at the top stories that's coming in. This is Union Minister Piyush Goyal, who has launched a scathing attack against leader of opposition Rahul Gandhi after his comments on the trade deal. During a press conference, Piyush Goyal actually slammed Rahul Gandhi, saying that he is not mature enough to understand the deal. In fact, listen into what Piyush Goyal had to say. भारत 2047 तक बनाने का हम सब का सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसको फिर एक बार उजागर करता है। कल ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव, कर्तव्यों की आधार सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन किया, उस समय सभी को आह्वान दिया। क्या Let me in fact go across to my colleague Shahid Ansari, who is joining us on the broadcast for more on this. Shahid, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारी यूनियन मिनिस्टर ने, उन्होंने एक स्केदिंग अटैक लॉन्च किया है राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, पीयूष गोयल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटे मोटा अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे जो है राहुल गांधी और उनकी नाकामजी को लेकर हमला किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किन किन बातों पर इशारा किया और क्या क्या अहम बातें कही। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि जो बजट पेश हुआ है वो विकसित भारत के मार्ग को दर्शाता है। फिर देश को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, सबके इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी लाना, उसमें गति देना, भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है कम करेगा, आर्थिक गति तेजी से जैसे आगे बढ़ेगी। दूसरा अहम भाग इस बजट का ये है जो देशवासियों के सपने पूरा करेगा। और बजट पर उन्होंने जो बात कही है वो बहुत अहम रही है। बहुमुखी सोच पीएम के भारत के विकास को दर्शाती है।
डेटा केवल नवी मुंबई में आते हैं, इसका सीधा लाभ महाराष्ट्र को भी मिलेगा। तीसरा स्तंभ है वो जो सबका साथ सबका विकास, हर नागरिक का चाहे वो जहाँ रहे, जिससे भी जाति का हो, हर एक के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार बढ़ाना इस बजट का आधार स्तंभ माना जा सकता है। महाराष्ट्र को ज्यादा लाभ होगा। रेलवे में बड़े पैमाने पर बजट सुनिश्चित किया गया है। जब यूपीए की सरकार थी तो 1,000 करोड़ का प्रावधान होता था, इस बार 20,000 करोड़ का किया गया। तो बच्चों के कौशल को जो है डेवलप करने के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जब रेलवे और पोर्ट का विकास होगा तब स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र का इसको फायदा होगा। पर्यटन को जो है ज्यादा अहमियत दी जाएगी। शिवाजी महाराज के किलों पर लगाए जाएंगे जो, और इसके साथ साथ जो है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उन्होंने कहा है कि 38 देश के साथ किए गए हैं, उनसे आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड का जो स्तर जो है 70% जो है भारत को भेज है। उन्होंने किसानों को लेकर जो है बहुत अहम बात कही है। ये कहा है कि किसानों के जो है हितों को लेकर जो है सुरक्षित रखा गया है। लेबर वर्ग के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। आने वाले दिनों में भारत को विकसित करने के लिए अहम कदम है। कांग्रेस आज निराश है, उनके पास विकास के लिए कोई सुझाव नहीं है और रोज जो है झूठी बातें बोलकर जो है भ्रम फैलाते हैं। एक अहम बात इन सबके बीच उन्होंने जो कही वो उन्होंने यही कही कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रिएटेड नेता को उनके अनाउंस पे ये लाख कोशिश कर लें कि पीएम को और भारत को विकसित बनाने से रोक नहीं सकता। ये जनता के द्वारा जो है ठुकराई हुई पार्टियां हैं और जब नासमझ लोग राजनीति में आते हैं तो ऐसे आरोप लगते हैं। अब देखिए ये बात जो है उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे सीधे कही है। तो पीयूष गोयल ने इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर भी जो है एक अहम बात कही है कि भारत आज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है प्रगति कर रहा है और आने वाले दिनों में दोगुना हो जाएगा। जो फ्री ट्रेड किया गया है उसमें 45,000 करोड़ का टेक्सटाइल ट्रेंड का रास्ता खुल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में 0 ड्यूटी टेक्सटाइल पर लगाई गई है। अगर वो अमेरिका से कॉटन और यार्न खरीदेता, इतना बड़ा मार्केट जब खुलेगा तो कपास की मांग बढ़ेगी और कपास का मतलब आप शिवानी समझ सकते हैं कि यानी वो सीधे सीधे फायदा जो है महाराष्ट्र को होगा। इसके साथ साथ जो है उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि राहुल गांधी जैसे जो नासमझ को कैसे नेता बनाया गया। ये सारी बातें रही हैं। इन सारी बातों के बीच में उन्होंने जो है भारत के जरिए जो भी सारी चीजें इस बजट में पेश की गई है उसके फायदे उन्होंने गिनाए हैं और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने कटाक्ष किया, उन पर हमला किया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी को उन्होंने नासमझ नेता का भी खिताब से नवाजा है। ये कहा है कि जिसको कुछ समझ नहीं वो इस तरह के बारे में बात करते हैं। और दूसरी अहम बात की वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें जनता ने ठुकराया है। कई और जो नीति रही, पॉलिसियां रही है उसको लेकर जो है उन्होंने कहा है कि जिसको आज कांग्रेस ठुकरा रही है वो तो खुद उनके समय में रही है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। जी शिवानी। जी शाहिद, और जब हम ये पूरी जो स्टेटमेंट है उसको भी देखते हैं, आपने मेंशन भी किया कि कॉटन के बारे में बात हुई थी और फार्मर्स के बारे में हमारे यूनियन मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है फार्मर्स को भटका रहे हैं, ये गलत फहमी जो है वो फैला रहे हैं कंट्री में। जी शिवानी, देखिए दो चीजें हैं। एक तो कपास का जो मामला है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है ज्यादा करके, और आपने देखा होगा कि कपास को लेकर जो है महाराष्ट्र के किसान बहुत ज्यादा गंभीर है। दो चीजों उन्होंने जो किसानों को लेकर और राहुल गांधी को लेकर जो बातें कही वो आपको मैं बता दूं कि किसानों को जो है इससे बेहतर अवसर मिलेंगे जो उन्होंने कहा है। 70% जो है मार्केट भारत के लिए खुल गया है। इसके अलावा जो है यूरोपियन मार्केट हो, ब्रिटेन के न्यूजीलैंड हो, शून्य ड्यूटी पर जो है प्रोडक्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के किसानों के जो है हितों को सुरक्षित रखा गया है। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है और यहाँ भी क्या बन रहा है। ऐसी चीजों को हम भारत आने नहीं देते या ज्यादा ड्यूटी लगाते हैं। महाराष्ट्र के मसाले, फल और सब्जियां, इसके लिए उन्होंने कहा है कि अब इसके वजह से जो है जो विश्व की मार्केट है वो खुलेगी और इससे कहीं ना कहीं फायदा जो है वो किसानों को होगा। किसानों का सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के किसान, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो फैले हुए किसान है जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा। 70% का उन्होंने जिक्र किया है तो सभी के लिए किया है। और दूसरी अहम बात जो कपास को लेकर कहा है, महाराष्ट्र में देखिए कपास की जो खेती होती है और उससे जुड़े जो किसान हैं उनको फायदा होगा। और एक अहम बात यह है कि भारत में कोई चीज आती है फिर वो मैन्युफैक्चर होती है फिर भारत से वापस जाती है, तो ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए जिक्र किया है कि इसके जरिए जो है रोजगार के मौके बढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो कारोबार है उसमें इजाफा होगा। और उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक नासमझ लीडर की जो है एक समानता दी है और कहा है कि वो नासमझ है और वो किसानों को जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्हें ताज्जुब होता है कि ऐसे लीडर ऐसी बातें करते हैं जो जिसे पार्टी ने ठुकराया हुआ ऐसे लीडर जिनके अंदर समझ ही नहीं है, वो पूरी तरह से जो है डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा सत्ताधारी सरकार को। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की हरकतें उनकी किसी भी तरक्की के रास्ते से जो है बंद नहीं कर सकती। विकास का ये रास्ता खुल गया है और ये बढ़ते जाएगा।
जी शाहिद, और जब हम ये पूरी स्टेटमेंट को भी देखते हैं तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये भी कहा है कि बीजेपी जो है वो जो फेक नैरेटिव राहुल गांधी जी एलिजिडली स्प्यू कर रहे हैं उसको भी वो लोग काउंटर करेंगे, उनका इनफैक्ट बस्ट करेंगे ये जो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। देखिए शिवानी, असल में मामला ये है कि केंद्र सरकार को लेकर और राहुल गांधी ये सारी चीजें जब से भी चल रही है, आप देख लीजिए, हमेशा से सत्ताधारी पक्ष रहा है तो विपक्ष हमेशा से जो है उनकी सही नीतियों को भी जो है विरोध करते आया है। और ऐसा नहीं है कि ये आज के समय में है, इससे पहले भी चीजें हो चुकी हैं। अब क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ राहुल गांधी जैसा चेहरा है और उसके अलावा और कोई चेहरा शायद है नहीं, या राहुल गांधी की जो बातें हैं उन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस उसी नीति पर चलकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन हालिया जो बजट रहा, इस बजट को लेकर राहुल गांधी के जो बयानात रहे हैं या उनका जो रुख रहा है, रवैया रहा है, इसको लेकर जो है बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। और बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के जो उन्होंने जो एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की है, उस माहौल को जो है वो पूरी तरह से खत्म करके सही बात जो है वो देश की जनता, देश के किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल शाहिद, हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट इज प्रदीप भंडारी, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन. Thank you so much, sir, for joining us on the broadcast. Mr. Bhandari, when we're looking at this entire statement that is coming from the union minister over here, Piyush Goyal, sir, he has said that we will bust this fake narrative that the LOP is in fact trying to establish. Well, it's aptly clear that Rahul Gandhi is only attempting to spread fake news, and he's trying to launch his politics for the 100th time, because he's failed for the 99th consecutive time on the Indo-US trade deal. The reality is that the Indian farmers have been protected by the Prime Minister Narendra Modi's government, and the delegation which met Rahul Gandhi were nothing but a cohort and a group of Congress workers disguised as farmers. Unfortunately, whenever the country does good, it is Rahul Gandhi who has problem. Absolutely, Mr. Bhandari. In fact, the union minister also said that there is, Rahul Gandhi is trying to instill fear among the farmers regarding this deal as well, the US-India trade deal. His entire politics thrives on fake news, and his entire politics thrives on speaking one lie for the 1000th time. Even Goebbels would, feel himself as an underperformer when he compares himself to Rahul Gandhi. But the truth is that whenever Rahul Gandhi goes in the court of public opinion, people of this country realize that he's nothing but a fake news peddler. He is unfortunately unhappy because India has been able to get the best deal with the United States of America with lower tariffs than China, and it will benefit our gems, jewelries and leather, including protecting our dairy, poultry and farming sector. Mr. Bhandari, if I can request you to please stay on with us. Also joining us on the broadcast is Dr. Pooja Tripathi, Congress spokesperson. Thank you so much, Dr. Tripathi, for joining us on the broadcast. When we are looking at, these statements that are coming in from the BJP, how is the Congress looking to respond to them? I think this pathological obsession of Mr. Goyal and Bharatiya Janata Party with Rahul Gandhi is sickening. We have been raising some pertinent questions on the Indo-US trade deal. We have been raising some, and not us, the farmer communities, the representative of farmer communities have met the leader of opposition and raised some pertinent issue. Raised some issue of why 18% tariff on us and 0% on Bangladesh, and that's why we raised some issue. But then look at their way of countering us, look at their way of press conference. The first press conference that Piyush Goyal ji did to explain us the Indo-US trade deal, it had 27 times mention of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is immature, Rahul Gandhi is this, Rahul Gandhi is that. It's not about Rahul Gandhi that you have to talk, but unfortunately that's all you know is how to yesterday at 11:30 in the night, Piyush Goyal ji took a press conference and in a very troll-like language said ki Farzi Rahul Gandhi. So we are asking you some very, very important questions. We are asking you that if we choose the Bangladesh route, our entire cotton farming community and cotton industry will be wiped out. That's you said. If we do not choose it, our textile industry will collapse. But no, you'll not answer it. You'll just say Rahul Gandhi, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi. And that's a pathological obsession, and that is taking
You ask Piyush Goyal ji why we have committed, why there is a panel on our heads to check if we buy import oil from Russia. He say ask Jai Shankar ji. If you ask Jai Shankar ji, he say ask Piyush Goyal ji. This ping pong that's happening, our country is at our started, our country is suffering because of it, because they know that they have signed a very unfortunate deal, a deal that's hampering the farmers, it's hampering the industries, and that's why they just know one thing: to attack our government. Absolutely, ma'am. In fact, Dr. Tripathi, if I can also get your response to the allegations that there is a fake narrative that is being built across this entire India-US trade deal. First of all, we should come clean on what is the relation of Mr. Hardeep Puri to Epstein files. I know media has been blocking it, media has been gagging it, but we want to know what the central minister of petroleum, when his name comes in 430 times and he asks about the exotic islands, when he says half one, what does he mean? And Mr. Puri has been lying in and out in various interviews. He has been appearing since 2 days. He has not met, then he has met, then he has friendly relations, he had no friendly relations. First of all, please come out and give us exact picture of what you were dealing with Epstein, somebody as pedophile and child sex trafficker. And if India-US trade deal is a step to mask whatever may come on in Epstein files, then the question is genuine. There's a 430 times a central minister comes it. And so when we are asking, I'm again saying, we are asking some pertinent questions, 18% versus 0%. We are asking, did you commit to not buy oil from Russia? We are asking, and then there is Trump who not only goes on 100 times to claim ceasefire, he also says कि मैं चाहूँ तो मोदी का political career खराब कर सकता हूँ, I can destroy his political career. There is something that we need an answer, because foreign policy has become a joke in this country, and that's why you may have all the blame game on Congress. You can call us all our names, but we need answers. The country needs answers. All right. Thank you so much, Dr. Tripathi, for speaking to Newsx. In fact, we are moving on to some other stories now that is coming in from Jammu and Kashmir. A suspected terror hideout has been busted in Doda. 3 rounds of ammunition, blankets and eatables were recovered by joint forces during the operation. The recovery was made in the Gando area of Doda, and the Indian Army and Jammu and Kashmir Police are carrying out searches in the area. Joining us live from Jammu city is our Jammu and Kashmir Bureau Chief Ajay Jandyal for more on this. Ajay, if you can take us through the details of this terror hideout which has been busted and also what all has been recovered from there. Belongings of the terrorists, including some rounds of terrorists, which basically indicates that terrorists, those who are hiding in this area, they basically, they must be hiding in that place, and they are changing their locations. And immediately, basically, when the security forces came to know about the presence of this terrorist, they immediately rushed to the spot, and during the searches, they have recovered and busted this hideout. By which they have recovered, some bullets of, weapon which most likely terrorists they are, keeping with them. And other than that, their belongings like, clothes as well as the eatables and other things have been recovered from the spot. Doda and the Kishtwar district, basically the area where for last several months, the movement of terrorists was spotted. We have seen that in Kishtwar, one terrorist was gunned down, and even security forces, they have issued photographs of 2 suspected terrorists, those who are changing their location and moving in the Doda forest area. Saifullah, who's a Jaish-e-Mohammed commander, and one of his associates, they were spotted and they managed to flee from the earlier encounter in Kishtwar. And now the photographs have been released by the authorities to ensure that they has to be traced out as soon as possible, and they'll security forces will neutralize them wherever they are hiding. Right, Ajay, if I can request you to please stay on with us. We have some more inputs coming in. The Doda police has launched a manhunt for top Jaish commander Saifullah. This comes as posters of Saifullah and his associates were seen in different parts of Doda.
Doda police is seeking information regarding the wanted Jaish commander and his associate. So Ajay, we are also getting inputs that massive search operations have been launched to identify and to nab this Jaish commander Saifullah as well. Yes, Saifullah and his associate basically have managed to flee from the earlier encounter in the Chatru, where one terrorist was gunned down by the security forces and ammunition was recovered. And to trace out them, security forces, they want the public, general public, to participate and share the information. That's why they have issued these pictures so that they can be, traced out as soon as possible. We know that for last several months after the Operation Sindoor, security forces major crackdown is going on against the terrorists, those who are hiding in the Jammu and Kashmir, and the number could be around 50 to 60. So security forces, they are ensuring that all the terrorists present over here in the Jammu and Kashmir, they has to be neutralized, their links has to be totally unearthed, so that they are planning of disturbing peace in the Jammu and Kashmir, and Pakistan's planning of carrying out major attacks in the Jammu and Kashmir and disturb the peace that has to be foiled. Right, Ajay, if I can request you to please stay on with us, we are getting some more inputs. The Kathua district administration has imposed restrictions in the 5-kilometer radius of international border during night hours in view of the sensitive situation along the border. The Kathua district administration has issued orders restricting unnecessary movement in areas adjoining the international border, and the movement has been prohibited within a 5-kilometer radius of the border. The order is applicable from Paharpur forward to Karol Krishna BOP or the border outpost. Entry of vehicles, heavy vehicles, has been barred on the old Samba Kathua route from 9 p.m. to 6 a.m. So Ajay, this is a really important update that is coming in from Kathua as well, where unnecessary movement at night has been restricted by the administration over there. Take us through all those details. This is the new advisory for the people, those who reside over there, or those who are basically are moving in that area. They have been told to stay away from this location, at least from the 5-kilometer radius of the international border, and this is basically to ensure that if any suspect is there, like any infiltration attempt is taking place, and somebody spotted in this area, they can be neutralized, or they can be traced out soon. Because what has happened in the Kathua, even yesterday we have seen that one drugs consignment have been recovered by the authorities over there, and there are possibilities that Pakistan is trying to push in the terrorists over here in the Jammu and Kashmir. So that's why these advisories have been issued, and the Kathua administration have issued a fresh advisory saying that from 9 p.m. to 6 a.m. There will be no movement for the general public in that area in the 5-kilometer radius, and number of border road post of BSF that will come under that advisory, and people have been told to stay away so that there is no such confusion. Because what has happened in the past as well, that whenever some smugglers or any suspected people, they basically goes in these areas, they could be basically there to receive any consignment of drugs or weapons or something else. So that's why these advisories has been issued time to time by the authorities, and this time Kathua district administration have issued this fresh advisory for the general public. Right, Ajay, thank you so much for providing us with all those updates. With that, we are moving on to some other news coming in. A 22-year-old Indian student, Saket Srinivasaya, at the University of California, Berkeley, has been missing since February 9th. He was last seen near Lake Anza in the Berkeley Hills. Srinivasaya is from Karnataka. According to his LinkedIn profile, he graduated with a BTech degree in chemical engineering from IIT Madras in 2025, and he is currently pursuing a master's degree in chemical and biomolecular engineering from UC Berkeley. Now, the Berkeley Police Department has described the 22-year-old as being 6 feet 1 inch tall and weighing about 160 pounds. Let's in fact look at some more inputs regarding this. The Consulate General of India in San Francisco has expressed concern over the disappearance of Saket Srinivasaya, an Indian postgraduate student at UC Berkeley from the state of Karnataka. In a social media post, the consulate said that it is deeply concerned about the incident and is in touch with Saket's family. It also stated that it is coordinating with local US authorities to help locate the missing student.
Let me in fact go across to my colleague Aditya Vadhavan for more on this. Aditya, some really unfortunate news coming in over there. We have a missing Indian student from the state of Karnataka who is missing from over there in University of Berkeley, who's studying over there in the University of Berkeley. Well, absolutely, Shivani. There were several, the last year also, we saw that how one girl also went missing after she went onto a trip with her friends in the United States of America. So clearly, this missing incidents regarding Indian students in United States of America is increasing. Day by day, definitely. The preliminary investigation is on, and the efforts are on to track this boy. As to where is he missing. Clearly, it's a very, very serious incident that is coming to light, and clearly at this juncture, it needs to be seen how long will it take for the concerned authorities in the United States of America, to track this boy, who's been missing from the University of Berkeley. So, yesterday also, if you see, definitely the Minister of State MEA, Kirti Vardhan Singh also has spoken in the Parliament that there are efforts, the well-being, the government of India what he said in the Parliament, and I quote, that the government of India prioritizes the safety, security, and well-being of Indian nationals working and residing abroad. So clearly, at this juncture, the family of this boy who has remained missing is constantly in touch with the Indian embassy in Washington, and it needs to be seen how things unfold in this scenario. All right. Thank you so much, Aditya, for all those updates on that front. With that, we are wrapping up this bulletin. कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़िब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू ज़िब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी
व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। Hello and welcome to the Newsx Sunday Guardian Roundtable. Well, this is our second roundtable with the psephologists. We are going to keep a track on the coming state elections. 4 states and 1 union territory is going to poll soon in April and May. And these are going to be very crucial, in fact, because in most of these states, the opposition is in power. And the BJP is trying to make an inroad in, at least in the southern states, that is Kerala, Tamil Nadu. BJP is in power in Assam. Mamata Banerjee holds strong in West Bengal. And there is, of course, Puducherry also that is going to polls. Can the opposition hold on to its turf? Can the Congress live up to some kind of its heft and make a dent and at least get Kerala, if not Assam, from the BJP? That is something we're going to be discussing on the show today. Joining me on the panel is, I have with me Professor Sanjay Kumar. He is a political analyst and a psephologist. I have Yashwant Deshmukh. He is a director and the founding editor at Seawater and a political analyst also. Amitabh Tiwari, political strategist and psephologist. He is the founding partner at the Ascendia, and he is a vote vibe tracker. Is I think on his round 2 of the states taking a look. But Yashwantji, since we last spoke, I think even you have your survey is also coming out. It's already come out in some of the states. So can you begin with yours and then we'll go on to the next? Yeah, of course, Priya, and actually I'm happy that Sanjay Bhai is also here because we end up learning a lot from him whenever he speaks. So it's good to have him here. Last time when we spoke, we were talking about the MOTN and the larger picture and as well as the poll-bound states. And today I've just finished my column. I was giving finishing touches when came into the program. And I was writing on something which is like Southern comfort for the Congress or Southern comfort for the opposition. Yeah, I mean, it's because one way of looking at it, what BJP can do, and another way of looking at it also, Priya, that what Congress can actually manage and can do, you know, and all of a sudden I realized that they are out of the 6 states, 1 micro state, including Pondicherry, that's it, 6. I all of a sudden realized that Congress is already ruling in 3, that is Karnataka, Telangana, and Tamil Nadu with DMK. And if they manage to retain Tamil Nadu and they manage to win Kerala and Puducherry, then the Congress or the India Alliance would be kind of ruling 5 out of 6 in South. And that would be a massive narrative twist if I can see the way the newspapers and the news channels are going to roll in, you know. So yeah, I mean that was all of a sudden a different way of looking at the things. And then I discussed with my senior colleague Sutanu sir, and then we were writing about it. And then he said that, you know what, yes, that is a fact. But the fact is also that out of the 5 out of 6 will start gaining huge anti-incumbency by the time the next Lok Sabha elections are happening. And before the next Lok Sabha election, we are going to face the assembly elections of Telangana and Karnataka, which are likely to be flipped. So whatever the narrative is there is almost an equally strong chance of that narrative being very short-lived if one will look at it in a real political way. And I realized how dynamic the situation is, Priya. And yes, that's a fact that at this point of time, the BJP's, as per in the MOTN, BJP's vote share graph is growing. That is fine. But I don't see them winning at this point of time in any of the southern state in these rounds. I mean, at this point of time. Kerala, they might increase the vote share, but I guess that their target would be to cross the psychological 20% mark in assembly election, which they have crossed in Lok Sabha, but not in assembly election.
it drops by 10% as soon as the assembly elections come in. They stand a good chance in Tamil Nadu, I would say. But with the vertical split of the opposition vote, Amitabh has worked on the Tamil Nadu tracker. I was going through his numbers. His gap in the assembly election is quite less. Vis-a-vis my gap in the Lok Sabha election projection, which I did for the MOTN. And that is something which is understandable because Tamil Nadu ek uladvasi hai. You know, it's a different kind of thing where, as we have discussed, Tamil Nadu, Kerala, and Punjab happen to be three states where there is a significant anti-Modi, anti-BJP base. And these three states, Rahul Gandhi's ratings have always, in 11 years, above Mr. Narendra Modi's ratings. That's the three exceptional states. So their Lok Sabha numbers are likely to be better than assembly numbers as far as the opposition is. It's a inverted pyramid as far as the Narendra Modi dividend for the BJP is concerned. It's the other way around. They are likely to do it better in the Lok Sabha than in the. So I agree with Amitabh's assessment that 10% plus gap at the Lok Sabha level might be reduced to less than 5% if the assembly election trends are to be analyzed. So Tamil Nadu is way more closer than what people might be realizing. They are just lucky that Vijay is causing a vertical split and opposition is fragmented. So all in all, yes, there are two different narratives which we are likely to see, Priya. 5-1 narrative is going to be a really great one to analyze and to look around. But at the same time, it's one of those things कि अभी तो गुलाब जामुन खाया HB1AC जो है बाद में कितना आएगा वो बाद में ही पता लगेगा ग्लूकोज लेवल बढ़ने पे. So that is something with the anti-incumbency which will start creeping in after this if they win all these states. So 29 would be a different animal altogether. Fair enough. Amitabh, we didn't have Sanjay ji last time, so just for his benefit and also for our viewers again, if you can just give us a snapshot of your findings and then I'll ask him to comment and then we'll go into the specifics, especially this time I think we should focus more on Assam and West Bengal. But if you can just give us the overall findings first. Yeah, essentially, if we look at the overall findings in Assam, we see a very high satisfaction level with the government, which is Himanta Biswa Sarma government. On account of the development projects and infrastructure creation over the past 5 years, and also the delimitation has reduced the Muslim community influence seats by anywhere between 10 to 15. So that gives a buffer to the BJP because there is a 10-year government, and if there is anti-incumbency against the local MLAs, you have a 10 to 15 seat buffer, which earlier used to send Muslim community MLAs. But now the Muslim representation in the assembly is likely to reduce. Hence, it gives a certain benefit to the BJP there. Gaurav Gogoi also has dual responsibilities, Deputy Leader Lok Sabha, on whom Rahul Gandhi banks a lot for giving or making the point of the Congress party. So his duties are also in a way distributed, and that's why he's not able to focus on the campaign there. If you see West Bengal again, the discontent level is higher or the anti-incumbency is high. However, because Mamata is very popular, especially amongst the women, and the fact that the BJP still people feel is not able to understand the history, language, culture, context of the state, and also suffers from factionalism. Now there is a TMC BJP led by Suvendu and a BJP sort of led by Dilip Ghosh, Samik Bhattacharya, Sukanta Majumdar, etc. So there is strong factionalism also there. Conversely to Assam, the demographics favor Mamata Banerjee in Bengal because there are 112 seats where the Muslim population is more than 25%, of which the TMC won 106. So it needs only 45 seats perhaps from the Hindu community influence seats to win. So as of now, she looks in a comfortable position. However, there are a very high number of undecided voters, around 17-18%, which could tilt the balance. In Kerala, because there is a strong trend and LDF had broken that trend in 2021, there is a huge amount of anti-incumbency. Satisfaction levels are poor.
The urban local body elections also saw UDF winning the election. So all looks set for a Congress kind of a victory. However, internal factionalism, 42% respondents say that Congress could lose because of internal factionalism. That's 42%. That's why we saw uh, Rahul Gandhi sort of, or the high command placating Shashi Tharoor, comes from Nair community, an influential community, 12 to 15% vote share or vote base in Kerala, and also popular amongst the middle class. There, one interesting fact is that, and we could discuss this later, as to how BJP's expansion in vote share impacts other parties. Because conceptually, as Yashwanji mentioned last time, CPM is the Hindu party of Kerala. That's why we see a lot of violence between CPM and RSS cadre. And however, so conceptually, the growth of BJP should come at the cost of LDF. But if you see the vote share, BJP has grown from 6% in 2006, I think, to 15% in 2016 and 12% in 2021. All that vote share has come at the expense of Congress. Because what it has done is it has pulled the small amount of Nair and Ezava support which Congress was getting from the Hindu communities, because it is branded as a minority party. So BJP is gaining at the cost, actually, in terms of vote share, of the Congress party there, damaging the Congress. And also, that was one of the reasons why the LDF was able to retain, because BJP damaged, actually, Congress pulled the Hindu votes. And because of the growth of BJP, minorities, both Muslims and Christians, for the first time, the LDF secured actually almost equal or higher support than the Congress, because the minorities then gravitated towards left, seeing that perhaps it is in a better position to stop the BJP march. Tamil Nadu also is a, I mean, every 5 years the government changes there, so there is huge amount of anti-incumbency. 44% people say that it is very likely that the trend will continue, but now you have two claimants, AIADMK-led alliance and a Vijay-led alliance. Vijay, like PK, of course, we cannot compare because he is much more popular. He is getting the CM approval ratings of 23%, even vote share of 19%. But we don't know whether he will be able to hold on to that popularity or hold on to that vote share, because when people go out to vote, we've seen that elections are becoming largely bipolar and the third party is getting squeezed out. So we'll have to see how his popularity he's able to convert it into votes. Okay, so that's Sanjay ji, just a quick listing of all the states. If you can comment on that, and one point I really want to ask you is, we've seen Hemanta Biswa Sarma. He said that his infrastructure and his development works are holding him stead. Yet we are seeing all this, a lot of polarizing conversation also happening from there in Assam, and that usually happens when they're not sure of their base. So how do you make up for this dichotomy? First, I don't have the kind of advantage Yashwant ji and Amitabh ji has, because we have not done any polls. Both of them are doing polls, so they have the advantage of having the data. But the question which you have asked, Priya, it's not that you can do this or that. If a party wants to ensure that they want to register a big victory, even if a political party has been able to invest in infrastructural development, welfare policies, when the party is in power, nobody prevents that party from doing X plus. What you mentioned, that Hemanta Biswa Sarma is saying people are happy about, the infrastructural development. And Amitabh ji's data also indicates that there is a huge or a great degree of approval for the work done by Hemanta Biswa Sarma in Assam. But they don't want to leave any chance. And that has happened in many other states where BJP has been the ruling party. I think few years ago, maybe 5-7 years ago, many analysts used to make a mistake by looking at these things and saying, oh, looks like BJP is unsure and why this would have been happening. Why BJP is doing this? Because they are not sure of whether they are getting the popular support or not. And that's why they are just trying to, play these games. I think it is important, at least I have learned a lot, that we have to move ahead of that narrative, that if Prime Minister is spending a lot of time in one state, maybe BJP thinks that BJP is on a
on a slippery wicket. That's not happening because BJP is a party which doesn't want to leave any chance. So even if people are happy, again, I would say Amitabh ji's data indicates that general dissatisfaction level is higher compared to if you find it in other state. But BJP doesn't want to simply win. They want to register big victory. And you can see that's happening. Whether we are talking about Bihar, whether we are talking about Delhi, Haryana, states where they have, it seemed that they may be losing, they have registered victories. States where they still seemed strong, they have registered massive victories. That's the strategy I think BJP is adopting. Fair enough. And your reaction to the other data where it seems, at least in West Bengal and Assam, they're holding forth. There is a pro-incumbency. DMK, he's saying his numbers show that Stalin is still the most popular, but because the state also votes against, anti-incumbency, and plus he's talked about two challengers. So your reaction to Tamil Nadu really is what I'm interested in. See, I think whatever I get the reports from the ground, that DMK still is holding on strong. How strong? I can't say that they are extremely strong as maybe Hemanta Biswa Sarma seems to be holding on in Assam. But the signs of anti-incumbency is not as strong to be sure at this moment that the government may lose election. It is heading for an interesting election. But Tamil Nadu, if you look at all the past elections, initially, we keep talking about interesting election. There seems to be a fight, but mostly Tamil Nadu election, mostly it becomes one-sided. And the party or the alliance which wins election ends up winning in a big way. And that's also the trend if you look at all the elections, generally elections in the past, the recent assembly election. So my own sense is that we will keep talking about, and the data is also there, that looks like a slightly tight elections between AIDMK plus and DMK plus. But at this moment, I think going by the data, if you collect data at this moment, most of the ruling government there will be, unless until it's hugely unpopular, the wind would seem to be blowing in favor of the ruling party, because there is, at this time, people don't express huge dissatisfaction with the government unless until really the government has performed badly. So in most of the state, wherever you do the survey at this moment, and it's still 2.5 months to go for elections. So indeed, in Tamil Nadu, there will be some positive signs for DMK. Even in Kerala, I believe. Yeah. So that's the situation in Tamil Nadu. Sorry, Kerala, you said positive signs. No, I'm saying even in a state like Kerala, where left would be in power for 10 years by the time the election take place, and Kerala has been a state where the government has changed every 5 years except the last election. But at this moment, I suspect that there would be signs of huge anti-incumbency against the LDF government. If you do a survey at this moment, I don't think there would be huge sign of anti-incumbency. But as soon as the voting day comes, I think people's opinions start changing very fast. Okay, I'm going to take a quick break and come back and keep this conversation going. So stay with us. कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। Hello and welcome back to the Newsx Sunday Guardian Roundtable. We are taking a look as to which way the wind is blowing in, especially 4 of the states that are going for polls soon. But Yashwantji, 2.5 months still to go. Is it too early to figure out the mood on the ground, or generally you've got to, by doing these surveys, you get to know some of the trends, and by and large, unless some major muck-up happens, these seem to be the way the elections are going. And your reaction to Kerala also? Well, some trends start holding in a way. I mean, particularly where the question is bipolar. I mean, contest is of bipolarity. That's where it starts getting more and more bipolar as we look into that. So that is Assam and West Bengal.
Yeah, other Assam part and too. West Bengal. Exactly. Problem happens in only the states where there is a third angle comes in and making it a triangular, as in the case of BJP's entry in Kerala, or for that matter, Vijay's entry in Tamil Nadu is concerned. I believe that Pondicherry also will go a bipolar way. Even though Vijay also did a rally in Puducherry and got a big crowds. But at this point of time, it seems like it might eventually go for a bipolar in a longer way. So yeah, Kerala, we just did the first round of tracker for Malayalam Manorama over there, which was aired 2 days back, and there is a very clear, I would say, strength of anti-incumbency that we are already picking up right now. Yes, Amitabh is correct when he said that initial vote that BJP has chopped in is from the remaining Hindu votes of the Congress, and Congress is largely a minority party in Kerala now, and the left is managed to win 5 years back because of that division of vote, but right now the swing from left towards the BJP is something which is pulling the left down at this point of time. It is now moving the West Bengal kind of way. It has started moving. What remains to be seen whether the 20% plus vote that the BJP managed to poll during the Lok Sabha elections multiple times, at least 2-3 times they managed to touch almost 20. Last time they almost crossed 20. Can they hold on to that kind of vote even in the assembly election, or will that vote go back to left? That's the thing which we need to see and understand how it is happening. 10 years is a long time, particularly keeping in mind that it happened for the first time in Kerala, that a pro-incumbent verdict came in, right? Right. And same is the case of Tamil Nadu. Jayalalitha winning back was a big, what shall I say? Deviation from the Tamil Nadu politics, where the pendulum used to swing one way or the other every 5 years. And 5 years back, when DMK managed to win, even after the death of Jayalalitha, the AIA-DMK was not wiped out. They managed a pretty decent, what shall I say, pretty decent strength on the opposition benches. Yes, DMK won a huge, but when we are comparing the, say, Tamil Nadu verdicts of the 90s and the first decades of this century, we have seen 80s, 90s, when the opposition was wiped out, they used to get left with 1 seat or 0 seat or 3 seats or 4 seats. That sort of thing stopped about 15 years back. Yes, the verdicts have been very clear, but it's not that the opposition was virtually non-existent on the floor. So that I remember that when the last time, I mean, not this one, when about 10 years back, when DMK was ruling and Jayalalitha was the leader of opposition, she had a very strong presence on the opposition numbers, and for 5 years she kept on targeting the DMK, saying this minority government, because DMK for the first time did not have a majority of its own in Tamil Nadu. So, and one more thing which Jayalalitha did when she managed to repeat the verdict, was for the first time, she literally forced all the alliance partners to contest on her symbol. So for the first time, AIA-DMK had all the seats with the 2-leaf symbol parties. So Jayalalitha did pretty brave things and she reaped the benefits of it. The current AIA-DMK under the Palaniswamy leadership has strangely and bravely kind of held on to base. First of all, the Paneerselvam defection and AMMK defection, the other things did not really dent the AIA-DMK pie big time. So he is holding on. I mean, many people had written the political obituary of AIA-DMK after the death of Jayalalitha.
but it seems that they are holding on, much to the surprise and disappointment even of the BJP. BJP was probably expecting that Hoping. AIADMK will go for a meltdown and we will become the principal opposition. It ain't happening. It's not happening. It's not happening at all. So they are holding on. And I agree with Sanjay Bhai as well, his assessment that whatever the assessment, the verdict would be clear. And Amitabh's assessment that the gap is not that big. I agree both of these. The only thing is that what I need to check and see and keep a track on is Vijay going to hold on to whatever numbers he's getting a traction, or will he kind of dither away like PK's campaign in Bihar? You know, he was also getting a traction in our numbers, 20%, 22, 23%, you know. But the votes polled by him was only about 3.5%. वही अर्श पे या फर्श पे, that's the test. अर्श पे या फर्श पे. So that is something. And another thing which a lot many people say that, okay, you know, he has a legacy of being a superstar and blah, 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 blah. Yes, I understand that, but so was Mr. Rajnikant. I remember when we ran tracker at the time of entry of Rajnikant, at best his traction went up to 12 to 16%. You know, and the very fact, I mean, I don't want to be credited or discredited for this thing, but the MOTN, when we declared 12% support base even after a year of campaign for him, probably 15 days after that, he kind of announced that he is not entering politics at all. You know, so if the Tamil Nadu politics can go beyond Rajnikant on the this thing, then I Vijay's don't chances. think that Vijay is still reaching that kind of fandom or that kind of level that Rajnikant had. So yeah, I mean, a lot of these things are to be checked and tracked in the next 12 weeks or so before making any conclusion. But interesting election. Okay. It's gonna be very, very interesting. Yeah. So, Amitabh, you know, to take off from Yashwanji's point, you know, you've said that this is an election where in all the states, I think we have prominent CM faces on, you know, both the camps, you know, at least, except I think in West Bengal, there's no challenger really who is there. Gaurav Gogoi, we have discussed, but Vijay is emerging, but yet to be tested. Kerala seems to be really the state where there are a lot of challengers. So who is ahead in Kerala from the Congress side, from the, you know, UDF side? No, clearly now, since elections are approaching, the LOP, VD Satishan is ahead in the race from UDF side, and not only from UDF side, at least across parties. So when we ask who do you want to see as the CM, VD Satishan is getting around 22%, whereas Vijayan is getting 18% and KK Shalja around 17%. But there are many And other. Shashi Tharoor? So Shashi Tharoor is getting around 9, 10. KC Venugopal is getting around 5, 6. On a combined basis, largely Congress is 1 or 2 percentage points higher than what the CPM leadership is getting. See, there is a leadership vacuum now in CPM there, correct? Because now age is not on his side. Vijayan, whatever said in the past 10 years, has centralized control and command within the chief ministerial office. So a party which used to be a cadre-based party now is largely being run like a presidential style sort of a party. There is a leadership vacuum. There are talks around whoever has won for 2 terms will not be getting a ticket. If that is applied, then Vijayan himself may not get the ticket. Vijayan's son-in-law is a tourism minister, comes from the minority community, has a very low profile, but has big ambitions to become CM. So we are seeing sort of family dynastic or a family control entering into a party which is largely cadre and ideology based. So this election actually of Kerala 2026 is going to decide, is a very interesting election going to decide the future of Kerala. If left loses, then we've seen in West Bengal in 10 years, it came down to 0 seats. In Tripura, we've seen in 10 years, it has fallen to a low tally. So will this election be that the election end of left, which marks the end of the left, or
will it show that there is no left in the country? Correct, because that's the only state there. So State. that's very, very important because BJP's trajectory is related to the outcome here. Whether Okay, good point. left loses, and if left does not lose also, then who becomes the principal challenger to left? Because if left wins, then we are going to see significant churning in the alliances of UDF. Kerala Congress, one faction is already there with left. IUML was in talks to join left after the loss in 2021. So we could see paradigm shifts. So that election is very, very important in Kerala in that sense. Okay. Sanjay ji, who has most at stake? The big picture really in the end, the opposition. जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। Hello and welcome. You're watching Newsx and I'm Vaishali Kohli. Let's begin with the headlines. PM Modi landed at the newly constructed Dibrugarh Emergency Landing Facility in an IFC 13OJ. This is the first of its kind facility in northeastern India. PM Modi witnessed a spectacular IAF aerial display today at the newly inaugurated ELF on Moran Bypass. The over 20-minute show featured precision takeoffs, landings and flypasts by Sukhoi Su-30 MKI Rafale fighters, C-13OJ transport aircraft and helicopters, showcasing operational readiness. Doda police have launched a manhunt for senior Jaish-e-Mohammed commander Saifullah. Wanted posters of Saifullah and his associates have been put up in various parts of Doda. Police are seeking public information on the wanted Jaish commander and his associates. PM Modi, Defence Minister Rajnath Singh paid tributes to the soldiers that were killed in the Pulwama attack 7 years ago, calling them brave heroes. US President Donald Trump says regime change in Iran is the best thing that could happen, signifying one of his clearest endorsements for replacing the clerical establishment. The Pentagon is sending a second aircraft carrier group, the USS Gerald Ford, to the Middle East, a move that puts pressure on Iran even as President Donald Trump has said talks with Tehran will continue. US President Donald Trump has said regime change in Iran would be the best outcome, marking one of his clearest endorsements for replacing the clerical establishment. Trump said that Iran had been engaged in prolonged talks over the years while lives had been lost. He did not specify who he would like to see lead Iran, but indicated that there are people who could take over. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has not responded to the remarks. Meanwhile, the US has sent a second aircraft carrier to the Middle East to increase pressure on Iran amid efforts to secure a nuclear deal. The USS Gerald Ford is set to relocate from the Caribbean to the region and is expected to join the USS Abraham Lincoln, which is already stationed there. While Trump is warned of possible strikes if no nuclear agreement is reached, he has also indicated that talks with Iran would continue. Speaking at Fort Bragg, he said Iran should agree to a deal. The US has pushed for Iran to halt uranium enrichment, while Israel has demanded that Tehran curb its ballistic missile program and support for proxy groups. Iran has said it is prepared to limit its nuclear program in exchange for sanctions relief, but has rejected what it calls excessive demands. Joining me now is
my guest, Mr. Arvind Singh Tejawat. He's a foreign affairs expert, and Mr. Sanjeev Srivastav. He's also a foreign affairs expert. I want to go across to Mr. Arvind Singh Tejawat for his opening comments. Thank you very much, Vaishali. The US president made such a statement. The reason behind it that the US probably is willing to go for the bargaining in terms of the nuclear program of Iran. But this is not the only reason. Probably the US administration is having a fear of the Iran proxy, and that's why the United States is willing to make a maximum pressure on Iran. So the Iran and US, when they're sitting together, they may go for a negotiation and might have a better hold on a talk. At the same time, the US president is willing to respond the Iranian people, the Iranian protesters, who were expecting somewhat from the United States president. So if the United States president is doing nothing, then probably he might have the impression that the President Trump is not trustworthy. I suppose actually these are the reasons that the United States president is making a pressure on Iran. That's the only reason. Over to you, Vaishali. I want to now go across to Mr. Sanjeev Srivastav. Now, Mr. Srivastav, I want to ask you that, does this signal an official shift in US strategy, or is this more rhetorical pressure aimed at forcing concessions in nuclear talks? Well, I think it's quite clear since very beginning that United States of America's ultimate goal with regard to their posturing against Iran is of regime change. And United States of America's any administration, be it Democrats or Republicans, from 1979 onwards, they have been having this wish that they will be succeeding one day to change this Islamic regime, and this Islamic regime will collapse one day. And this is what the American president have been, wishing, and even Israeli administrations have been wishing. And that's what their ultimate goal with regard to Iran. It is quite clear. And for to achieve that, United States of America obviously has, at this point of time, is putting maximum pressure against Iran, and President Trump in particular during his first administration as well, and in this second administration too, he has launched a maximum pressure campaign against Iran. And during the first time, as you remember, that he had done everything to cut Iranian oil trade with the world to the minimal level. And during the second term, when President Trump has seen this opportunity that the Iranian regime is crumbling from within, and that there are a lot of issues within this Iranian Islamic regime, whether it is social issues, women's rights issues, or economic issues, United States of America is very much looking forward to exploit this entire Iranian internal chaos and situation and instability in its goal to achieve that regime change. So I think this is quite clear. President Trump, in my assessment, has not said anything new, and that is what the American president have been thinking. Mr. Arvind Singh Tejawat and Mr. Sanjeev Srivastav, thank you so much for joining me on the broadcast. And now moving on. Now, part of a metro pillar collapsed in Mulund, Mumbai, injuring 3 to 4 people. A major accident occurred during metro construction work in Mumbai's Mulund West area on Saturday afternoon. And joining me is Shahid Ansari with more details. Shahid, आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? Right, we'll shortly try and reconnect with my colleague. But a metro pillar, viewers, सरकारी कोई काम होता है, आप मेट्रो मोनो कुछ भी आप देख लें,
कोई भी काम चलता है तो वहां पे सुरक्षा की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल ये मुलुंड का इलाका है। इससे पहले भी मुंबई के अलग अलग हिस्से में जहां पे भी मेट्रो के काम चल रहे हैं, अगर नियम के मुताबिक वो किए जाएं तो शायद हो सकता है कि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन हैरानी इस बात की है, मेट्रो के काम करने के दौरान जिस तरह से नियमों को ताक पर रखकर जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम करते हैं और उसकी वजह से जो जानी और माली नुकसान का जो सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी जो है वो बड़े ही बेफिक्र होकर ये काम करते हैं। आमतौर पर देखिए कि जहां पे भी जो मेट्रो का काम चल रहा है, सर के ऊपर, सर से जमीन से तकरीबन जो है 50 फीट 40 फीट इतने ऊपर जो है ये हाइट पर काम चालू होता है। और उसके बाद भी आप देखिए कि उसके नीचे से ट्रैफिक बड़े ही आसानी से आती जाती है। अगर काम चल रहा है तो या तो ऐसा हो कि यही नहीं, सिर्फ दिन में ही काम नहीं, रात में भी काम शुरू रहता है। और अक्सर के इस तरह के हादसे पेश आने की असल वजह यही होती है कि बीएमसी ने जो एक मापदंड तय किया है, जो पैमाना तय किया है नियम कानून का, उसका पालन ना करने की वजह से ही इस तरह के हादसे होते हैं। और जो हादसा मुलुंड में हुआ है वो भी उसी की जीती जागती मिसाल है। जी हर्षद। जी शाहिद, ये तो बड़ी शॉकिंग खबर है। कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस तो हुआ है। आपकी ऑन ग्राउंड कुछ लोगों से बात हो पाई है जो इंजर्ड हैं या हॉस्पिटल गए हैं, और क्या जानकारी है आपके पास? कुछ दिनों तक चीजें रहती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ी जो है बेहिसी इसको कह सकते हैं कि जितना जो है नियम कायदे की बात करें, अभी देखिए इतने लोग जख्मी हुए हैं, उनकी हालत भी जो है गंभीर है। इससे पहले भी जो है कई हादसे हो चुके हैं। बावजूद उसके ये मेट्रो का काम जो है देखिए कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं, ये चलते जा रहा है। ठीक है, हम तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन तरक्की के रास्ते पर जाने से पहले हम किस तरह से चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, नियम कानून को कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बात देखना बेहद जरूरी है। शहर को बेहतर बनाने के लिए जो भी चीजें सरकार या उसकी जो योजनाएं हैं उसे लागू तो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर इस तरह से लोगों की जान जोखिम में डालना। जी शुक्रिया शाहिद, हमारे साथ जुड़ चुके। नाउ आई ऑल्सो हैव जॉइनिंग मी यश आहूजा। यश, व्हाट मोर कैन यू टेल अस? Yes, Vaishali, let me just take our viewers through these visuals that we are showing live on television. What you see on your screen is the metro pillar that has fallen on a Skoda car in Mumbai's Mulund area. If let's just take it frame by frame and just take a look. This is the pillar. The right at the top of our screen is from where the pillar fell. It started right here and it fell on a car right here. If we play the video, this is what you see here is the car that has been crushed by the metro pillar that we just saw you. Now, according to information, 3 to 4 passengers were in the car. They have been injured. There is no reports of casualties as of yet, but more reports are awaited. This is a developing story. You can take a look at a lot of people trying to pick up this heavy concrete brick, but they cannot because it is a very, very heavy concrete piece of concrete that fell on a car from a height of almost 70 to 80 meters. This is where we can see the car exactly. This, if you take a look at this an auto. This what seems is an auto. This was also crushed by the same concrete slab that fell over the car. Back to you. Alright viewers, as we're telling you, part of a metro pillar has collapsed in Mulund, Mumbai, injuring 3 to 4 people. And a major accident has occurred during the metro construction work in Mumbai's Mulund West area on Saturday afternoon. This, of course, is a case of negligence, as we can see. But as we were telling you earlier, we're trying to get you more information on this. Yash, do we have any more details on the condition of the people who've been injured? The condition, yes, Vishali, the condition of the people, they have a certain injuries.
They have been shifted to a hospital. But let me just take you through another video that is that is right in front of us. If you take a look at this video now, if you take a look at this video, this is how the car looks right now. These are the servicemen, the people who are the first responders. If we zoom in a little, we can see this is an auto and this is a car. So both of them have been crushed by a concrete brick that fell approximately from a height of 50 to 60 meters, as we just showed our viewers in the visual that was before. Just take a look at this horrifying visual that we have. The car is completely crushed from the front. The auto is completely damaged and crushed. Let's take a look at this video frame by frame. Let's zoom in a little. Yes, this is the auto that we were talking about and the car. The auto has been completely smashed. The car's frontal area is now completely smashed by the concrete brick that fell from a metro pillar. This is how the car looks like. We can see in the video 7 to 8 people are trying to lift up that concrete brick, but it is not possible for humans to pick up that. A crane has been ordered and rescue efforts are All right, underway. Yash, stay on with me. I'm going to share some preliminary information that we're getting and I'll come back to you. Now, the incident, viewers, is part of the metro pillar collapse. The date and time of the incident reported. The latest information that we're getting in is 12:20 hours is when this happened this afternoon. The address is near Johnson & Johnson Company, LBS Road in Mulund West. And this has happened, viewers, during construction of a part of the cement metro pillar, which has collapsed and fallen onto a rickshaw, of course. And the injuries are that 3 to 4 people in the auto rickshaw have been likely injured. Details are awaiting. We're going to be getting you all the latest information. I have Shahid Ansari joining me with more details. Shahid, जो latest जानकारी आप हमें और क्या बता सकते हैं उसके बारे में? घाट को जी देखिए, मुलुंड जो एलबीएस मार्ग है यहाँ पे मेट्रो का काम चालू था। जो फायर और जो बीएमसी के जो मैसेज आए हैं उसके मुताबिक 12:20 पर ये रिपोर्ट किया गया जब अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो का जो पिलर है उसका एक हिस्सा जो है यहाँ गिर गया, जिसकी वजह से एक कार, एक ऑटो रिक्शा और कुछ और गाड़ियां जो है उसकी जद में आ गई। अब तक जानकारी जो मिली है 4 से 5 लोग जो है उसकी जद में आए, बुरी तरह से जख्मी हो गए। जैसे ही ये मलबा गिरा है उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल था। जो लोग थे वो इकट्ठा हुए इसे हटाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि लोग दब गए थे, लोग दबे हुए थे। लोग चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके वो निकल जाए और निकलने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। वहां पे लोगों को जो है, जो लोग थे उनकी भीड़ थी, भीड़ के साथ मिलकर उन्होंने उसको हटाया, रेस्क्यू किया और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड की सारी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। आपको मैं बताऊं कि मेट्रो का जो ये काम चल रहा था, यहाँ पे ट्रैफिक का लगातार आवागमन था। अब तक की जानकारी में जो बात सामने आई है, 4 से 5 लोग जो है बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और भी लोगों के बारे में जो है जल्द ही पता चल जाएगा। आपको मैं बताऊं कि मेट्रो की ये कोई पहली हरकत नहीं है, वारदात नहीं है, हादसा नहीं है। इससे पहले भी मेट्रो के जहां पे भी काम चल रहा है, आपके पास लौट के आऊंगी, अभी आप मेरे साथ बने रहिए, वो पॉइंट भी हम उठाएंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। I have joining me Mr. Ali Daruwala. He's a BJP spokesperson. Mr. Daruwala, the metro pillar collapse and people are injured. What would you like to say on that? This is very unfortunate, and Honorable Chief Minister has personally asked us to look into the matter, and everybody who is involved, he has said everybody, may it be the corporation or the state government, will be totally penalized, and by 4 o'clock he has asked for a detailed report and he himself is going to address the media between 4 and 5. Mr. Daruwala, any preliminary information? How did this negligence even happen? Any information? Exactly. Was it the scaffolding that were loose, or was it the sidewall that came rumbling down? That is being looked into, but it is too infant and too early to comment on this. Give us little time, and I will be back with you in next 30 minutes with detailed report of what has happened over there. It's just not even 20-30 minutes that this has happened, and the people are rushing, and due to traffic, rescue operations are not been able to reach there. It is the local citizens who have been helping us,
and we will definitely give you every detailed information in next 20-25 minutes. All right, Mr. Dadwala. Thank you for joining me. And I want to go back to Shahid Ansari. Shahid, आप हमें पहले ये बता रहे थे कि पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं मेट्रो कंस्ट्रक्शन के दौरान. All right, I'll come back to Shahid. I do have Manisha Kayande, who's a Shiv Sena spokesperson, joining me. Ms. Kayande, this is a very shocking incident. People have been injured. All right, we seem to have lost that connection again. But in the meantime, I want to speak to Shahid Ansari, who's my colleague, joining me live from Mumbai. Shahid, आप ये पहले भी हमें बता रहे थे कि ये जो इंसिडेंट है ये पहले भी हो चुका है, ये जो नेग्लिजेंस है ये पहले भी बरती गई है, और क्या बता सकते हैं अब हमें? जी देखिए, मुंबई में शहर में जो है कई जगहों पर जो है देखिए मेट्रो का काम शुरू है. इस हादसे में देखिए 4 से 5 लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले मुंबई के अलग अलग जगहों पर भी जो है कुछ इस तरह के मामला जो हादसे हैं वो सामने आए हैं, जिसमें मेट्रो का स्लैब गिरा और उसका एक हिस्सा गिरा, लोग जख्मी भी हुए. कई जगहों पर जो है उसके मलबे गिरे, लोग जख्मी हुए. तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से प्राइवेट काम या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को लेकर बीएमसी या सरकार सख्त होती है कि वो रूल और उसूल पर जो है पूरी तरह से अमल करें, रूल का पालन करें. लेकिन मैंने आज इतने दिनों में देखा गया है कि मेट्रो के जो भी काम शुरू हैं, जहां पे भी शुरू हैं, रात दिन ये काम शुरू होते हैं. जबकि आपको मैं बता दूं कि सरकार ने ये नियम बनाया है कि रात में शहर में किसी भी तरह के कोई भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं होंगे. हमारे साथ जुड़ने के लिए, and we're getting some more breaking news coming in. Now, Prime Minister Narendra Modi unveiled a range of projects in Assam, including a bridge over the Brahmaputra river and a data center for the northeastern region. Prime Minister Modi reached the state on a day-long visit to inaugurate an emergency landing facility at Moran and launch projects worth over 5,500 crore. The PM inaugurated Kumar Bhaskar Varma Setu across the Brahmaputra in Guwahati, built at a cost of around 3,030 crore. The 6-lane Extradosed press-to-rest concrete bridge will connect Guwahati with North Guwahati and is the first Extradosed bridge in the northeast. The project aims to boost connectivity, strengthen digital infrastructure, promote higher education and enhance public transport. Nibir Decker is joining me with more details. Nibir, what more can you tell us? Well, it is indeed a very historic day for Assam because you see that the Prime Minister is inaugurating a bridge which is one of a kind. It is one of the first bridge which has been constructed from Guwahati, south bank to the other bank in a very narrow passage of the Brahmaputra river, and that is what makes this bridge a very special one. It will enhance connectivity in the northeastern part of the country, and it also will facilitate Guwahati into the metropolitan initiative which has been envisioned for the city. So it is indeed a very historic day, and the Prime Minister, as we speak, is inaugurating a slew of projects for the state as well as for the region of Northeast. You know, Nibir, we're also talking about the fact that this is a 6-lane extra-dosed press-dressed concrete bridge which will connect Guwahati and North Guwahati. And it's the first extra-dosed bridge in the northeast. Would you explain that to our viewers? Yes, absolutely. You see that Brahmaputra river is a very volatile river, and that is one of the biggest challenges which the river has. And connectivity along the waterways is very crucial for the people. We have seen in generations before us struggling to travel from one part to another due to these waterway challenges. This Extradosed bridge is remarkable in that because it will add 2 different regions of Guwahati, the south bank and the north bank, and along with that it will facilitate travel between Assam, and which will also help reduce the time, not just reducing the time, but will also be a very strategic bridge because it will connect 2 different regions, and with that
will bring more prosperity, more connectivity, and that is why it is being said a very historic initiative with the Prime Minister coming as well, which has made the people feel very welcome and very happy, because they get to see the Prime Minister, and also him inaugurating the bridge will also make them further happy, and it's indeed a very historic day for the entire region. You know, Nibin, the PM's also inaugurated the Kumar Bhaskar Varma Setu across the Brahmaputra, and that's built at a cost of 3,030 crore. What more can you tell us on that? Well, this bridge is a very complex architecture. It is constructed piled atop the Brahmaputra river, which is very volatile, and that is the reason the cost of the bridge is very high. But it has been manufactured in a very remote, record-breaking time, which is very positive, and will also reduce the traffic congestion and also the dependency on ships to cross the river. So, for anyone who is from Assam or from the northeastern region, for them this is a big day, because of the hindrances that they have been facing since generations while crossing the Brahmaputra river, and as a result of that, you can see the excitement, visible excitement among the public who have attended this inauguration, and also are very excited to travel to the other side via that bridge. All right, viewers, of course, we're telling you about Prime Minister Narendra Modi, who has unveiled a range of projects in Assam. The visuals, of course, are on your screen, and this is including a bridge over the Brahmaputra river and a data center for the northeastern region. A big development happening there. PM Modi has reached the state on a day-long visit to inaugurate an emergency landing facility at Muran and launch projects worth over 5,500 crore. The PM he also inaugurated the Kumar Bhaskar Varma Setu across the Brahmaputra in Guwahati, built at a cost of around 3,030 crore. I also have now Ms. Joyita Basu, she's the editor of the Sunday Guardian, joining me. Joyita, this is a big development in Assam. What would you like to say? Well, actually, if you are looking at it in Narendra Modi's tenure, Northeast, which was traditionally ignored for decades. I mean, this region has got a big boost when it comes to infrastructure. Anybody who has visited Guwahati, Assam, and the neighboring states, I mean, they will know the kind of development that has happened in Arunachal, that huge long bridge approach towards the borders. So you see, I think that this is a significant one. This is going to increase help in the connectivity and this bridge, especially for the people of Guwahati. And so I think it's a very important development, and especially it is, of course, critics will say this is coming just ahead of the election, but obviously the bridge was not built just ahead of the election. It has been completed ahead of the election. So I think whatever infrastructure is built, whether it is ahead of election or after the election, should be welcomed. You know, Joyita, what makes this very special also is the fact that this is a 6-lane extra-dosed press-stressed concrete bridge, and it is the first extra-dosed bridge in the northeast. What would you like to say on that? Well, it is a marvel, I would say, modern engineering. And the thing is, you see, the very fact that these bridges and all, they are being built in the northeast, it is going to be, it's like, it's kind of developed a sense among the people about belonging with the rest of the country. I think this is very important that way, and in terms of connectivity. And it's a marvel of modern engineering, and we have seen the kind of bridges that have been built, for example, in Kashmir. So it's like that. All right, Joyita, thank you for joining me. And viewers, this characteristic of this extra-dosed bridge, I just want to tell you a little bit about it. This is
You know, this typically has the appearance of a cable-stayed bridge with very short towers, with cable stays of shallow angle that may not extend along the full length of the deck, with a more substantial deck superstructure. So the flexural stiffness of the deck or grinder superstructure is what we're talking about, and that's what makes the bridge so special. I want to go back to Nibir Decker joining me. Nibir, what is the latest you can tell us? Well, this is an extra-dosed bridge, which makes it already very special. Secondly, the fact that it is constructed on top of the Brahmaputra river, which is a very volatile river, and which is the reason we have seen in that particular stretch of water, several accidents have happened previously, especially with the small engine boats that were earlier used, which are now banned. So that was a very big difficulty for public to cross that stretch of water. So this is indeed a very important day in terms of the connectivity. Northeast biggest challenge has always been connectivity, and time and again with the construction of the Bogeybill Bridge in the Dibrugarh district earlier, and now in this particular extra-dosed bridge in Guwahati, all of these are having an important aspect in terms of the connectivity boost. And secondly, all these projects should not be seen in isolation. They are connected to the bigger agenda of Act East policy, as well as to improve not just connectivity but also to stabilize the Northeast, which is an international border area with China, Myanmar and Bangladesh present. So all of this culminates into a positive aspect of strength and stability of the India's Northeast, and also with that comes connectivity, infrastructure and business and other economics at work. All right, Nibir, thank you for joining me. I also have Mr. Madhav Nalapath. He's the editorial director of the Sunday Guardian. Mr. Nalapath, we're discussing a very big development in Assam in the form of the bridge which is being built over the Brahmaputra river, and also data center for the northeastern region. What would you like to say? I would like to say that this government has distinguished itself by the highways and the bridges. The highways are superb, the bridges are equally superb, and this bridge is a masterpiece of engineering. And yes, the correspondent is correct. It will connect the Northeast very crucially, and it's very necessary now, the time of peace and Bangladesh and all that. But I would like to say that I congratulate the Prime Minister and his team working under him for the way they are making progress on roads, highways, bridges, dams. All these construction projects are doing very well. And I must say that's a credit to this government. Thank you. Mr. Nalapath, what makes this bridge also very interesting and intriguing is the fact that this is a 6-lane extra-dosed press-dressed concrete bridge which will connect Guwahati and North Guwahati, and this is the first extra-dosed bridge in the Northeast. What would you like to say on that? Look, the fact of the matter is, Assam and the Northeast are very important to India. Our enemies want to separate the Northeast from the rest of India, and in the chicken's neck. We stopped wiping the chicken's neck in 1971 when we helped in the liberation of Bangladesh, but we did nothing, unfortunately. And so that is a vulnerability. So the reality is that this kind of construction will add to the defenses of India, will add to the defensive strength of India, and it will be able to transport not just civilians, but military vehicles up and down. So that is also a great encouragement. Thank you very much. Mr. Nalapath, the fact that this bridge is worth 5,500 crore, and the other bit is that the PM has also inaugurated the Kumar Bhaskar Varma Setu across the Brahmaputra, which is built at a cost of 3,030 crore. What would you like to say on that aspect? The Brahmaputra is a very important river, and it connects with other countries, and it's of course. And so the reality is, India is being wise in paying attention to Brahmaputra, and this is a magnificent project, and the people there will be very happy, and the people in Northeast will also be very happy. So I'd like to say overall, significant development, and I congratulate Newsx for having picked it up
and for having a good play of it. Thank you. Thank you, Mr. Nalapad, for joining me. So this, viewers, is a big development there, and I was previously telling you about this bridge and the details of it. Now, what is an extradosed? Why is it different, viewers? Let me tell you that. The extradosed bridge, how is it different from a regular bridge? This optimizes structural performance. The fact that this bridge functions as girders with enhanced strength from cables makes these kind of bridges ideal for medium spans of 100 to 250 meters. And it also leads to reduced fatigue and maintenance. So this, viewers, are the live visuals that Newsx is getting you exclusively on your screens of the mega project in Assam. And of course, we can see PM Modi live from Guwahati in Assam. That's Prime Minister Narendra Modi. These are live visuals on your screen. Nibir Dekka is joining me with more details. Nibir, we are getting our viewers live and exclusive visuals of PM Modi in Assam. What more can you tell us? Well, absolutely. As we speak, he has inaugurated the Extradosed bridge atop Brahmaputra River. Along with that, I have to tell you, there are certain things which are going to be done in that there will be electric buses which will be inaugurated to push the green energy initiative. And along with that, there are other initiatives such as the inauguration of the IIM campus in Guwahati. So all these projects are equally important, and as we now going back to the bridge, overdose bridge, this initiative has been taken earlier to facilitate travel, intercity travel between two sides of the two parts of the Guwahati, where the public was now dependent on road-packed vehicles. But following the construction of the Kumar Bhaskar Varma Setu, it will connect 1.24 kilometer long. Stay on with me. I'll come back to you. I have Mr. Gautam Mukherjee, who's a senior journalist, who's joining me on the broadcast. Mr. Mukherjee, this is a very big development, the inauguration of the bridge in Assam that PM Modi is doing. What would you like to say? One is the bridge, and the second is the beginning of the tunnel. These are very important strategic steps to more firmly connect the Northeast with the rest of the country. They are major projects. The one under the Brahmaputra is going to be both a train line and a roadway. It is along the lines of the channel in Britain, connecting Britain and France. So it's a major project, wonderful. The bridge also has been reinforced to make sure that it can take heavy military equipment as well as civilian traffic. The airport, the temporary airport, or if you like, the modified road which has been made into something that can take both fighter aircraft and civilian aircraft. All of this is thrilling in its scope and will go a long way to strengthen our strategic position. Gautam, I was in fact coming to that. This is the first extradosed bridge in the Northeast, and the fact that it optimizes structural performance, like you're saying, it reduces fatigue and maintenance. And of course, it lowers costs. What would you like to say on this bit? Yeah, well, this is the modern way to do things, not in half measures, but in a manner that takes care of today and tomorrow, which is the hallmark of the Modi government, and will go a long way to making the connectivity to different parts of Guwahati. It reminds me of Istanbul, where you've got these bridges that connect the Asian side with the European side and makes it convenient for people to live on either side and work on either side. And
Gautam, do you think that this could also attract more investments and startups to Assam and its neighboring states? Because, when you develop infrastructure on this scale, it takes away all the difficulties that a startup might face otherwise because of infrastructure, and investment in this part of the world is likely to go up sharply because they've got very intelligent and hardworking people, well educated. There is nothing to stop it. And look, it has to be judged in the backdrop of all these FTAs and more coming up. When all these FTAs add up, they're going to probably increase the GDP of the country by 1 percentage point or maybe more. So you're looking at 8 or 9% going forward. And that is marvelous in today's world where nobody is able to do more than 2%, 1% or less. All right, Gautam, thank you for joining me on the broadcast. And with that, it's time for a short commercial break. कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। काशी के घाट के अद्भुत है ठाट, जब मुंह में घुलती है मलाइयों की मिठास। लखनऊ की चाट के चटकारे कर देते वारे न्यारे। यूपी के हर जनपद के व्यंजन में है अनूठी संतुष्टि, जो समेटे हुए है संस्कृति। एक जनपद एक उत्पाद। ODOP ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को पूरे विश्व में सम्मानजनक मंच दिया है। प्रदेश सरकार की इसी भविष्योन्मुखी सोच से अब स्वाद के क्षेत्र में नया विस्तार मिल रहा है। एक जनपद एक व्यंजन ODOC। एक जनपद एक व्यंजन का शुभारंभ सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं, अपितु एक नए युग का प्रारंभ है। व्यंजनेषु वसति संस्कृति, सोच है, स्वाभिमान है, संस्कार है। यही तो डबल इंजन सरकार है। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज Newsx का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। Hello and welcome. You're watching Newsx Deep Dive and I'm Shivani Singh. On your screens, you can see the old PMO in South Block on the left and the new Seva Tirth on the right. The naming, the building, both are clear departure from the language and symbolism of empire. South Block, like much of Lutyens Delhi, was designed to project imperial power.
Built in 1930 as part of the British plan for New Delhi, it initially housed the Viceroy's office. Its grand staircases, long corridors and elevated position were intended to inspire awe and establish hierarchy. In contrast, the new Prime Minister's office at Seva Tirth represents a clear shift in both form and philosophy. It moves from control to collaboration, from seclusion to accessibility, and from colonial legacy to a citizen-centric idea of governance. On your screens, you can see Prime Minister Narendra Modi inaugurating the Seva Tirth today. This new building marks a deliberate break from the past. It represents a new idea of governance where space itself is designed to enable service, speed and collaboration. The complex has been constructed by Larsen & Toubro for the Central Public Works Department, which awarded the contract in 2022. The complex spans over 226,803 square feet and has been built at a cost of approximately 1,189 crore rupees. This building is a testimony to India's mission of modern, smart and technologically efficient governance. The remote control unveiling of the name of the building symbolizes this very idea. Look closely at the words written at the site. Seva Tirth, Nagrik Devo Bhava, which literally means the citizen is God. This phrase derives the core meaning of governance in India and positions service to the citizen at the center. It stands as an epitome of last mile delivery and inclusive development. Now let us venture into the courtyard. The exterior of the building presents a strong presence rooted in classical Indian state architecture, while being clearly adapted to a contemporary governance setting. The dominant red hue comes from sandstone sourced from Sarmathura in the Dholpur district of Rajasthan. Sandstone has been used extensively across the Central Vista project, both for exteriors and interiors, to ensure material continuity and architectural cohesion. A series of tall, evenly spaced columns or pilasters run along the length of the structure, introducing order, balance and symmetry. The windows and the openings are recessed and geometric, reinforcing the building's secure, formal and institutional character. The building is open and filled with natural light. Look at this image of the Seva Tirth and pay close attention to the ceiling. It is flat and minimal, punctured by a series of circular skylights that allow daylight to filter in from above, reducing dependence on artificial light and creating a sense of airiness. Now let us move to more photos. The idea of openness and transparency in governance is reflected clearly in the architecture. The corridors are wide, well lit and installed with soft white lights. This grand symmetrical Welcome back. You're watching Newsx and I'm Vaishali Kohli. Now, a section of a metro pillar collapsed in Mumbai's Mulund area on Saturday, February 14, with the cement portion falling onto multiple vehicles travelling below. 3 to 4 people in the affected vehicles are suspected to have been injured. Officials stated that the incident occurred during construction work. The pillar collapse triggered widespread panic among commuters and residents in Mumbai. Eyewitnesses described chaotic scenes as vehicles were struck and locals rushed to help those trapped. According to officials, no casualties have been reported so far. Shahid Ansari is joining me with more details. Shahid, जो latest जानकारी है वो क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है वैशाली, ये जानकारी में ये पता चला है कि 4 लोग घायल हुए हैं
और मेट्रो का जो ये पिलर गिरा है, यहाँ पे काम चालू था और यहाँ इसकी जद में जो है ऑटो और दूसरी गाड़ी इसकी जद में आ गई, जिसके बाद जो है यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था। मुंबई के मुलुंड इलाके में LBS मार्ग पर यह हादसा पेश आया है, जिसके बाद जब यह हादसा पेश आया है तो लोग इतने डर गए थे, उन्हें गुमान ही नहीं था कि यह हादसा पेश आया है और उन्हें ऐसा लगा कोई एक्सीडेंट हो गया है। तब उसके बाद काफी लोगों ने जो है एक साथ मिलकर वहां पे जो लोग उसमें दबे हुए थे, फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश की और उन्हें निकाल कर जो है फायर की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया है ताकि उनका इलाज किया जा सके। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं उनकी हालत अभी भी बहुत गंभीर है और बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। और इस इलाज के बाद जो है जाए वारदात पर जो है जाए हादसे पर जो जांच टीमें हैं वो जांच कर रही है, पुलिस, फायर ब्रिगेड ये सब मौजूद है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे का असल सबब क्या रहा है, कि आखिर इतना बड़ा काम होने के बावजूद इतनी सारी लापरवाहियां कैसे बरती गई जो ये हो गया है, जिसकी वजह से इतने लोग जो है इसकी जद में आ गए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शायद लापरवाही तो बहुत ही बड़े स्केल पे बरती गई है जो ये इंसिडेंट हुआ है। मैं आपके पास लौट के आऊंगी। Now the metro pillar collapse was reported around 12:20 p.m. near the Johnson & Johnson company on LBS Road. A section of a metro pillar collapsed in Mumbai's Mulund area, with the cement portion falling onto multiple vehicles passing below. 3 to 4 people in the affected vehicles are suspected to have been injured. The collapse triggered widespread panic among commuters and residents in the area. शाहिद अंसारी इज बैक विथ मी। शाहिद, ये करीब 12:20 पे हुआ है और ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास हुआ है जो LBS रोड पे। थोड़ा इस इलाके के बारे में हमें बताइए। जी देखिए, LBS मार्ग जो है ये जो इलाका है काफी ज्यादा आमद और रफ्त वाला इलाका है, ट्रैफिक का आवागमन बहुत ज्यादा है। यही सारी बातों को देखते हुए जो है मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई के और भी इलाके में इस तरह के काम चालू है और यहाँ पे जो LBS मार्ग पर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ये जो फैक्ट्री है इसके पास ही ये हादसा पेश आया है। आपको बता दूं मैं कि जब ये स्लैब गिरा है तो उस वक्त जो मंजर था बेहद खौफनाक था। एक शख्स तो उसमें फंसा हुआ था, उस इतनी बुरी तरह से जो है हालत में, जख्मी हालत में, जिसे निकालने के लिए सबने काफी मेहनत की, जिसके बाद फिर उसे निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको मैं बताऊं कि अभी तक 4 लोग जो मतलब कि जो शख्स गिरा था वो पूरी तरह से उस मलबे में आपको मैं बताऊं कि चिपट गया था। उसे निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। मौजूद जो यहाँ पे जाए हादसे पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने भी कोशिश की, चूंकि मलबा उसका वजन बहुत ज्यादा था और इसकी चपेट में ऑटो रिक्शा दूसरी गाड़ी भी आई और उसे एक आदमी के बस की बात नहीं थी हटाने की। यही वजह रही कि काफी लोगों ने जो है मिलकर उसे हटाने की कोशिश की और जो लोग थे जख्मियों को यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि उनका इलाज समय पर रहते हुए उनका इलाज किया जा सके। लेकिन जिस तरह से मलबा इतना जो है ज्यादा वजनी था उसकी वजह से जो है लोग जो उसकी जद में आए वो बेहद जो है दर्दनाक स्थिति रही है। जी शाहिद बने रहिए हमारे साथ, मैं लौट के आऊंगी आपके पास। नाउ द फायर ब्रिगेड personnel, police teams, metro staff, ward officials and 108 ambulance service personnel rushed to the spot and launched rescue operations. शाहिद इज बैक विथ मी। शाहिद, ये सब फायर ब्रिगेड हो या पुलिस टीम्स हो, 108 एम्बुलेंस सर्विसेज हो, सब मौके पे पहुंच चुके हैं। जी देखिए, जाए हादसे पर जो है फायर की टीम, BMC, पुलिस सभी लोग पहुंचे हैं और अब चूंकि ये हादसा जो पेश आया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसी जगह पर पहले भी इस तरह का हादसा पेश आया था और अब जो है जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद फिर से जो जांच टीमें हैं यहाँ पहुंची हुई वो जांच कर रही है। इस जांच को लेकर जो है सवालिया निशान भी है कि आखिर मेट्रो जैसा एक अहम काम जो चल रहा है उसमें जो है BMC या सरकार के जरिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उन पे अमल क्यों नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस तरह का हादसा पेश आता है जब लोग जानी और माली नुकसान का सामना करते हैं। आपको बताऊं कि मुंबई के अलग अलग जगहों पे, खासकर इस जगह पे पहले भी हादसा पेश आया है। आमतौर पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनमें BMC के जो नियम कायदे हैं उन पर बड़ी सख्ती से अमल करने की बात की जाती है, कई सारी हिदायतें होती है और अगर उस पर वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम करने वाले लोग अमल नहीं करते तो उनको जो है उस पर कार्रवाइयों का भी जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन मेट्रो के काम जो भी शुरू है या जहां पे भी हो रहे हैं, आप
आपको मैं बता दूं कि इस तरह के हादसे जो पेश आते हैं उसकी सबसे और असल वजह यही होती है कि जो नियम कायदे जो बनाए गए हैं उस पर जो है ये कंपनियां, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो ठेकेदार कंपनियां हैं, वो इस पर अमल नहीं करती। बने रहिए शाहिद, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। आई हैव मिस्टर धनराज Vanjari, who's a former ACP from Mumbai, joining me. Mr. Vanjari, a big shocking incident has occurred. A lot of people have been injured. What would you like to say? It's very sad that this incident has happened. Metro is a new introduction and was quite successful in Mumbai, but today everyone, their mind has been second. The transporters, the people who use the metro, their mind have been second to the seal, to their pain, that what is happening. I think in this case, the person who is contractor, number one, second, the architect, third, the person who has certified it that this pillar would be safe to have it over here. Without certification of architect, this would not have happened. So, everyone should be held responsible for criminal negligence causing damage and injuries to the people. And then only this kind of things would settle down. Apart from their whosoever nexus or connections, maybe in social sphere or in politics, no one should be spared, because this metro, Mumbai city, is growing so much, and without metro rail transport, without local rail transport, public life is just impossible in the city of Greater Mumbai. And if such thing happens, I think government should take a very serious note and cause a very sincere, in-depth inquiry, and whosoever responsible, not a single person should be spared. That is, being an ex-cop, I feel it should happen. Mr. Vanjari, as my colleague was telling me, he's also from Mumbai, Shahid Ansari, was telling me that this incident has even occurred in this area even before this. Are you aware of that, and can you share some information on that? There are some minor, but I think this is the major one who has damaged the number of cars, vehicles, and people have been injured. This is a major one. So far, small things while constructing, when there is some construction underground, certain things are inevitable, or they cannot predict, or they cannot see. If it is minor, well, it can be taken care of. Now, if you see the coastal road is so nicely built up, but still, when you pass through that tunnel, which goes from the water side itself, it is scary that agar kal jaake samundar ka koi something happens, where the people will go? They have no escape. They have no escape. Similarly, the traffic jams at 2 hours. The people were stuck on Bombay-Pune only because there is no relevant connection between the old road and new expressway. Why such things, why eventualities cannot be taken into consideration when this construction and whole work being given or projected to some contractor? There are experts, everywhere there are experts. But the system and the persons who are running the system should be held responsible. Then only certain corrective exemplary measures can be taken, and it should be taken, because still I am repeating, Mumbai and transportation is inevitable equation. In Mumbai, if you not keep the transportation, that to public transportation system well in place, this city will not survive. Mr. Vanjari, please stay on with me. I'll come back to you. Now, the injured viewers were shifted to a nearby hospital, though their condition was not immediately known. Remember, 3 to 4 people in the affected vehicles are suspected to have been injured. Shahid Ansari is joining me with more details. Shahid, जो injured किया आपने पहले भी हमें बताया, but हम फिर से जानकारी जानना चाहते हैं आपसे कि क्या कंडीशन है जो इंजर्ड लोग हैं, क्या कोई फ्रैक्चर्स, किसी की कुछ टूटा है, मतलब क्या उनकी कंडीशन है हॉस्पिटल में? शिवानी, आपने जो बताया और मैंने इससे पहले जो जानकारी दी, जानकारी के मुताबिक 4 से 5 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जो लोग जख्मी हुए हैं वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, बल्कि एक शख्स तो जो है पूरा इस मलबे में जो है ना चिपट गया था और उसे निकालने के लिए जीतोड़ जद्दोजहद करनी पड़ी। आपको मैं बता दूं कि
जो लोग थे वो लोग जो है मिलकर निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मलबे का वजन बहुत ज्यादा था और इस वजन ज्यादा होने की वजह से एक शख्स बुरी तरह से उसमें लिपट गया था, तो उसको जो है निकालने के लिए सब लोग मिलकर जो है कोशिश कर रहे थे। हालांकि आपको मैं बताऊं कि हम ये नहीं कह सकते कि इस हादसे में जो है मामूली चोटें आई, बल्कि हम ये जरूर कहेंगे कि इस हादसे में जो है गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और चूंकि जो इतना भयानक हादसा था, यानी जो लोग हैं, लोग जो है डर गए थे, लोगों को लगा भूकंप जैसा आ गया, उन्हें एक सेकंड की भी मतलब कि जो मोहलत नहीं मिल पाई। जो लोग वहां थे भागने के लिए, जो लोग जो है गाड़ियों से थे, ऑटो से थे, उनको एक सेकंड की भी मोहलत नहीं मिल पाई कि वो वहां से निकल सके। और पल भर में सब कुछ जो है आंखों के सामने रहा है, जो अफरा तफरी का माहौल रहा है। सभी लोगों को जो है निकालने के लिए लोगों की बड़ी पूरी ताकत लगी। जो फायर कर्मी है, पुलिस कर्मी है, आसपास के लोग हैं, वो सभी लोग मलबा हटाने के लिए जीतोड़ जद्दोजहद कर रहे थे। और फिर उसके बाद हटाने के बाद जैसे तैसे लोगों को निकाला गया, फिर निकाल कर उन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया ताकि जो है उनका इलाज किया जा सके। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत गंभीर अवस्था में उन्हें जख्मी अवस्था में यहां से ले जाया गया है। जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगी शायद। नाउ आई ऑल्सो हैव मिस्टर धनराज वंजारी, फॉर्मर ACP, Mumbai, joining me. Mr. Vanjari, we were earlier talking about the people who should be put to task because of this incident. Now, I want to ask you that in this case, of course, they will find out who's really responsible for this. What is the kind of, once the investigation happens, how does that progress in this case? Investigation will progress on the scientific evidence, and as your reporter was telling that something very serious has happened. So entire episode is nothing but a criminal negligence. It is not a simple negligence, but criminal negligence on part of whom? There must be a contractual obligation. When government gives this kind of contract, always this clause is there that in case anything happens, who should be held responsible? Overall, it is the contractor who will be held responsible, but inter alia, the contractor is not only person who can be held responsible. All other technical and the experts, engineer people who were there and who certified. There is a verification report, and after verification, there is a standard approval that this place is quite capable to sustain the vibration of heavy metro train with the people. And these vibration continue happens. Every train goes, the vibration it just cannot stop. But sustainability of the structure for that vibration was at place or not, that will be the crux of investigation. And whosoever responsible will be taken to the task. They will be booked. I am very sure Mumbai police will not spare, continue with deep investigation. And it is really a shocking way your reporter was telling the way the injured and their conditions are. I pray Almighty that no casualties so far and there should not be death. Otherwise, it will be a much serious issue. Mr. Vanjari, please stay on with me. I'll come back to you. Now, the exact cause of the collapse is yet to be ascertained and a detailed inquiry is expected to follow. This comes as a section of a metro pillar collapsed in Mumbai's Mulund area, with a cement portion falling onto multiple vehicles passing below. 3 to 4 people are said to have been injured in this collapse. Mr. Vanjari, the people who've been injured, we don't have complete information yet. This is a developing story, but they seem to be grievously injured are in the hospital. According to you, what is the kind of aid that should be provided to the injured? The case police will register. According to my information, the police have already cordoned the area. They are making detailed panchanama. Everything will be examined, whether there was any mishap or whatever the cause. Police will come to the conclusion that what causes the incident. And after that cause verification, they will look for a man who is responsible or a men who are collectively responsible for this. And accordingly, the case will progress, investigation will progress. I hope this time police needs the cooperation of people. As your reporter was narrating on the channel, that a lot of people running helter-skelter here and there, they shouldn't do that. They should follow the instructions given by police and they should cooperate to the police to conduct in-depth inspection of the spot where the incident has happened, and thereafter whosoever has any
information which can be provided evidence in the investigation, they should come forward and deposit to the police. So police accordingly will conduct in-depth investigation, and through investigation, whosoever will be held responsible will be summoned and charged in the court of law, and court also will take it very seriously, because in a metropole like Mumbai, continuously you might have seen in the news, High Court has many times expressed their heart feeling about the working of the system. Many a times they give their remarks that this system is not proper, why this happened to the public, why it is not happening in private and all that. So I think the government is also enough sensitized for such incidents, and they will also instruct police and their aligned machineries to have deep investigation, and secondly, not to have repetition of such incident anywhere. They should immediately conduct the survey of all such sustainable places where there can be this type of accident, and everything should be taken care beforehand. If they really concerned for the people of this metropolitan city, the working class who have no other access but to travel compulsorily with local or the metros, they are prime important. They are the citizens of this city, and they should be expecting welfare to the core of their need, and their need is safety. So safety and security angle is also equally important in this case, and I hope Mumbai police will do their best, as it is known all over Mumbai police for excellent investigation. They will conduct their role nicely. Right, Mr. Manjari, thank you for joining me on the broadcast. And now moving on. Now, in a groundbreaking move to safeguard children across the country, India has launched Raksha, the nation's first AI-powered child protection system. This innovative platform harnesses nationwide real-time data and advanced artificial intelligence to predict and prevent serious threats, including child trafficking, child marriage, and online exploitation, including child sexual exploitative and abuse material. Developed by Just Rights for Children in affiliation with the Ministry of Electronics and Information Technology, and in partnership with over 270 organizations spanning more than 450 districts. Raksha shifts child protection from reactive rescues to proactive prevention. It features 3 key modules: one addressing economic vulnerabilities to curb child marriage, another disrupting organized trafficking networks by tracking financial flows and mapping hotspots, and a third strengthening defenses against online abuse through pattern detection. I now have Shivani Singh joining me to show you what the website looks like. Over to you, Shivani. Remember that this is an ecosystem that has been reactive in nature, and what India wants to do is change it, and change it using predictive intelligence, and change it into a more preventive mechanism. So let's look at what Raksha AI actually looks like and what the website says. So let's look at, this is the official website that we have in fact brought for you, and it states that this is technology for prosperity, empowerment and protection. So Raksha AI is this national-wide AI-driven geospatial intelligence platform that is designed to forecast child trafficking, child marriage risk, CSEAM investigation, which is child sexual exploitation abuse material. They look into that as well, and this in fact will enable early, targeted and data-backed intervention by the government. Remember that this is something that is in coordination with law enforcement officials, with AI technology firms, and with also people working, the social organizations working in this field as well. So let's look at why we are actually looking at Raksha AI. Like I mentioned, that the child protection systems today are reactive by design. So what this AI actually does is it introduces predictive intelligence to shift prevention
upstream, and they have in fact given why this is important, because the scale of vulnerability is very large, and through AI they can actually monitor data, they can actually monitor the hotspots that are there, and this is preventive in nature like we have established, and there is a system level intelligence that actually also comes into place, and there is shared intelligence for governments, for NGOs, for agencies as well. Apart from this, like we've been mentioning, that the CSEAM, or the Child Sexual Exploitation Abuse Material Online, this AI can actually monitor the hotspots. It can make sure that wherever there are offenders, or it can identify harmful content and even the people who disseminate it. This will in fact support safe, responsible digital spaces for children, and this is something that actually is very important when we are looking. So let's look at the core intelligence domains. What are the three core areas that we are looking at? We are looking at child trafficking. To prevent it, we are looking at preventing child marriages in vulnerable hotspots, and we are looking at child sexual exploitation abuse materials in online spaces, and this is something that we are in fact looking at. So when you are looking at Raksha AI, this is a very important field that the government is in fact developing with a lot of partners, and this is three focus areas that we are looking at. In fact, like we mentioned, we're looking at child trafficking. We'll prevent that. We'll be able to monitor the hotspots through data, through maps, and this is something that is live. Geospatial intelligence will also be roped in, so we will be able to prevent child trafficking and we'll be able to monitor those hotspots where this actually happens. Then we are also looking to prevent child marriages. This is something that the government is looking at in vulnerable communities. They want to prevent this from happening, so they will also be tracking those. Apart from this, let's look at online traffickers as well. We are looking at online systems. They will be able to identify the financial trails, and the AI intelligence will be used to identify those people who are actually involved in these fraudulent transactions, and who are involved and the main people running actually such operations. So this is how AI will be incorporated. We'll get data because law enforcement agencies are also roped in, so we'll get data from central agencies. We are getting geospatial help from maps, from AI. So all these three areas, in fact, when we talk about CSEAM, that's something that also AI will be looking at, but because they'll be able to immediately identify if there is some dissemination of material that is harmful for children, that is harmful and that should not in fact be distributed. So they'll be able to track the IP address, they'll be able to make sure that it is nipped in the bud. So overall, Vaishali, what this is this is a preventive mechanism that we are looking forward to, and India is looking forward to make sure that there is a reduction in all of these. Back to you. All right, thanks for joining me with those details. And now moving on. We have breaking news coming in, viewers. Now, according to reports, one person has succumbed to the injuries in the Mulund metro pillar collapse. Very unfortunate. This comes as a section of a metro pillar collapsed in Mumbai's Mulund area, with the cement portion falling onto multiple vehicles passing below. This is absolutely heartbreaking news, viewers. We did know that people were injured, but one person, unfortunately, has succumbed to his injuries. Shahid Ansari joining me with more details. शायद हम पहले बात कर रहे थे कि लोग इंजर हो चुके हैं, बट एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, और आपको मैं बता दूं कि इसकी जद में एक प्राइवेट कार भी आई थी, और उससे भी अहम ये है कि जो हादसा इतना खतरनाक था कि उसकी चपेट में जो है जो लोग थे उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। तो जो एक शख्स जो उसकी जद में आया है उसके ऊपर जो है बड़ी बुरी तरह से जो है मलबा गिरा हुआ था, और इस मलबा गिरने की वजह से जो लोग हैं इनको निकालने में जो है बड़ी दिक्कतें पेश आई। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी वहीं पे जाए हादसे पर ही जो है बड़ी गंभीर स्थिति थी,
और उस दौरान जब लोगों ने उसको निकाल कर लेके गए तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है उसने दम तोड़ दिया है। अभी आगे की भी जो है तफ्तीश जारी है, सारी जांच टीमें यहाँ पहुंच चुकी हैं, मुंबई पुलिस, फायर विभाग, सभी लोग जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। जी शाहिद, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए थोड़ा दोबारा हमें समझाएं कि हुआ क्या था। 12-20 का ये इंसिडेंट है, थोड़ा और बताइए इसके बारे में। जी, मुंबई के मुलुंड इलाके में LBS मार्ग पर, ये एक बहुत ही बिजी रास्ता है, LBS मार्ग पर मेट्रो का मलबा जो है, मलबा गिरने की वजह से यहाँ पे पास में एक ऑटो रिक्शा है, उसके ऊपर मलबा गिर गया था, जिसकी जद में जो है एक प्राइवेट कार भी आई। और इस दौरान आपको मैं बता दूं कि हादसे में जो है कई लोग जख्मी हो गए। जो मलबा था उसका वजन इतना ज्यादा था कि कई लोगों ने मिलकर उसे यहाँ से हटाया। हटाने के बाद जो है सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सबने कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक व्यक्ति जो इसकी जद में सबसे ज्यादा आया था उसकी मौत हो गई है। मुंबई के मुलुंड इलाके में जो मेट्रो का काम चल रहा है, इससे पहले भी यहाँ इस तरह के हादसे हुए हैं और इस हादसे में जो है इसके पहले भी जो है लोग जख्मी हुए हैं। आज जो हादसा पेश आया है इसमें एक शख्स की मौत हुई है और मौत के बाद जो अभी बाकी के लोगों का इलाज चल रहा है। चाहे हादसे पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, BMC की सभी टीमें पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच कर रही है। जी शायद कोई अथॉरिटी से कोई खबर आ रही है, जो मेट्रो के वो है अथॉरिटी के लोग, उनसे कोई खबर आ रही? जी देखिए, MMRDA की तरफ से चूंकि जो काम है ये MMRDA की तरफ से जो है ये मैसेज आया है, उन्होंने ट्वीट करके जो है ये अपडेट दी है कि जो एक्सीडेंट हुआ है 12:15 पर उनके मुताबिक मेट्रो का जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो लाइन है वो चल रही थी और इस दौरान जो है एक पोर्शन जो है उसका गिर गया, जिसकी जद में कई लोग आ गए। ऑटो रिक्शा जो है उसकी जद में एक प्राइवेट कार भी आई है। उनके मुताबिक 2 लोग जो है जख्मी हुए हैं, जबकि जहां जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि 2 से ज्यादा लोग हैं, यानी 4 लोग के आसपास लोगों ने बताया है। हालांकि वो जो बता रहे हैं वो 2 लोगों के बारे में बता रहे हैं। मौत की पुष्टि उन्होंने नहीं की है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो है इसमें एक मौत हो गई है। मैं आपको बता दें कि मुंबई के अलग अलग जगहों पर इस तरह के जो है काम चालू है और अक्सर के जो है नियम और कायदों की जो है धज्जियां उड़ाने की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं और कई जानी और माली नुकसान हो जाता है। इस तरह से आज जो है इस मामले में एक जानी नुकसान हो चुका है। जी शायद ये जो LBS रोड का जो एरिया है इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी आपको मैं बता दूं कि मुलुंड का जो ये LBS मार्ग है, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग है, ये बिजी रास्तों में से एक है। ट्रैफिक की आवाजाही, आवागमन बहुत ज्यादा रहती है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहता है। और जब ये मलबा गिरा है शिवानी, आपको बताऊं कि उस दौरान किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लोगों को ये लगा कि शायद कुछ भूकंप जैसी स्थिति हो गई है, अफरा तफरी का माहौल था, लोग भाग रहे थे। लेकिन फिर कुछ लोग जब वहां देखे कि हालात ये है तो उन्होंने मदद के लिए भी जो है हाथ बढ़ाया। फायर और पुलिस की टीमें आई तो उन्होंने निकाल कर जो है जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। जी शाहिद बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। दिस इज बिग न्यूज व्यूअर्स, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देयर। अ पोर्शन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन metro pillar in Mumbai has collapsed, and that's led to 1 person who's unfortunately died and 4 have been injured and have been admitted to the hospital. Now the MMRDA has released a statement on the metro pillar collapse. MMRDA, pardon me, has said that the incident occurred at around 12:15 p.m. near Pier P196 of metro line construction works in the Rajiv Milan stretch close to Mulund Fire Station, where a portion of a parapet segment fell from a height and struck a passing auto rickshaw. 2 individuals sustained injuries and were immediately shifted to a nearby hospital. Their condition is being monitored and all necessary medical assistance is being extended. So this, viewers, is the latest information that we're getting you. शाहिद, मैं वैशाली स्टूडियो से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। अब ये जो नई स्टेटमेंट रिलीज हुई है MMRDA की, उसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? MMRDA ने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक जानकारी के हिसाब से चीजें जारी की है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो एक जिम्मेदार एजेंसी होती है उसको जो है, अगर उन्होंने एक तो इतना जो है देर से इस हादसे को लेकर इतना देर उन्होंने जो है ये ट्वीट किया है, ट्विटर एक्स पर उन्होंने ये MMRDA ने जो है ये बयान जारी किया है। उसके साथ साथ उन्होंने अभी
एक शख्स की मौत हो गई है, ये कंफर्म भी है वैशाली, और मौत होने के बाद भी अभी तक MMRDA की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के हिसाब से जो है एक बयान जारी कर दिया है, लेकिन क्या खामियां रही, क्यों हुआ, ये इस बारे में अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया। जी शाहिद, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। नाउ द ब्रिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज नाउ रिलीज्ड देयर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द मुंबई मेट्रो collapse. Taking to social media, BMC took cognizance of the case and stated that more details are awaited. शाहिद, ये जो ब्रिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक नई स्टेटमेंट अभी रिलीज हुई है, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? जी, उन्होंने ये पूरे मामले को लेकर जो है जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि ये हादसा कब पेश आया और कैसे पेश आया। उन्होंने ये भी बताया है कि जो ये हादसा पेश आया है उसका समय बताया, चूंकि पहले भी आपको मैं बता दूं कि जो मुंबई फायर ब्रिगेड का जो बयान आया है, चूंकि फायर ब्रिगेड भी जो है BMC के ही अंतर्गत है, तो उन्होंने जो बयान जारी किया है वो 12:20 का समय बताया है और उन्होंने बताया है कि हादसे में लोग जख्मी हुए हैं और राहत कार्य जारी है। अभी भी आपको मैं बता दूं कि जाए हादसे पर जो है अभी भी जो लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं और वो जांच कर रही है। पुलिस जो है इस मामले में जो है अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं किया है। हालांकि जो है कुछ देर में जानकारी मिली है कि ऑफेंस भी रजिस्टर किया जाएगा। अब ये हादसाती मौत का मामला दर्ज किया जाता है या लापरवाही का, ये देखने वाली बात होगी। जी बने रहिए शाहिद। Now the 4 others injured in the incident sustained injuries of varying severity. Medical teams are currently monitoring the condition of those hospitalized. शाहिद, जो 4 और लोगों की कंडीशन हॉस्पिटल में, उसके बारे में आपके पास क्या लेटेस्ट जानकारी है? वो उस मलबे की जद में आ गए थे और वो मलबा का वजन जो था बहुत ज्यादा था और जब लोग और गिरने के बाद भी काफी समय तक वो उसमें फंसे रहे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि चूंकि मलबे का वजन ज्यादा होने की वजह से जो लोग हैं वो लोग जो है वहां से खुद से तो निकल नहीं सकते थे और जो आसपास के जो लोग थे वो अफरा तफरी के माहौल में थे, अफरा तफरी के माहौल में थे और लोग जो है डरे हुए थे और उस दौरान जो लोग हैं वो भाग रहे थे और जब पुलिस या फायर ब्रिगेड जब आई तब लोगों को ये राहत हुई कि हाँ चलो इनकी मदद की जाए और उस दौरान जो है लोगों को वहां से निकाला गया। फिर निकालने के बाद जो है यहाँ हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि काफी देर हो चुकी थी। जो लोग उसमें फंसे थे मलबे की, उस वजह से काफी ज्यादा मात्रा में वहाँ खून निकला है और काफी ज्यादा जो देखने में समझ में आ रहा था कि फ्रैक्चर जो है ज्यादा हुआ है। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति आपको मैं बता दूं कि हम ये नहीं कह सकते कि मामूली चोट या मामूली खराश, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है, गंभीर अवस्था में जो है उनका इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन। नाउ होम मिनिस्टर अमित शाह हैज कॉल्ड राहुल गांधी a leader who spreads lies, saying Rahul Gandhi is misleading the country's farmers and fishermen. The Home Minister said that Narendra Modi ji's free trade agreements with the European Union and England and the trade deal with America will benefit our country's fishermen the most. Rahul Gandhi ji wants to mislead the country's fishermen and farmers, wants to spread confusion by telling lies. Let's listen in. भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, Singh is joining me with more details. Anand, what more can you tell us? Yeah, sorry, look, the way in which now Union Home Minister Amit Shah has taken a swipe at leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, who has dubbed the government that how it has surrendered before the United States over the US-India trade deal. So clearly, Amit Shah called Rahul Gandhi a leader who completely spreads lies and misleading the country's farmers and fishermen. He said that
Narendra Modi has done free trade agreements with the European Union and England, and the trade deal with America will benefit our country's fishermen the most. While taking a swipe at Rahul Gandhi, he said that Rahul Gandhi wants to mislead the country's fishermen and farmers, wants to spread confusion by telling lies. And today from this platform, I want to respond to Rahul Gandhi. Look carefully at the intricacies of trade deals and FTAs. Modi ji has ensured 100% protection for the country's farmers and livestock raisers. So clearly, he said that this FTA and trade deal with US will not cause any kind of harm to our farmers. The harm happened to farmers during your Manmohan Singh's government, and he mentioned that several such global agreements were made in which farmers' interests were sold off. So clearly, he had taken a jibe at Rahul Gandhi that how under UPA government led by Manmohan Singh, it has sold off farmers' interests, and he then mentioned that how Narendra Modi has ensured 100% protection for farmers, livestock rearing sisters and brothers and fishermen. So clearly, slamming Rahul Gandhi, he said that his policy is to speak lies, speak them loudly, speak them publicly and repeat them over and over. But Rahul Gandhi, the people of this country have recognized your lies manufacturing factory. And I say it once again. I'll have to interrupt you. I have Ms. Sujata Paul. She's a Congress spokesperson joining me. Ms. Paul, a big statement coming in by Amit Shah. He said that he's called Rahul Gandhi a leader who spreads lies, and he's saying that Rahul Gandhi is misleading the country's farmers and fishermen. What would you like to say on that? Vishali, it is very clear that the Honorable Home Minister is the biggest peddler of lies. And when Mr. Modi is not being able to speak a word in his defense, he is bringing ministers to the fore, and now the Home Minister has had to step in. But clearly, the peddler of lies is Mr. Modi. He has not told us the truth about the statements of Mr. Donald Trump on Operation Sindoor being stopped at a time when we could have really taken over maybe a part of POK as per the wish of the BJP government. But they did not do it, and this was all done for a trade deal. And trade deal details were given out first by Donald Trump. And clearly, if his name has appeared in Epstein files, he needs to answer why is it that he was dancing to the tune of Mr. Donald Trump, and how did it benefit him? Also, on the book of General Narwane, it is clear that the BJP is looking for corners to hide themselves, because when we lost our strategic position on Mount Kailash, which we had gained just a few hours earlier, it was because of Mr. Modi, who could not take a decision. So why are they not answering these questions instead of bringing one minister in and then the next one and so on? He should make a statement before the country, because he's not a king. He is the Prime Minister of and he's a constitutionally elected Prime Minister of a democratic nation. He is answerable and accountable to the people of the nation. All right, Ms. Paul, thank you for joining me. And now moving on, now a tragic incident unfolded on Valentine's Day in Delhi, where a young man and woman believed to be in a relationship reportedly took their own lives. The deceased residents of Trilokpuri in East Delhi were found dead under circumstances suggesting a possible suicide pact. Police recovered a pistol from the scene, and investigations are underway to ascertain the exact cause and sequence of events. Authorities are currently working to formally identify the victims and probe any underlying factors. This developing story has shocked the local community, with more details expected as the investigation progresses. Ali Khan is joining me with more details. Ali, आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? अली, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ वैशाली, कि ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 107 का है, जहाँ पे ये जो डबल वो
नजर आ रहा है कि युवक ने पहले खुद को गोली मारी, बाद में अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। ये युवक युवती प्रेमिका बताए जा रहे हैं और करीबन पिछले 24 घंटे से दोनों अपने घर से लापता थे। युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो लोकपुरी के थाने दिल्ली में दर्ज कराई गई थी और युवती की रिपोर्ट थाना 58 में दर्ज कराई गई थी नोएडा के। दोनों की मिसिंग की कंप्लेंट पहले ही फाइल करी गई थी और अभी कुछ देर पहले दोनों के शव यहाँ नोएडा के सेक्टर 107 में गाड़ी में मिलते हैं। युवक के हाथ में पिस्टल नजर आ रही थी, एक इंग्लिश पिस्टल युवक के हाथ में थी, जिससे युवक ने पहले युवती को गोली मारी और फिर बाद में खुद को भी गोली मार के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। युवक का नाम सुमित और युवती का नाम रेखा बताया जा रहा है। दोनों की उम्र करीबन 24 से 28 साल के आसपास की बताई जा रही है। वैशाली, शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए। Now meanwhile, PM Modi will address a gathering. Let's cut across. লগতে এই মঞ্চত উপস্থিত থকা মোৰ সতীৰ্থ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু প্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 2016 চনৰ পৰা আজিলৈকে নিৰন্তৰভাৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি আমাৰ অসমখনত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকক আজি সামাজিক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিছো। অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়াইছো। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এইখন অসম এটা সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অশান্ত অঞ্চল হিচাপে জনাজাত আছিল, কিন্তু এই অসমত পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত মানুহ আহিবলৈ ভয় খাইছিল। কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট সস্তীয়া ৰাজনীতি আৰু বিভাজন নীতিৰ যোগেদি অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰি অসমখন সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল কৰি ৰাখিছিল। আৰু সেই কংগ্ৰেছেই অসমৰ জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তাহীনতাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছিল। কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটোৱে জন্মলগ্নৰে পৰা সদায় অবৈধ বিদেশীক প্ৰাধান্য দি আহিছে আৰু এইখন অসমতো অবৈধ বিদেশীক তেখেতসকলে নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে 1983 চনৰ 20 অক্টোবৰ তাৰিখে IMDT আইন তেখেতসকলে বলপূৰ্বকভাৱে অসমত জাপি দিছিল। লক্ষ্য আছিল অবৈধ বিদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা আৰু মাটি ভেটি দি স্থায়ীভাৱে ইয়াত নিগাজিকে থকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া জাতিৰ পৰিপন্থী সিদ্ধান্ত লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে ঘৃণনীয় ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছিল, সম্পূৰ্ণৰূপে দেশ বিৰোধী কামত লিপ্ত হৈছিল। কিন্তু মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে IMDT আইনখনক অবৈধ হিচাপে ঘোষণা কৰি অসাংবিধানিক ঘোষণা কৰি বাতিল কৰাৰ ফলত আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত, সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। আৰু আজি বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰে দিল্লী আৰু অসমত যি ধৰণে নিৰন্তৰভাৱে খিলঞ্জীয়া লোকক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যেনেধৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু লগতে সমগ্ৰ অসমতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাত আন্তৰিকতাৰে গোটেই অঞ্চলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ বাবে যি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ লৈছে, তাৰ বাবে আজি অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অন্যতম শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। গতিকে সেইবাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ কাৰ্যকালত এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক তেখেতে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ অসমৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে,
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে, ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনগণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈছে। আৰু সকলোৱে আজি তাৰিখত এই কথা মানি লৈছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হ'ব আৰু বিশ্বৰ সৰ্বাধিককৈ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ সেই ঘৃণনীয় দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, বিভাজন নীতিৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ পূৰ্বতে ৰাষ্ট্ৰপতিও নাছিল, দলঙো নাছিল, চিকিৎসাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে অসম পিছ পৰি আছিল। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিক গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰি হৃদয়ৰ আত্মনাত তেখেতে বুজি তেখেতে যেনেধৰণে অসমৰ গামোচাখনৰ লগতে আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক আমাৰ পৰম্পৰাগত আমাৰ শিষ্টাচাৰ মূল্যবোধ সকলোকে উদগনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'লে, তাৰ ফলত আজি অসমীয়া সমাজ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। আমাৰ মাটি ভেটি, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। আৰু ফলত আজি অসমৰ ডেকা গাভৰুৱে জীৱনৰ সপোন ৰচনা কৰিবৰ বাবে সক্ষম হৈছে। আৰু এইখন অসম আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে যে পৰিগণিত হ'ব, এই কথা নিশ্চিত। আজিও আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিছু সময় আগতে মৰাণত এটা এমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি অৰ্থাৎ এটা নতুন এয়াৰপৰ্ট তেখেতে প্ৰদান কৰিলে বুলি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কাৰণ 4.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা ৰানৱে সদৃশ তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱস্থা কৰাৰ ফলত ৰাস্তাৰ ওপৰতে আজি কেইবাখনো যুঁজাৰু বিমান অৱতৰণ কৰিলে, লগতে মালবাহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন এমাৰ্জেঞ্চি সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা জাহাজ তাত লেণ্ডিং কৰি সফলতাৰে এই যিটো পদক্ষেপ ইয়াক প্ৰমাণ কৰিলে। গতিকে এনেধৰণে আজি গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীৰ এই দলং উদ্বোধন কৰি আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট, টেকনলজি চেণ্টাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি আজি তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰি এই কথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক অৱগত কৰিলে যে এইখন অসম তেখেতে কোৱাৰ দৰে এ ফৰ আছাম সেই দিশত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ আত্মবিশ্বাসে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰিয় সতীৰ্থ সহকৰ্মীসকল, মই আপোনালোকক এটাই আহ্বান জনাওঁ, আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হৈছোঁ। আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচন হ'ব অসম বিধানসভাৰ। গতিকে এই নিৰ্বাচনত আমি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। পাৰিবনে নাই? পাৰিবনে নাই? পাৰিবনে নাই? আমি পাৰিম, কাৰণ আমাৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ। আৰু এটা কথা কওঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিশ্বাস কৰে নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট, পাৰ্টি ছেকেণ্ড, সেল্ফ লাষ্ট। অৰ্থাৎ আমি সদায় দেশৰ বাবে সমৰ্পিত ভাৱনাৰে সেৱা কৰিব লাগিব। আমাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম। গতিকে সেইবাবে সেই মানসিকতাৰে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আজি সকলোৱে যোগদান কৰিছোঁ। আৰু এই মহামঞ্চৰ যোগেদি মা ভাৰতী শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগিব। আৰু আমি এই কথা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে পৃথিৱীৰ বুকুত যদি আটাইতকৈ শক্তিশালী মূল্যবোধৰ আধাৰত পৰিচালিত কোনোবা ৰাজনৈতিক দল আছে, সেইটোৱে হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। এইখিনি কথাকে কৈ মই আজি পুনৰবাৰ সমবেত প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক মহান, আপোনালোকৰ
ভগৱানে যি শক্তি দিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিটো দৰ্শন দিছে আৰু আমাৰ নেতৃত্ব বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বুকুত যেনে পৰিচয় বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদায় এটি কথা বিশ্বাস কৰে বিৰাসত ভি বিকাশ ভি গতিকে উন্নয়নৰ লগতে আমাৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেই লক্ষ্যৰে আমি আগন্তুক দিনত নিষ্ঠাৰে অসমীয়াই শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই আমি দেশ সেৱাৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিম আৰু ভাৰত মাতাৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই আমি সকলোৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ একতা অখণ্ডতা সাৰ্বভৌমত্ব আমি ৰক্ষা কৰিম ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবৰ বাবে আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হ'ম তাকেই কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ধন্যবাদ মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মই এইবাৰ আমাৰ সন্মুখত বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সকলোৰে খবৰ কেনেকুৱা কিমান ভাল মোৰ লাগা নাই ইফালে বহুত ভাল বুলি এইফালে কিমান ভাল এইফালে কিমান ভাল তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সকলোৱে থিয় হৈ একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি আমাৰ সভাত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বৈজয়ঞ্জয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া হৰিশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপস্থিত মোৰ সন্মানীয় সতীৰ্থসকল আজি অসমৰ 31,486টা বুথৰ পৰা অহা মোৰ সন্মানীয় বুথ সভাপতিসকল কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু সতীৰ্থ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি ইয়াতে কি পাতিছোঁ বুথ বিজয় সংকল্প সমাৰোহ আজি ইয়াত আমাৰ বুথৰ সভাপতিসকল আছে কোনে কোনে 2026 বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কাৰ কাৰ বুথ জিকিব আপোনালোকে হাত উঠাই দেখাই দিয়ক পাক্কা জিকিব পুৰা জিকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগত কৈছে কিন্তু জিকিব নে নিজিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ময়ো কৈছো যে এইবাৰ আমি জিকিম আৰু এনে নিজিকো এইবাৰ আমি ৰেকৰ্ড কৰি জিকিম এইবাৰ আমি ৰেকৰ্ড কৰি জিকিম কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক যি বিচাৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমক হে দিছে আমাক হে দিছে আমি বহু দিনৰ পৰা কৈ আছিলো যে যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত যিটো নেশ্যনেল হাইৱে তাৰ অৱস্থা বেয়া গাড়ী মটৰ নাযায় আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মৰাণলৈকে গৈছিল আমাক গাড়ী মটৰ যোৱা হাইৱেটো দিলেই লগতে এৰোপ্লেন নামিব পৰাও হাইৱে আমাক আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিলে শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জানি ভাল পাব যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠক হৈছিলে অলপ আগতে এই বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত
সদৰি কৰা হৈছে অসমত অহাৰ আগতে যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গহপুৰ আৰু নুমলীগড়ৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ নিৰ্মাণৰ বাবে 18,000 টকা অনুমোদন কৰিছে কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ বগীবিলৰ দলং ধলা খদিয়াৰ দলং গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলং আৰু এতিয়া গহপুৰ আৰু নুমলীগড়ৰ মাজত সুৰংগৰ নিৰ্মাণ আমি অসমীয়াই যি জীৱনত কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আমাক হিয়া উজাৰি অসম মাতৃৰ বাবে তেখেতে ভাবিব নোৱাৰা উপহাৰ আমাৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে মই যিদিনাখন কৈছিলো কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব মানুহে মোক হাঁহিছিলে যেতিয়া কৈছিলো নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজত টানেল নিৰ্মাণ হ'ব তেতিয়া মানুহে আমাক হাঁহিছিলে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি প্ৰমাণ কৰিছো যে অসমৰ বিজয়ত এতিয়া কোনো বাধাৰ প্ৰাচীৰ সন্মুখত থাকিব নোৱাৰে মইতো বিশ্বাস কৰো অহাবাৰ যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যত বিজেপি আৰু এনডিএৰ চৰকাৰ আহিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ ওপৰতো এৰোপ্লেন নামিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ ওপৰতো এৰোপ্লেন নামিব আৰু মই এনেই কোৱা নাই মই যি কওঁ ভাবি চিন্তি কওঁ আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'ব পাৰো যে আপোনালোকে বিজেপিৰ চৰকাৰ দিয়ক এইবাৰ 1.5 লাখ চাকৰি হল অহাবাৰ 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি হ'ব মই এনেই কোৱা নাই এইবাৰ 1.5 লাখ বিঘা মাটি আমি এভিকশন কৰিছো অহাবাৰ 5 লাখ বিঘা মাটি আমি এভিকশন কৰিম মই এনেই কোৱা নাই এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযান 1 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিছে অহাবাৰ 10 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি অসম মাতৃক বিকাশৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম কাৰণ অসম আমাৰ মাতৃভূমি ভাৰত আমাৰ জন্মভূমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমত ডাঙৰ হ'ব লাগিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্ৰিটিছৰ পাছপোৰ্ট ল'ব পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শক্তি নাই সেই কাৰণে আমি অসমৰ স্কুল বনাব লাগিব অসমত কলেজ বনাব লাগিব অসমত মেডিকেল কলেজ বনাব লাগিব অসমত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং বনাব লাগিব অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিব লাগিব আৰু অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু মই বিশ্বাস কৰো এনডিএৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমে সেমি কণ্ডাক্টৰ দেখিলে অসমে সাৰ কাৰখানা দেখিলে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাৰ্চত বৰাক ভেলীলৈ যাব শিলচৰৰ পৰা বৰাপানীৰ পৰা গুৱাহাটী আমি 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰিব পাৰিম 22,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব এয়া অসমৰ বাবে স্বৰ্ণিম দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰত যাব গেলেফু ভূটানৰ লগত আমাৰ ৰেল লাইন হ'ব আৰু আমি অসমীয়াই আটাইতকৈ
আমাৰ অসমখনক ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বনাবলৈ আমি নিজকে উৎসৰ্গা কৰিম আমি নিজকে দিনে ৰাতিয়ে সমৰ্পণ কৰিম প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ আমি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে অসম মাতৃৰ বাবে আমি উৎসৰ্গা কৰিম আমি অসম মাতৃক জগত সভালৈ লৈ যাম আমি অসম মাতৃক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম আৰু মই বিশ্বাস কৰো যোৱা 10টা বছৰৰ প্ৰগতি যোৱা 10টা বছৰৰ বিকাশ আৰু যোৱা 10টা বছৰৰ বিৰামহীন প্ৰগতিয়ে আজি অসমক এক নতুন যুগলৈ লৈ গ'ল এতিয়া অসমে কাৰো ওচৰত শিৰ নত কৰিব নালাগে এতিয়া অসমে দৰমহা দিবলৈ কাকো টকা বিচাৰিব নালাগে অসমে এতিয়া কাজিৰঙাৰ ওপৰত কৰিডৰ বনাবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ বনাবলৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ যিমান কাম বাকি আছে আমাক সকলো কাম কৰি দিব কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্বাস কৰে এ ফৰ ডাঙৰ কৰি কব এ ফৰ আৰু ডাঙৰ কৰি কব এ ফৰ সদায় যেতিয়া অসমৰ নাম আহিব গৌৰৱেৰে সৈতে কব যেতিয়া ভাৰতৰ কথা আহিব গৌৰৱেৰে সৈতে কব কাৰণ আমি বিজেপিৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তা আমি গৌৰৱী অসমীয়া আমি গৌৰৱী ভাৰতীয় আৰু আমি সকলোৱে মিলি এইখন অসমক আমি সুৰক্ষিত কৰিম যিসকলে অসমৰ প্ৰতি ৰঙা চকুৰে চাই আজি তেওঁলোকক মই সকিয়নি দিম বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু আহি আছে আপোনালোকৰ ৰঙা চকু আমি উন্নয়নেৰে কাঢ়ি ল'ম সুৰক্ষাৰ মন্ত্ৰৰে কাঢ়ি ল'ম এই অসম আৰু কেতিয়াও থমকি নৰয় শ্ৰদ্ধাৰ বুথ সভাপতিসকল আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল এই নিৰ্বাচন 26ৰ নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে জীৱন আৰু মৰণৰ সংকল্প কাৰণ অসম এতিয়া তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি গৈছে আমি অসমক থমকি ৰব দিব নোৱাৰো আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান থমকি ৰব নোৱাৰে আমাৰ সিদ্ধান্ত থমকি ৰব নোৱাৰে অসমৰ বিকাশ আৰু থমকি ৰব নোৱাৰে আমি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবই লাগিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমাৰ এই 5টা বছৰত যোৱা 10টা বছৰত আমি এটা বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিলো এতিয়া সময় অসমক আগুৱাই লৈ যোৱা এতিয়া সময় অসমক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ সময় আৰু মই বিশ্বাস কৰো আমি সকলোৱে লগ হৈ এনেকুৱা এখন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম যিখন অসমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শান্তিৰে থাকিব পাৰিব সুৰক্ষাৰে থাকিব পাৰিব কোনেও আমাৰ অসমৰ পাছপোৰ্ট বাদ দি ব্ৰিটেইনৰ পাছপোৰ্ট ল'বলগীয়া অসমত আৰু দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও পৰিৱেশ আহিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এখন আমি বিকশিত সুৰক্ষিত অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকক মই আহ্বান জনাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আজি আমি সংকল্প ল'ম এপ্ৰিলত আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে দিনে ৰাতিয়ে আমি কষ্ট কৰিম 31,000 বুথ 3 লাখ আমাৰ পেজৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু শক্তি কেন্দ্ৰ মণ্ডল বুথ জিলা
গোটেই বিজেপিৰ পৰিয়ালে এনডিএৰ লগত একেলগে আমি সকলোৱে কাম কৰিম আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত এখন বিজেপি চৰকাৰ আমি উপহাৰ দিম। পাৰিম নে নোৱাৰিম? পাক্কা কওক, পাৰিম নে নোৱাৰিম? সকলোৱে আমাৰ ভোট জিকিম নে নিজেকে? আগতকৈ বেছি ভোট পাম নে নাপাম? আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিম নে নকৰিম? সকলোৱে কাৰ আগত সংকল্প লৈছো? মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগত আমি সংকল্প লৈছো। मैं मोदी जी का सामने असम के सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री जी को हम ये आश्वासन देता हूं कि पहले से भी ज्यादा मजबूती से हम असम में बीजेपी का सरकार आपका नेतृत्व में लेके आऊंगा। आऊंगा कि नहीं आऊंगा? हर वोट हम लोग जीतेगा कि नहीं जीतेगा? हम इलेक्शन तक दिन रात एक करके काम करेगा कि नहीं करेगा? पक्का करेगा? पक्का करेगा? तो मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज ये बूथ विजय संकल्प सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से निवेदन करता हूं। अभी সকলে একলে কম, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी। সকলোকে নমস্কাৰ। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে? জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। मैं असम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी बड़ी आम सभाएं करने का तो बहुत अवसर मिलता है। जनता जनार्दन को उनके दर्शन करना, उनसे संबोधन करना, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन असम के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के दर्शन करना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलती है।
हमारा विश्वास संगठन में है। हम राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में जमीन की जड़ों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, हम लोग एक ही मंत्र को लेकर के जिए हैं। हम लोग एक ही मंत्र को साकार करने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं और वो मंत्र है भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यहां इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाजपा में रहते हुए आपने मां भारती की सेवा को, जनता की सेवा को अपना धर्म बनाया है। आप सभी भाजपा कार्यकर्ता ही भाजपा की प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। भाजपा का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। साथियों, मैं गर्व से कहता हूं, अगर मेरा सबसे बड़ा कोई क्वालिफिकेशन है, मेरी सबसे बड़ी गौरवपूर्ण मेरे जीवन की बात है, तो वो यही है कि नरेंद्र मोदी भाजपा का कार्यकर्ता है और एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं असम के अपने सभी कार्यकर्ता और भाई बहनों को, संगठन की शक्ति को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, मैं मां आदि शक्ति, मां कामाख्या को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मां कामाख्या की असम पर, असम वासियों पर, देश पर, देशवासियों पर बहुत कृपा रही है। उनके आशीर्वाद से असम ने राष्ट्र रक्षा और देश की स्वतंत्रता, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अनेक संतानें दी हैं। ऐसी ही एक महान संतान कविंद्रपुर कायस्थ जी को मैं आज प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन असम और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। इसी योगदान को नमन करते हुए बीजेपी एनडीए सरकार को उन्हें पद्म पुरस्कार से
सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। वर्ष 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। 125 से अधिक। ये दिखाता है कि असम की धरती का, नॉर्थ ईस्ट की धरती का सामर्थ्य कितना बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट का यही सामर्थ्य अब विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था, और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रहेगा आपको? फिर से एक बार बोलता हूं। केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। कितने? कितने? पीछे से आवाज आनी चाहिए। कितने? आप मुझे बताइए कितने? और जोर से बोलिए कितने? साथियों, आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वो कांग्रेस क्या असम का विकास कर सकती है? असम का विकास कर सकती है? कभी भी कर सकती है? आपका भला कर सकती है? यहां के युवाओं का भला कर सकती है? यहां के किसानों का भला कर सकती है? यहां के गांव का भला कर सकती है? साथियों,
इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम में हाईवे और अन्य रोड प्रोजेक्ट्स के लिए करीब हजारों करोड़ रुपए देना तय हुआ है। बजट में जो घोषणा हुई है उससे असम में टूरिज्म का भी विस्तार होगा। अभी आपने देखा होगा परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था। हमने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर विद्यार्थियों से चर्चा की थी। आने वाले समय में ब्रह्मपुत्र पर ऐसे ही रिवर टूरिज्म को और बढ़ाया जाएगा। मैं ऐसे ही वहां नहीं गया था, मैं देश को बताना चाहता था कि टूरिज्म के लिए इससे बेहतर जगह नहीं है। आओ, ये मेरा असम है, ये मेरी ब्रह्मपुत्र है, आइए। इस बार के बजट में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। साथियों, आज के दिन देश की नजरें असम पर है। सबने देखा कि असम का नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य क्या है। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। साथियों, आप मुझे बता दीजिए, आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है, ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? बोलिए भारत माता की। साथियों, असम का इतना विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां आप सभी की मेहनत से बीजेपी सरकार बनी है। यहां के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा किया है। आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ, मेरा बूथ,
मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से बूथ बूथ जाकर एक एक परिवार को मिलकर, एक एक मतदार को मिलकर बीजेपी के हर समर्थक को अपने साथ जोड़ा, उन्हें उनके वोट की ताकत का परिचय करवाया और इसी प्रयास से ही असम में बीजेपी की सरकार बनी। असम के इसी आशीर्वाद के कारण, असम के नागरिकों के वोट के कारण यहां लाखों गरीबों के घर बने, लाखों परिवारों में शौचालय की व्यवस्था हुई, पीने का साफ पानी उनके घर तक पहुंचा। आप मुझे बताइए, गरीब को घर मिलता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में टॉयलेट बनता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इस पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार कौन है? एक पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, उन्हें सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला, इसलिए इस बार भी आपको ऐसे ही अपने बूथ पर एक एक वोट पर ध्यान रखना है। रखोगे? अब और कुछ मत करो, बस पूरी ताकत बूथ में लगा दो। आपका बूथ विजयी होगा तो बीजेपी विजयी होगी कि नहीं होगी? आपको विजय पाना है तो कहां पाना है? बूथ में विजय पाना है। साथियों, आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। लेकिन साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो कर सकते थे क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं
कि मां भारती क्या होती है। जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस की सरकारों के इसी नकारेपन से पूरा नॉर्थ ईस्ट डर और असुरक्षा में जीता था। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में डाल के रखा। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है कि मोदी सब कैसे कर लेता है। उन बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। साथियों, आज की कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है जो देश का बुरा सोचता है, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं। आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। ये एमएमसी है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। और इसलिए आपको कांग्रेस से सावधान रहना है और असम की जनता को भी सावधान करना है। साथियों, यहां जो नौजवान है, जो अभी 20-25 वर्ष के हैं, उन्हें कांग्रेस का कुशासन शायद पता नहीं होगा, याद नहीं होगा। कांग्रेस की सरकारें चाहे असम में रही हो या फिर दिल्ली में, उन्होंने असम को अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज जब मैं यहां ब्रह्मपुत्र के तट पर खड़ा हूं तो इस महान नदी का ही उदाहरण देता हूं। असम के विकास में, असम के लोगों के जीवन को आसान बनाने में ब्रह्मपुत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन कांग्रेस के 70 साल के शासन में ब्रह्मपुत्र को पार करना
हमेशा बड़ी चुनौती रहा। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक, और उनके तो प्रधानमंत्री यहां से चुन करके गए थे, यानी लगभग 7 दशक में कांग्रेस सरकारों ने ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनवाए थे। इतने दशकों में कितने पुल? कितने? आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी विशाल नदी और असम की इतनी बड़ी जनसंख्या को जीवन देने वाली नदी पर सिर्फ 3 पुल बने थे। क्या ऐसी हालत में असम तेज विकास संभव था क्या? तेज विकास संभव था क्या? मेरे कार्यकर्ता साथियों, 2014 में आपकी मेहनत का परिणाम था कि मुझे भारत सरकार में देश की सेवा का अवसर मिला, और उसके बाद 2-3 साल बाद आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां डबल इंजन सरकार बनाई, और इसका नतीजा क्या हुआ? बीते 10-11 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 5 बड़े पुल पूरे किए हैं। ये आंकड़े याद रहेंगे ना? कांग्रेस की 70 साल की सत्ता में सिर्फ 3 पुल बने थे, लेकिन हमने सिर्फ 10 वर्षों में 5 पुल बनाए हैं। यानी कांग्रेस ने असम को सिर्फ समस्याएं दी, जबकि बीजेपी ने असम को समाधान दिए हैं। साथियों, आज गुवाहाटी के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले शानदार पुल का भी लोकार्पण हो गया है। इस सेतु का नाम प्राचीन कामरूप के महाप्रतापी सम्राट कुमार भास्कर वर्मन जी के नाम पर रखा गया है। ये लोग होते तो अपने परिवार पर ही नाम चढ़ा देते। यानी ये भास्कर सेतु असम के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और असम के समृद्ध इतिहास का संगम है। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी तेज विकास करती है और विरासत को भी आगे बढ़ाती है। साथियों, इस नए सेतु के बनने से गुवाहाटी देश का एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 6 लेन के इस ब्रिज से नौजवान हो या बुजुर्ग, किसान हो या उद्यमी, सबको फायदा होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां अभी ऐसे कई सारे पुलों पर काम चल रहा है। जब ये सभी तैयार हो जाएंगे तो असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को बहुत तेज गति मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चस्पे से ही देखा। कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले, और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास हो। कांग्रेस के समय
केंद्र सरकार की योजनाओं को असम तक पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे। लेकिन साथियों, बीजेपी ने असम के विकास को, नॉर्थ ईस्ट के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। बीते 11 वर्षों में देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत देश में हुई तो तुरंत उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को भी मिला, कोई भी विलंब के बिना मिला। देश में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हुई तो असम और नॉर्थ ईस्ट भी इससे शुरुआत में ही कनेक्ट हो गया। अभी कुछ समय पहले देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन असम से ही शुरू हुई है। जब देश ने तय किया कि अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से काम कर रहा है और असम इस सेक्टर में भी ग्रोथ इंजन बन रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब असम की चाय की तरह ही, असम की चाय की तरह ही असम में बनी चिप्स की भी पूरी दुनिया में चर्चा होगी। चाय से लेकर के चिप्स तक असम की विकास यात्रा दिखाई देती है। साथियों, असम का ये प्यार मैं कैसे भूल सकता हूं। लेकिन मैं असम को वादा करता हूं, आपने मुझे जो प्यार दिया है ना, मैं उसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। साथियों, मैं आपको डिजिटल कनेक्टिविटी का भी उदाहरण दूंगा। आप देखिए, कांग्रेस के समय में 3G और 4G टेक्नोलॉजी आई, ये 2G के घोटाले भी आए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक, असम तक उसे तेजी से पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने मेहनत ही नहीं की। और जब भाजपा सरकार में 5G टेक्नोलॉजी आई तो हमने क्या किया? हमने इस टेक्नोलॉजी को पूरे असम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम किया। इस सैचुरेशन अप्रोच के कारण आज गुवाहाटी के युवाओं को हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ मिल रहा है। और जब असम में NIC डेटा सेंटर की भी शुरुआत हुई है, ये डेटा सेंटर यहां के नौजवानों को बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण स्वास्थ्य सेवाओं का भी है। कांग्रेस ने दशकों तक
एम्स के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। जब अटल जी की सरकार बनी तो एम्स की संख्या बढ़ाई गई। इसके बावजूद हालत ये थी कि 2014 में देश में सिर्फ 6 एम्स थी। आपने 2014 में मोदी को देश की सेवा का अवसर दिया और आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 20 से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने एम्स गुवाहाटी का भी निर्माण किया है। इसके अलावा असम में कई मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल भी खोले गए हैं और कल ही हमने पीएम राहत स्कीम को भी मंजूरी दी है। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल होता है तो केंद्र की सरकार की ओर से उसका 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। एक्सीडेंट के बाद तुरंत मदद मिलने से जान बच जाती है। साथियों, यहां आए भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में मेरे युवा बेटे बेटियां की है। आप याद रखिए, देश में जब मैनेजमेंट और उच्च शिक्षा की बात होती थी तो असम और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के पास सिर्फ पलायन का ही विकल्प होता था। लेकिन आज देखिए, IIM पालसबारी का नया कैंपस शुरू हो चुका है। IIT गुवाहाटी का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके अलावा असम में IRI इसकी भी स्थापना की गई है। ये संस्थान असम में नई टेक्नोलॉजी लीडर्स को तैयार करेंगे। साथियों, आज केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार देश के छोटे छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछा रही है। आज ही मुझे गुवाहाटी में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। इस वर्ष के बजट में भी पूर्वोदय स्कीम के तहत 4000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में असम को भी इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है। साथियों, कांग्रेस ने असम के साथ एक और बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने असम को अशांत रखा, हिंसा और अलगाव में रखा। आजादी के बाद से ही असम बम बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। मुझे याद है, मैं जब यहां संगठन का काम करता था तो मैं वापस जाने का भी कार्यक्रम बना के आता था, लेकिन यहां मैं कार्यक्रम नहीं कर पाता था। क्यों? कहीं ब्लॉकेड है, कहीं जा नहीं सकते, रास्ते बंद है। तो मुझे कभी कभी तो 3 दिन के लिए आया था, 7 दिन तक वापस नहीं जा पाता था, काम ही नहीं कर पाता था। ये हालत करके रखी थी। लेकिन साथियों, भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है। जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, आज वहां हिंसा की घटनाएं बंद हो रही है। पहली बार असम में बोडो, कार्बी
आदिवासी, डीएनएलए, उल्फा, ऐसे हर संगठन से जुड़े साथियों ने बंदूक छोड़कर देश के संविधान का रास्ता चुना है, शांति और विकास की राह पकड़ी है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपको भूलना नहीं है, 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है। उनके टॉप लीडर से नीचे तक उनके जुबान से जहर ही निकलता है। कांग्रेस असम को फिर से अशांति और अराजकता में झोंकना चाहती है। कांग्रेस असम को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती है। आप इनके दिल्ली के नेताओं को देखिए, यहां जो इनके नेता हैं उनको देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस असम की असल पहचान को मिटाना चाहती है। साथियों, आने वाले 5 साल असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं जो असम की ग्रोथ को नए पंख लगाएंगे, और इसलिए यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार फिर एक बार बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को याद रखना है, असम के तेज विकास के लिए आपको एक बार असम के युवाओं को रोजगार के लिए आपको एक बार असम की बेटियों को नए अवसरों के लिए आपको एक बार असम की पहचान बचाने के लिए आपको एक बार। साथियों, आज यहां आप सबका ये जोश देखकर असम की महाविजय का मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है इस बार और बड़े बहुमत से असम में हमारी सरकार की वापसी होने वाली है। लेकिन साथियों, याद रखिएगा, हमें सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है, हमें निरंतर असम के लोगों का मन भी जीतना है, उनका दिल भी जीतना है। आज के लिए असम के एक एक भाजपा कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को, सभी पदाधिकारी को पूरे परिश्रम से काम करना है। जब तक असम में वोटिंग का काम पूरा नहीं होता है, जब तक काउंटिंग नहीं होता है, जब तक नई सरकार के, भाजपा की सरकार के शपथ नहीं होते हैं, तब तक हमें हर दिन अपने क्षेत्र के हर घर में जाना है, हर घर में लोगों को मिलकर उनकी आकांक्षा, अपेक्षा सुननी है, लोगों को अपने काम बताने हैं, उनके काम आना है। एक एक पन्ना प्रमुख, एक एक बूथ वर्कर को अगले 2 महीने खूब मेहनत करनी है। अगले 2 महीने एक एक घर में एक एक असमिया भाई बहन तक अपनी सरकार के विजन को पहुंचाना है। साथियों, असम में तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार
असम के 3 गुना विकास का रास्ता बनाएगी। इसलिए हर एक कार्यकर्ता का एक ही मंत्र होना चाहिए, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ। साथियों, आप मेरा एक और काम करेंगे, पक्का करेंगे, ये सारी बातें याद रखेंगे, पूरी तरह लागू करेंगे, एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे और उनको बताना मोदी जी आपके लिए ही जी रहे हैं। बताएंगे, बताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, you're watching Newsx and I'm Vaishali Kohli. Now, the Mumbai mayor, Ritu Tavre, has expressed concern regarding the incident. Tavre said, "This is really sad. MMRDA and the concerned contractors have shown negligence. Due to this, a person died and 3 others were injured. This cannot be tolerated at all. The parapet wall girder was installed here last night. I think the related safety rules should have been followed here. Traffic movement below should have been stopped for the time being. The injured have been admitted to the hospital. One person has died. Let's listen in to what she said." मैं अभी आई हूँ, जस्ट आई हूँ। मैं आमदार साहब से भी बात करना चाहती हूँ, समझ के लेना चाहती हूँ विषय का क्या है, फिर मैं आपसे इधर ही हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। लापरवाही बहुत बड़ी है यहाँ पे। एमएमआरडी का काम है यहाँ पे, जो प्रशासन के लोग हैं और जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने किस तरह का काम किया है। अगर मुझे मैडम के पास से पता चला है कि कल ही पैराफिट वॉल यहाँ पे फिटिंग की है, तो उसको बैरिकेड्स की सुरक्षितता, उसकी सेफ्टी, उसका जो नॉर्म्स है उन्होंने वो फॉलो किया है या नहीं। अगर वो नहीं फॉलो नहीं किया या किया तो नीचे से वाहतूक जा रही है, गाड़ियां जा रही है, तो उनको रुकाना चाहिए था उतने टाइम के लिए। हाँ, रुकाना चाहिए था। हाँ, उपासना हॉस्पिटल में उनको सबको एडमिट किया है, उसमें एक व्यक्ति एक्सपायर हो गए, वो भी। शाहिद अंसारी is joining me live from the site in Mulund. शाहिद, जो लेटेस्ट जानकारी है वो क्या है? शायद सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी वैशाली जी। जी शाहिद, जो लेटेस्ट जानकारी है वो क्या है आपके पास? वैशाली, जो ताज़ा जानकारी मिली है, इस जानकारी के मुताबिक जो 4 लोग जख्मी हुए थे, इस जख्मी में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि जो 3 लोग हैं उनका अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अभी भी मैं जाए हादसे पर मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से यह हादसा पेश आया, जहां मैं खड़ा हूं, ये एक चालू रोड है जहां दिन में हजारों गाड़ियों का आवागमन होता है। दूसरी तरफ आप देखकर अंदाजा लगा सकती हैं। मेरे कैमरामैन संजय से कहना चाहूंगा कि दूसरी तरफ जहां पे गाड़ियां आ जा रही हैं, मैं उस तरफ जो है दिखाने की बात करूंगा। संजय उस तरफ दिखाने की कोशिश करें जहां पे दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। ये तो वो तरफ हो गया यानी जाने का, और दूसरी तरफ जहां पे जो ये हादसा पेश आया है वैशाली, वो हादसा जो पेश आया है मैं उसकी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि किस तरह से जो है अभी इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पे जो है आने जाने के लिए गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। रास्ता जो है कुछ तकरीबन 300 मीटर का जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि हादसा हुआ कैसे है और इसकी जद में जो है एक ऑटो रिक्शा और जो दूसरी प्राइवेट कार है वो कैसे आई। चूंकि ऊपर के हिस्से में आप अगर देखेंगी, जो ऊपर के हिस्से में एक खाली जगह आपको जो दिखाई दे रही है वैशाली, यही वो पोर्शन है जो गिर गया है, जो नीचे की तरफ अभी रखा हुआ है। चूंकि जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद से उसे नीचे रख दिया गया है। आप देखिए वहां पे जो रखा हुआ है डिवाइडर पे, ये वो पोर्शन है जो गिर गया है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना, मतलब कि कितना ज्यादा वजनी होगा। और जब ये एक वजनी चीज जो है किसी
ऑटो पर जो गिरती है, तो ऑटो के जो क्या हालत हुई है आपको मैं बता दूं कि परखच्चे पूरे उड़ गए हैं, बुरी तरह से डैमेज हो गया है। उसके साथ साथ एक प्राइवेट कार भी जो है इसकी जद में आई, वो भी जो है बुरी तरह से जो है मतलब कि क्षतिग्रस्त हो गई है। अब अंदाजा लगाइए कि जब किसी भी कार में, ऑटो में अगर इस तरह से इतना वजनी कोई भी मलबा गिरेगा तो अगर उसका क्या हाल होएगा, या उसमें बैठने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तो जो चश्मदीद है उन्होंने बताया है कि जो लोग हैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए और उसी में एक शख्स की मौत हो गई है। अब आपको मैं बताऊं कि जान चली जाने के बाद जिन 3 लोगों का इलाज है अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है, और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो लोग एडमिट हैं उनका जो है उनकी तबीयत आगे कैसी होगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भी कोई बेहतर सिचुएशन में नहीं है, बल्कि उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। MMRDA ने अपने ट्विटर एक्स पर जो है इस मामले को लेकर बयान दिया और उन्होंने बताया है कि 12:15 पर यह हादसा पेश आया, जबकि BMC की तरफ से जो फायर विभाग है उनकी तरफ से 12:20 की रिपोर्टिंग की गई है। MMRDA की तरफ से 2 लोगों के जख्मी होने की बात बताई गई है, जबकि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में 4 लोगों के जो है जख्मी होने की बात बता रही है। घटना की जानकारी के बारे में जो है मुंबई पुलिस के जो DCP है, जोनल DCP हेमराज सिंह राजपूत, उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया है कि इस हादसे में जो भी कानूनी कार्रवाई है पहले उसकी जांच होगी, फिर उसके बाद FIR दर्ज की जाएगी। अब इसके साथ साथ एक अहम बात यह भी रही है कि क्या सवाल यही उठता है कि मेट्रो का जो ये जो काम चल रहा है, क्या इस काम में जो है किसी भी तरह से लापरवाही बरती गई, क्या नियम का कोई कानूनी जो रूल्स हैं उनको जो है अनदेखी की गई, या नियम को जो है ताक पर रखकर जो है ये सारे काम किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जांच का विषय है। जो DCP है, जोनल DCP हेमराज सिंह राजपूत, उन्होंने हमसे जब बातचीत की तो उस बातचीत में उन्होंने ये बात कही है कि हम ये सारे पहलुओं की जांच करेंगे और जो भी खताकार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या दूसरा कोई हो या मेट्रो प्रशासन, जो भी है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले यह है कि इस पूरे मामले में जांच होगी। जांच के बाद जो है जो भी खताकार पाया जाएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई का चूंकि ये इलाका जो मुलुंड इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जो ट्रैफिक है यहाँ पे जो है रोड काफी चौड़े हैं, बावजूद इसके जो भीड़ है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। और उसके बाद भी जो है जब ये काम चालू था तो हैरानी इस बात की है कि इस दौरान किसी भी तरह से नीचे किसी को अवेयर नहीं किया गया, और अवेयर न किए जाने के बाद भी जो है लोग जो है यहाँ से गाड़ियों से जा आ रहे थे। आमतौर पर देखिए जब इस तरह के काम चालू होते हैं तो हमेशा जो है नीचे के हिस्से में ये जो हाइट है, नहीं भी तो कम से कम जो है ये 50 फीट की हाइट के ऊपर है, और आप अंदाजा लगाइए कि 50 फीट की हाइट से जब कोई इतना वजनी चीज गिरेगी तो उसका क्या हशर होगा नीचे अगर किसी के ऊपर गिरती है तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई काम किया जाता है तो यहाँ पे नीचे के हिस्से में लोगों को अलर्ट किया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, रास्ता बंद कर दिया जाता है, बल्कि उसका अल्टरनेट ऑप्शन निकाला जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ काम चल रहा था, नीचे से ट्रैफिक का मूवमेंट चालू था, नीचे से गाड़ियाँ जा रही थी, और उसके बाद ये हादसा पेश आया है। ये मुलुंड इलाका है, दोपहर 12:20 का जो है रिपोर्टिंग टाइमिंग है, और उसके बाद जो है फिर जब ये हादसा पेश आया तो यहाँ जो लोग थे उन्होंने देखा कि जब ये गिरा तो लोगों को पल भर के लिए पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। महज 1 से 2 सेकंड में ये मलबा ऊपर से नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद फिर जो है ये अफरा तफरी का माहौल था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वी विल बी बैक शॉर्टली। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी हो जो खींचा चलाए, पिसी बिल्ली हो या पुलियो गिरे, वांगी भात हो या पोड़ी मसाला, रस पाउडर या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MDH। काशी के घाट के अद्भुत है ठाट, जब मुंह में घुलती है मलाइयों की मिठास, लखनऊ की चाट के चटकारे कर देते वारे न्यारे। यूपी के हर जनपद के व्यंजन में है अनूठी संतुष्टि, जो समेटे हुए है संस्कृति। एक जनपद एक उत्पाद। ODOP ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को पूरे विश्व में सम्मानजनक मंच दिया है।
प्रदेश सरकार की इसी भविष्योन्मुखी सोच से अब स्वाद के क्षेत्र में नया विस्तार मिल रहा है। एक जनपद एक व्यंजन ओडीओसी, एक जनपद एक व्यंजन का शुभारंभ सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं अपितु एक नए युग का प्रारंभ है। व्यंजनेषु वसति संस्कृति, सोच है, स्वाभिमान है, संस्कार है, यही तो डबल इंजन सरकार है। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू।
इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। This week on the roundtable, we are taking a look at the danger our country faces from the number of Chinese imports that have been literally dumped onto our country. Our economy is at great risk. What can the budget do about it? The budget is like an iron dome. It protects our factories, it protects Indian capacities, and we need to defend them from the onslaught that the Chinese economy is doing on India. And it has reached huge proportions, so there is a need for an urgent step to be taken by the union budget. What I feel is not single measure, there can be multiple measures, but the best way to stop Chinese imports is by raising tariffs. History has shown it. We must raise tariffs as per the WTO agreements, and we have the limit of 50.4% average weighted tariff, whereas we are imposing hardly 6%. So there is a huge gap between what is the bound rate and what is the actual effective rate. I think we should strengthen our industrial policy and see to it that our PLI scheme also is interweaved with quality in a very strengthened manner, so that we are back on the path of having the QCOs into the country to a great extent of sectors and pushing them very hard. Thank you. काशी के घाट के अद्भुत है ठाट, जब मुंह में घुलती है मलाइयों की मिठास। लखनऊ की चाट के चटकारे कर देते वारे न्यारे। यूपी के हर जनपद के व्यंजन में है अनूठी संतुष्टि, जो समेटे हुए है संस्कृति। एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को पूरे विश्व में सम्मानजनक मंच दिया है। प्रदेश सरकार की इसी भविष्योन्मुखी सोच से अब स्वाद के क्षेत्र में नया विस्तार मिल रहा है। एक जनपद एक व्यंजन ओडीओसी, एक जनपद एक व्यंजन का शुभारंभ सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं, अपितु एक नए युग का प्रारंभ है। व्यंजनेषु वसति संस्कृति, सोच है, स्वाभिमान है, संस्कार है, यही तो डबल इंजन सरकार है। This week on the roundtable, we are taking a look at Hello and welcome. You're watching Newsx and I'm Vaishali Kohli. Now, India's bustling cities are fast turning into urban death traps, viewers, where potholes, open drains, unmarked construction pits and shoddy infrastructure claim innocent lives with alarming regularity. Recent tragedies expose a chilling pattern of civic neglect, ignored warnings and zero accountability. From open drains swallowing lives to abandoned sites becoming lethal traps, urban India's roads and footpaths are riddled with preventable dangers, exacerbated by poor oversight, corruption in repairs and a fix after tragedy mindset. This deadly trend hit Mumbai hard today as a portion of an under construction pillar on Metro Line 4 collapsed in Mulund West. Around 12:15 to 12:30 p.m. near Pier 196 on busy LBS Marg close to Johnson & Johnson
and Mulund fire station. A concrete slab, a parapet segment fell, crushing an auto rickshaw and a car below. We have opened our call-in lines and we would like you to call us and share your views with us on this broadcast. Now, the main focus of today remains the Mumbai metro mishap. Let's start by taking a look at the sequence of events. Let me show you that, viewers. So we are going to show you the sequence of the events and what exactly happened. Let's look at the screen here. Let's understand the pillar that of course fell. We're giving you an overall view. Now people rush to the spot as soon as the pillar collapses. Rescue operations launched by the firemen. So this is what is happening here. The pillar collapses and rescue operations are launched by the firemen. This is what we have been showing you since morning, viewers, and we've been tracking this on Newsx very, very closely for you. I have my colleague Shahid Ansari, who is joining me live from the site of this mishap in Mulund in Mumbai. Shahid, जो latest जानकारी आ रही है वो क्या है? जी देखिए, ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जो है इस इलाके को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है। चूंकि अब ये जांच का विषय है, जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाएगी इस इलाके को चालू नहीं किया जाएगा। मैं यहीं मौजूद हूँ जहाँ पे यह हादसा पेश आया है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 मीटर के इस एरिया को पुलिस ने जो है घेर के रखा है और ये तब खुलेगा जब तक जो है जांच मुकम्मल नहीं हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जोनल डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने बताया है कि इस पूरे मामले में जो भी खताकार पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो मेट्रो प्रशासन हो। दूसरी अहम बात उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ें जाँच की जाएंगी कि क्या जो काम चल रहा था उसमें किसी भी तरह के नियम या कायदे की धज्जियाँ उड़ाई गई है क्या। आमतौर पर देखिए ऐसा होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो मलबा गिरा है वो कहाँ है। वो आप नीचे के हिस्से में आप देखेंगी तो वो ये मलबा है, कितना वजनी आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए। ये मलबा जो है गिरा है और जहाँ से गिरा है वो जगह मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो अंदाजा होगा। मेरे कैमरामैन संजय हैं, संजय को मैं कहना चाहूंगा कि संजय वो जगह दिखाएं। वहां से और जमीन का जो डिस्टेंस है ये कम से कम जो है 50 फीट के आसपास है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक 10 कुंटल 20 कुंटल का वजनी जो मलबा है जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे वालों का क्या हशर होगा। नीचे जो ऑटो है वो पूरी तरह से जो है चकनाचूर हो गया है। उसके साथ एक प्राइवेट गाड़ी थी वो भी चकनाचूर हो गई है और इसके साथ साथ जो है जो लोग अंदर बैठे थे, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी क्या हालत हुई होगी। 4 लोग जो जख्मी हुए थे उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 जो है अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ये जगह ब्लॉक कर दी गई है, दूसरे रास्ते को चालू किया गया है ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट हो सके और किसी भी तरह से यहाँ ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें पेश ना आए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस तरह के काम किए जाते हैं तो रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ये काम चालू है या काम किया जा रहा था तो इस दौरान नीचे के हिस्से में किसी को कोई भी खबर नहीं दी गई। नीचे का जो ट्रैफिक है वो मोमेंट था, चल रहा था और जब ये गिरा तो उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। किसी को यकीन भी नहीं था कि ये ऊपर से गिर जाएगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मेट्रो का जो काम चल रहा है वहाँ पे सुरक्षा के जो नियम कायदे हैं उनकी पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इसके पहले भी इस इलाके में इस तरह की जो है मेट्रो की वजह से हादसे का हुआ है जिसकी वजह से लोग जख्मी हुए हैं। देखिए आमतौर पर मुंबई, देखिए मुंबई के विकास की बात करें तो सरकार ने जो है उसको लेकर अलग अलग तरीके से उन योजनाओं को शहर में जो है लागू करने की कोशिश की है। मेट्रो भी जो है लोगों की सहूलत के लिए है, लेकिन ऐसी सहूलत की वजह से जहां नियम और कायदे की धज्जियां उड़ा दी जाए और लोगों का जानी माली नुकसान हो तो उस पर सख्ती करने की बेहद जरूरत है। अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद जो है इस पूरे मामले में FIR दर्ज की जाएगी। जी शाहिद बने रहिए मेरे साथ। एंड व्यूअर्स, दिस इज नेग्लिजेंस एट इट्स बेस्ट। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग व्हाट हैज हैपेंड एंड वेरी डिस्टर्बिंग। शाहिद, जिनकी मौत हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है इंसिडेंट में, वो कौन थे, उनके बारे में और क्या जानकारी है और उनकी फैमिली से क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए जिनकी मौत हुई है उनकी उम्र कुछ 45 साल के आसपास बताई जा रही है और उनको जब यहाँ पे आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से लोग जो है चिपके हुए शख्स को निकाल रहे हैं, तो वही थे जो ज़्यादा उसकी जद में आए थे। उनको जो है एडमिट किया गया। फिर वहाँ हॉस्पिटल में पता चला कि उनकी
मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने जो है इस बारे में जो है अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन प्राथमिक जानकारी में जो लोग यहाँ थे, जो चश्मदीद थे या जो लोग थे यहाँ आसपास, उन्होंने बताया कि इस तरह से किसी की भी जो है वो ऑटो रिक्शा जिसकी चलाने वाला शख्स जिसकी मौत हुई है, और ये भी पता चला कि वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, उनकी मौत हुई है। उन्होंने ये बताया है कि भाई इस तरह से कितने आसानी से इस बस्ती में किसी की मौत कितनी सस्ती है, ये देखने को मिला। मेट्रो प्रशासन हजारों करोड़ रुपए का जो टेंडर है या ठेका है, लेकिन उसकी आड़ में एक गरीब आदमी की मौत हो जाती है। तो जो लोग हैं उनकी भी ये मांग है कि भाई इस तरह से किसी की जान इतनी सस्ती इस शहर में कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं नियम कायदे, अगर देखिए ये काम चल रहा था तो यहाँ नीचे के हिस्से में अगर कुछ देर के लिए चीजों को रोक दिया जाता तो संभव है कि ये हादसा नहीं होता, लेकिन ऊपर काम चल रहा है, नीचे ट्रैफिक का मूवमेंट है, ये चीजें हमेशा से चलती आ रही हैं। और ये भी जो है उस नियम का एक खिलाफ वर्जी का एक हिस्सा है कि आप काम कर रहे हैं और नीचे जो है ये मूवमेंट है अगर ट्रैफिक का, तो ये खिलाफ वर्जी है। ऐसे टाइम पे, ऐसे समय पे सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे नीचे जो है नीचे रास्ता जो है बंद कर देना चाहिए, ताकि कोई इस तरह का जो मलबा है नीचे गिरे तो किसी के सर पे ना गिरे, किसी गाड़ी पे ना गिरे। तो इस तरह के अगर होता भी है तो इस तरह के हादसे पेश ना है, कम से कम जो जानी और माली नुकसान है वो तो नहीं होगा। तो लेकिन इस तरह से चीजें देखी नहीं जाती। मेट्रो या कोई भी काम चलता है तो वो नियम और कायदे को जो है पूरी तरह से जो है ताक पर रख कर जो है वो काम किया जाता है। अभी जिन 3 लोगों की जो जख्मी हुए हैं वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जी शाहिद, ये आपने बात बिल्कुल सही रेज करी कि जब नीचे काम चल रहा था, जब नीचे ऊपर काम चल रहा था तो नीचे ट्रैफिक किस लिए ऑन था? वो तो बंद होना चाहिए था। ये तो एक बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन है जो नहीं लिया गया। शाहिद, ये जो ठेकेदारों की हम बात कर रहे हैं, क्या उनके नाम आइडेंटिफाई हो चुके हैं? कौन कौन है, उसकी क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए, अभी तक जो है मेट्रो प्रशासन की तरफ से एक अफसर आए थे यहाँ, हमने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हेमराज सिंह राजपूत, जो जोनल डीसीपी है, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, चाहे ठेकेदार हो या मेट्रो प्रशासन हो। खताकार जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी जो है नियम कानून को ताक पर रखकर ये काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि काम चालू है और नीचे से रोड भी चालू है। तो आप सोचिए कि हादसा अगर होता है, अगर काम ऊपर चालू है और नीचे रोड बंद है, तो हादसा अगर होता भी है तो कम से कम ये तो होता है कि किसी की जानी माली नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, ऊपर काम धड़ल्ले से चल रहा है, नीचे ट्रैफिक का मूवमेंट है, तो ऐसे में तो हादसा होना तो लाजमी है। अगर हादसा अगर होता है तो जानी और माली नुकसान भी लाजमी है। ये बात उनको समझना चाहिए, उन ठेकेदारों को शायद समझना बने चाहिए। रही मेरे साथ शाइना एनसी, द शिवसेना spokesperson is joining me. Shaina, this is absolutely shocking, absolute negligence. What would you like to say on this really heartbreaking incident? Firstly, my deepest condolences, and I think it's very, very unfortunate. Obviously, checks and balances will be put to place, and it's not as if this government is not sympathetic or not, taking cognizance of the lacunas in the system. Having said that, I think we need to have a complete review. I'm glad that we have a corporation in place, and the municipal corporation will ensure that, when it looks at multiple agencies, like whether it's a BESP or an MMRDA or a BMC, they all work in collusion. And in the days to come, there's only one agenda, which is to ensure that the people of Mumbai are safe when they travel, safe then when they are standstill, and more importantly, safe 24/7. Thanks for joining me. Now, with that, let's take a look at some of the videos emerging from the accident. Let me show you that, viewers. So these are the videos, viewers, that we're talking about. Can we play that out, please? Yes. So the portion of the metro pillar collapses, viewers, here. This is the exact. Now the cement segment collapses onto the SUV and the auto rickshaw. This is what happens in the video, as you can see. And now, of course, emergency services and police rush to this spot where the metro pillar has collapsed. So you can see all the cops and everybody in the video there. 1 dead, viewers, very unfortunate, 4 injured in the metro pillar collapse. And a person's body, viewers, was stuck in the debris for a very long time, as my correspondent from Mumbai was informing us. Fire officials carry out rescue operations.
This is them taking the person to the hospital, of course. Cement slab falls onto a Skoda also. This is the cement slab that we're showing you, and it falls. So this, viewers, is the videos that we're showing you to just help you understand what really has happened here, and this is absolutely shocking. Now, of course, I have Shahid Ansari live from this site joining me in Mulund. शाहिद, ये बड़ी हम बात कर रहे थे एक शिवसेना की स्पोक्स पर्सन है उनसे, और वो कह रही थी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट ऐसी चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। ये बाद में क्यों हम सोचते हैं कि जैसे आप बता रहे थे कि ट्रैफिक भी पास हो रहा है कंस्ट्रक्शन की साइड के ऊपर से, अब और लेटेस्ट आप स्पॉट पे हैं और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ठीक है, वो एक पार्टी की जो है तर्जुमानी कर रही है, एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जो है वो अपनी बातें बोल सकती हैं, लेकिन अगर देखेंगे हकीकत जो है, जो फील्ड पर है, ज़मीनी हकीकत जो है, उसे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। देखिए, ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपने भी अभी कहा है कि जब इस तरह के काम चल रहे हों तो ख़तरे को भांप कर हमेशा आसपास के इलाके में जो है लोगों को दूर रखा जाता है ना, ताकि जो है लोग उसकी जद में ना आए। अगर किसी भी तरह से कोई हादसा भी हो जाता है तो कोई जानी या माली नुकसान ना हो। मुंबई जैसा शहर है, शहर कितना सुरक्षित है, और इस शहर में किसी की मौत कितनी सस्ती है, ये इस हादसे के बाद पता चला है। मेट्रो का ये जो हादसा हुआ है कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के हादसे होते आ रहे हैं, लोग जख्मी भी होते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेट्रो प्रशासन है या जो लोग हैं ठेकेदार हैं, उन्होंने कोई भी जो है मतलब कि उनको इस बात को लेकर ना वो गंभीर हुए, ना ही उनको इस बात को लेकर अकल आई है कि वो ऐसे समय में नीचे के हिस्से में लोगों को रोक दें, ताकि लोग जब यहाँ से ना गुजरे तो जानी हादसा ही नहीं होगा। अगर शाहिद, मैं आपको अपनी बात खत्म करने दूंगी, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। Now the Chief Minister's office, viewers, of Maharashtra has said that a slab from an under construction metro project collapsed in Mumbai's Mulund area, resulting in the death of one person and injuries to several others. Chief Minister Devendra Fadnavis has expressed grief over the incident and ordered an inquiry into the matter. Maharashtra CM's office has said that the state government will provide financial assistance of 5 lakh rupees to the family of the deceased, and the cost of treatment for the injured will be borne by the state government. The Chief Minister has also prayed for the speedy recovery of those injured. शाहिद, जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस है महाराष्ट्र में, उनसे ये जो एड है 5 लाख की जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली को दी जाएगी, और जो इंजर्ड हैं ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया जाएगा। इस पे आपके पास और क्या जानकारी है? जी देखिए, राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में कहा है कि जो जख्मी है या जो जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार वालों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो जख्मी लोग हैं उनको भी जो है उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन देखिए, इन सब के बीच में जो है एक अहम सवाल यही है कि क्या एक वो ऑटो रिक्शा जो चलाने वाला शख्स है जिसकी मौत हो गई है, क्या 5 लाख रुपए उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके घर वालों के लिए जो है काफ़ी है? क्योंकि किसी की जान चली गई है, उसका परिवार था, वो ऑटो रिक्शा चलाता था, उसका परिवार था, अपने परिवार का वो पेट पालता था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ से आज गुजरेगा तो वो ये हादसे का शिकार हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए, मैं आपको और 1-2 बातें हैं बहुत अहम है बता दूं कि जो ये मलबा गिरा है, ये जो हिस्सा गिरा है, इसको जो है एक दूसरे से जोड़ने के लिए इन सब के बीच में जो है एक मसाला, एक बड़े क्वालिटी का जो है एक अहम स्ट्रॉन्ग मसाला भरा जाता है ताकि ये जो है पूरी तरह से जाम हो जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चूंकि ये काम चल रहा है और अभी भी वो चीज़ें जो है नहीं डाली गई हैं ताकि जो है ये जाम हो जाए या इस तरह से कोई गिरने जैसी वारदात ना हो, हादसा ना हो। तो ये जो गिरा भी है ना, तो वहाँ पे आप वो जगह आप देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक तरह से उसको उन्होंने लगाया तो ज़रूर था, लेकिन उसको जो पूरी तरह से रोकने के लिए जो सिस्टम ऊपर के हिस्से में था वो नहीं था। यही वजह रही है कि वो गिर गया और गिरने के बाद जो है उसकी जद में एक ऑटो रिक्शा आया, पूरी तरह से जो है जो डैमेज हो गया। फिर एक प्राइवेट कार भी आई और जो लोग ज़ख्मी हुए वो भी जो है ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जो जिनकी मौत हो गई है, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो इसकी जद में जो आए थे वो पूरी तरह से चिपट गए थे। लोग जो है, कई लोगों ने मिलकर उनको वहाँ से निकाला है। तो आप बताइए कि जब ये कम से कम 20 क्विंटल का जो ये मलबा है, जब वो नीचे गिरा है और जो उसकी जद में आया होगा, जब ऑटो रिक्शा पूरी तरह से भूसा हो गई है
तो जो उसमें बैठने वाले लोग रहे होंगे उनसे हम शाहिद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. And viewers, we're asking this question really, what is the cost of human life really in this country? Is the question here. Now, in a significant diplomatic development, the Bangladesh Nationalist Party plans to invite PM Narendra Modi to the swearing-in ceremony of its leader Tariq Rahman following the party's victory in the Bangladesh elections. Reportedly, preparations are underway to invite regional heads of state, with PM Modi expected to be among the key invitees. The development comes after PM Modi confirmed that he had spoken with Tariq Rahman and congratulated him on the party's electoral victory. He also conveyed his best wishes and reaffirmed India's commitment to peace, progress and prosperity for both countries. There has been no official announcement yet on the date of the swearing-in ceremony or confirmation of attendance by foreign leaders. Brian Thomas is joining me with more details. Brian, over to you. Well, yes, in a rather, if you can call it a significant development, Bangladesh's incoming leadership is likely to invite the Prime Minister of India, Narendra Modi, to attend the swearing-in ceremony of Tariq Rahman, who is now set to become the Prime Minister following the BNP's landslide victory. Sources also indicate that Dhaka is very keen on resetting ties with New Delhi and strengthening bilateral engagement. After a political turbulent phase, an invitation to the Prime Minister would also signal an attempt to rebuild trust and reinforce cooperation across state connectivity, security and regional stability. The BNP has also now publicly thanked the Prime Minister for acknowledging Tariq Rahman's leadership and the party's decisive electoral victory, and said that Bangladesh remains committed to upholding democratic values, inclusivity and progressive development for all its citizens, and looks forward to engaging constructively with India to advance their multifaceted relationship, guided by mutual respect, sensitivity to each other's concern, and a shared commitment to peace, stability and even prosperity in the region. Yes. Stay on with me, Brian. I'll come back to you. Now, the Bangladesh Nationalist Party, led by Tariq Rahman, has secured a landslide victory in the general elections held on February 12, with the alliance winning 212 of the 299 seats where polling was conducted. With the results now clear, attention has shifted to the formation of the new government. Tariq Rahman is poised to become the next Prime Minister of Bangladesh. The interim government, headed by Mohammad Yunus, is preparing to hand over power at the earliest. Yunus has directed the Cabinet Division and the Law Minister to initiate the transfer of power process, while Cabinet Secretary Sheikh Abdul Rashid did not specify a date for the oath-taking ceremony. Officials indicated that preparations are nearly complete and the new government could be sworn in on Monday or Tuesday. Reports suggest that the oath-taking of members of parliament may take place on the same day as the swearing-in of the new Prime Minister and Cabinet members. Back to you, Brian, on this. Yes, clearly as of now, this is also Bangladesh PM in waiting dedicates victory to those who sacrifice for democracy, and now even as what we are getting to know, Bangladesh's newly elected government is even likely to take oath on Monday, according to what we are getting to know. And this is clearly based on sources, what we are getting to know from Dhaka. Preparations are obviously, yes, clearly underway for the swearing-in ceremony, with heightened security also arranged, expected in the capital. The ceremony will formally mark the transition of power following the decisive victory of the BNP, that is the Bangladesh National Party, in the national elections. Like you mentioned, yes, senior political leaders, diplomats and even foreign representatives are expected to attend this very swearing-in ceremony. Yes. All right, Brian, stay on with me. Now, in a major endorsement of the February 12 polls, the European Union Election Observation Mission has declared Bangladesh's 13 parliamentary elections credible and completely managed. European Union Chief Observer Ivars Ejabs addressed reporters, stating the 2026 parliamentary elections were credible and competently managed, marking a pivotal step towards restoring democratic governance and rule of the law. The statement comes as the Bangladesh Nationalist Party, led by Tariq Rahman, secured a landslide victory, the first election since the 2024 student-led uprising that ousted Sheikh Hasina's Awami League government.
The BNP alliance won over 210 seats, giving it a commanding majority in the parliament, while Jamaat-e-Islami took a distant second with around 70 to 77 seats. Back to you, Brian, on this. Yes, Vaishali, clearly. The European Union has described Bangladesh's recent national elections as credible and broadly reflective of the will of the voters, according to the chief observer of the election, European Union Election Observation Mission. In the very preliminary assessments also, the EU observer team noted that polling day was largely peaceful in most constituencies. Voting and counting procedures were generally conducted in line with established electoral norms. Voter turnout also were considered significant, indicating public participation despite a politically charged atmosphere. However, yes, the European Union did underline that certain concerns were flagged during the campaign period, including political tensions and allegations also exchanged between rival parties. But the mission said it would present a more detailed final report in the coming weeks, outlining recommendations for further strengthening democratic process. But yes, the European Union's endorsement is being also viewed as diplomatic significant itself. Yes. All right, Brian, thank you for joining me. Now, as the cricketing world gears up for the blockbuster India versus Pakistan showdown in the ICC Men's T20 World Cup 2026 in Colombo tomorrow, Pakistan captain Salman Ali Agha has firmly defended mystery spinner Usman Tariq amid swirling controversy over his unorthodox bowling action. In a pre-match press conference today, Agha dismissed the ongoing debate, insisting that Tariq's action has been thoroughly vetted and cleared by the International Cricket Council, not once but twice. Agha went further, hailing the 28-year-old off-spinner as a genuine trump card and X-factor for Pakistan. Yash Ahuja is joining me. Yash, what more can you tell us? Yes, Vaishali, as we gear up for the blockbuster India versus Pakistan match in the World Cup in Colombo tomorrow, Pakistan's captain Salman Ali Agha has defended his mystery spinner Usman Tariq. Let's give you some background on it. Tariq's unique style featuring a noticeable halt before the release and what some describe as a bent arm or a two-elbow quirk has sparked heated discussions. Critics allege it is chucking or illegality. The spinner has faced scrutiny before, including reports during the Pakistan Super League, but biochemical tests at accredited labs have consistently cleared him under ICC rules, allowing up to 15 degrees of elbow extension. So yes, ICC has cleared Usman Tariq twice now, and Pakistan captain Salman Ali Agha has just seconded that thought. Back to you. All right, thanks for joining me. And with that, we're slipping into a short commercial break. We'll be back shortly. कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु
10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अर्चित कौशिक से। जी हां, अर्चित कौशिक का कंटेंट तो वायरल हमेशा से रहा है, मगर उनकी द 50 की जर्नी कैसे खत्म हुई, क्या परिस्थितियां थी, अब उसको लेकर वो क्या कुछ कहेंगे। वेल, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू नाउ एंड हियर फ्रॉम अर्चित हिमसेल्फ, जो हमारे स्टूडियो पहुंच गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी यही है, जनता ने बहुत प्यार दिया निकलने के बाद, और ऐसी मतलब एक्सपेक्टेशन है और मिलता रहा आगे। बिल्कुल। पहले मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा, द 50 वाज बीइंग टाउटेड सबसे लार्जेस्ट रियलिटी शो ऑफ इट्स काइंड, 50 सेलिब्रिटीज द लायन के पैलेस में इन 6 हफ्तों के लिए, मगर आपकी जर्नी इस तरह खत्म हो जाएगी कि आपको उम्मीद थी है व्हेन यू वर एंटरिंग द पैलेस? नहीं, मैंने ये सोचा था कि थोड़ा लंबा तो चलूंगा मैं। बाकी ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए घर के अंदर कि 2 दिन की रही, क्योंकि ना मैं दब के रह नहीं सकता। अंदर क्या सीन था, एलायंसेस का गेम था, बहुत सारी चीजें थी। चलो वो भी ठीक है, पर कई लोग मतलब वहाँ पे एक दिन पहले से मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं आपके, उसमें बंदे ऐड हो रहे हैं। मतलब पता नहीं इतना क्या डर है, किस चीज़ का डर है। बाहर से अलायंस बना के आ रहे हैं। मतलब यूँ था कि गेम में आके अलायंस बनानी थी, कई लोग बाहर से अलायंस बना के ला रहे हैं, तो उससे थोड़ा मजा किरकिरा हो गया बस, और तो कुछ नहीं है। तो आपसे पूछेंगे कि अब जब आप वो देखते हैं उस लम्हे को, मैक्सटन के साथ जो हुआ, वो क्या आपको लगता है सही हुआ, गलत हुआ कुछ? अब अगर आप देखें उसको, कुछ बदलेंगे? नहीं, मैं उसको सेम ही रखूंगा, क्योंकि वो वाली बात है, मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया और सेम ही रहना चाहिए। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। बाकी ये है, जनता का प्यार है साथ में, तो बस मौज ही है। तो क्या वापस जाएंगे आप अगर बुलावा आए? बुलावा आए तो बिल्कुल वापस जाऊंगा। बाकी ये है, जनता प्यार दिखाएगी तो बिल्कुल वापस जा सकते हैं। निकलने के बाद जिस शख्स के लिए आपने वो स्टैंड लिया, एल्विश यादव, उन्होंने आपको पहली चीज क्या बोली? ये कि बढ़िया भाई, सिस्टम हैंग करके आ गए अंदर। और ये कि मतलब देखो, एक होता है मजाक और एक होता है मतलब बिलो द बेल्ट जाके कुछ बोलना, तो वो मतलब टोटली अनअक्सेप्टेबल था, तो इसलिए थोड़ा बहुत हुआ जो भी हुआ। मैंने तो खैर फूकी मारी थी बस। क्या आपने बातचीत की शो के मेकर्स से या द लायन के संग कुछ बात हुई ऑफ कैमरा? क्या कुछ सुलह या कुछ करने की कोशिश की किसी के संग, या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं, मतलब शो मेकर से तो क्या ही बात करेंगे, वो मतलब जो हुआ भी इंसिडेंट, तो उसके बाद ये एविक्शन ही हो गया था मेरा, फिर बस ऐसे तो ऐसा कुछ बात हुई नहीं मेरी। अगर आप देख रहे हैं द 50 शो, आपकी जर्नी कैसे चल रही थी अभी तक? जो आपने दिन गुजारे पैलेस में, वो कैसे गए? अब जब आप जर्नी को, ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि और बढ़ती जर्नी, मगर जितनी जर्नी रही वो कैसे रही आपके लिए? मतलब छोटी जर्नी रही, पर ये है कि मजा आया। बाकी और ये थोड़ा मैं सैड भी था जल्दी निकल के, पर ये फिर बाहर निकले, जनता ने प्यार दिया, तो मजा आ गया मुझे। और ये अगर दोबारा जाने का मौका मिले, देखो एक बार सिस्टम हैंग कर दिया मैंने, अब दोबारा वही सिस्टम हैंग करके आऊंगा मैं। पैलेस के भीतर किसका सिस्टम सबसे ज्यादा हैंग है? वही है, मतलब जो बाहर से ग्रुपिज्म करके आए हैं लोग, उनको पता नहीं किस चीज का डर है कि मतलब एक, मतलब ठीक है एक शो है, बड़ा शो है, मानता हूं मैं, पर ये है उनको कि हमसे इतनी इनसिक्योरिटी कि बाहर से मतलब
देखो पता तो लग जाता है किसको कौन कौन आ रहा है। तो बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं पहले ही। कौन है ये लोग? इनका नाम क्या लेना, इनको फुटेज मिल जाएगी यहाँ भी बाहर भी। अंदर तो ले ही रहे हैं, एली शादाब का नाम ले लेके, भाई का नाम लेके फुटेज ले रहे हैं। बाहर इनको फुटेज नहीं देनी मुझे। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इतने, देखिए एल्विश तो इज नॉट इन द शो, मगर फिर भी एल्विश के ही अराउंड ये शो जा रहा है। कितने सारे रील्स जो चल रही हैं इंस्टा में, ऐसा लग रहा है कि एल्विश शो में है। तो इतनी चर्चा एल्विश के बारे में क्यों हो रही है घर में? देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि वैसे वो लोग कुछ करेंगे, बात करेंगे, तो जनता इंटरेस्टेड है ही नहीं उनको देखने में। उनकी ना फुटेज आनी, ना उनकी बाहर रील कटनी। हाँ, भाई का नाम लेके बात कर लेते हैं तो उनकी फुटेज भी कट गई थोड़ी बहुत, और जनता ने बात भी कर ली। खैर जनता भी उन्हें पता ही है, आपको क्या ही बोलती है। मगर एक शख्स जो, जिनका आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम लो लेता हूँ, प्रिंस नरूला, वो तो रियलिटी शोज जीत के आए हैं, उन्हें तो किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो मुझे क्या पता क्यों नाम ले रहे हैं। अगर उन्होंने इतने शोज जीत रखे हैं, पहली बात तो एज अ कंटेस्टेंट क्यों आ रहे हैं वो, और दूसरी बात ये है नाम क्यों ले रहे हैं फिर एलिश भाई का। अगर उनको लगता है कि हाँ वो खुद कंटेंट दे रहा है, तो अब मुझे पता है, देखो मैं खुद कंटेंट दे सकता हूँ, तो मैं किसी और का नाम क्यों लूंगा? सीधी बात है ना। अब नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, कुछ भी है। या इसकी जर्नी कैसे देख रहे हैं आप घर के अंदर? कुछ नहीं है जी, वो वाली बात है कि अब ऐसी भीड़ तो मैं भी ले जाता बाहर से, मुझे पता होती तो, या मैं मतलब अंदर पहली जाने से बंदे सेट कर लेता। तो मैं ना काफी गेम को रॉ खेलता हूँ, मैं ऐसा कुछ प्लान करके नहीं गया था। रॉ घुसा था घर में, जो हुआ मेरी पर्सनैलिटी दिखी आप लोगों को, और बाकी ये मुझे ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि रिग्रेट की एक हो गया वो हो गया। ये हो क्या रहा है कि घर में इतनी गर्मा गर्मी हो रही है? चाहे वो रजत की बात करें, दिग्विजय की बात करें, सिद्धार्थ की बात करें, रजत की करण की बात करें, तो गर्मा गर्मी क्यों हो रही है घर में? गर्मा गर्मी एक तो ही है, देखो 50 लोग हैं तो पूरा वैसा माहौल है, समझ जाओ आप। ठीक है, बाकी ये है कि घर में ना मतलब धोखेबाजी बहुत हो रही है। एक बंदा कोई इस अलायंस में जुड़ रहा है, फिर अगले दिन किसी अलायंस में चला गया। तो इस सीन की वजह से ना मतलब एक तो लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते रह के, और इतने सारे लोग हैं तो देखो कलेश तो होना ही है। सबसे ज्यादा सिस्टम किसका हैंग है हाउस में? सबसे ज्यादा सिस्टम है ऐसे बंदा का है, एक आप लें। मैं देखो नाम नहीं लूंगा, पर जनता समझ जाएगी सिस्टम है उस बंदे का है जो अपने को राजा समझता पर है नहीं वो। कौन जीत रहा है आपके नजरिए में? कौन सबसे फेवरेट है अभी? देखो कि आप वहां रह के आए? मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाई जीते हैं, जो तीनों भाई अंदर गए हुए हैं, लक्ष्य, कटारिया और रजत भाई। बाकी देखो क्या होता है किसी और वो आपके सबसे लॉयल फ्रेंड्स भी रहे या कोई और भी है? क्योंकि ये तो आपके क्लोज रहे हैं पहले से, मगर कोई और भी बना खास दोस्त आपका? हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, हमारी अलायंस अंदर बन गई थी, तो इन तीनों के अलावा जैसे दुष्यंत कुकरेजा अच्छा है, वो रचित रोजा हो गया, डिम्पल, निक्की, अरबाज और जानवी, और 2-3 लोग और थे हमारी लाइन्स में, सपना जी होगी ऑब्वियसली। तो ये लोग भी लोगों के साथ हमारी अच्छी बातचीत थी, और मतलब साथ में खेल रहे थे हम लोग। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी चर्चाएं थी कि एल्विश क्यों नहीं जा रहे घर में, इसके बारे में आपने खुल के बोला भी है, बट क्या आपको लगता था कि उनको ये शो करना चाहिए? नहीं, देखो ऑब्वियसली एज अ कंटेस्टेंट तो नहीं करेंगे, एज अ होस्ट तो अलग बात है। एज अ कंटेस्टेंट तो हम ही जा रहे हैं उनका भाई भाई। अब तो अब यही लगा लो, अब जो लोग जीत के आ रहे हैं इतने शोज, वो भी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे हूँ। बस यही कहना चाहूंगा। बहुत चर्चाएं ये भी थी कि द लायन कौन है? द लायन एल्विश है, तो वो चर्चा आपने सुने भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एलिश भाई का भी नाम आया था, SR के सर का भी आया था, पर असल में मुझे भी नहीं पता यार गाइस लाइन कौन है। वो तो आपको शो के तब खत्म होगा शो, तभी पता लगेगा। तो अभी तक नहीं पता द लायन कौन है, आप कोई क्लू दे सकते हैं? क्लू तो बस ये है, हमारे सामने आते थे, बस इतना इतना दिखता था उनकी मतलब आंखों का, तो मुझे भी नहीं पता यार कौन है। वैसे तो वो तो रिवील हो ही जाएगा खैर शो के एंड में। के एंड में। ओके, चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर में अर्चित की, ये आपकी जर्नी जो है ओवरऑल एज ए, नॉट अब द 50 तो खत्म हो गया, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर ये कैसे शुरुआत हुई? क्या कब क्लिक हुआ है आपको आपके कंटेंट ऑडियंस के संग? कब आपको लगा कि हाँ यही मुझे अब करना है जिंदगी भर? मतलब हम लोगों ने ना व्लॉग्स बनाने शुरू करे थे, तो धीमे धीमे बनाते थे हम, मतलब व्यूज़ नहीं आते थे, फिर व्यूज़ आने शुरू हो गए, जनता को मज़ा आना शुरू हो गया। तो तब हमें पता लग गया कि हाँ कि जनता को मज़ा आ रहा है, तो और कंटिन्यू करते हैं। फिर बिग बॉस हो गया अलूज भाई का, तो ऐसे चलता जा रहा। बाकी ये है कि जनता का प्यार रहा, तो फिर हम भी बिग बॉस वगैरह और बड़े शोज में चले जाएंगे। आप करना चाहेंगे और रियलिटी शोज आप करना चाहेंगे? चस्का आपको पसंद आए? अभी मेरी तो पर्सनैलिटी पूरी खुल के ही नहीं आई, 10% आई है, और तो करने पड़ेंगे मुझे जनता को दिखाने के लिए। तो जनता से ये कहूँगा बस सपोर्ट करते रहो मुझे भाई। अभी तो आपको मुझे बताना है कि पूरा अर्चित कैसा दिखता है और क्या करता है। तो 50 नहीं, आप सब रियलिटी शोज का सिस्टम हैक करना चाहेंगे? ओके अर्चित, ये भी एक मैं सवाल है मेरे जहन में कि आपका इंस्टा हैंडल हम देखते हैं तो अर्चित बैड मॉस कौशिक है, ये क्या है? ये जो बीच में शब्द आया है, ये कुछ नहीं है, जनता का प्यार है, बस मैंने वैसे ही लगा दिया। और जनता मुझे ये कर रही थी ना कि बदमौश बदमौश, तो मैंने किया चलो ये लगा देते हैं, जनता को पसंद आएगा। तो बैड मैन गुलशन ग्रोवर हैं, बैड मॉस या बदमॉस अर्जित है? हाँ कह सकते हो। बाकी बाकी क्रिएटर ही हैं यार, जनता का प्यार मिलता बस करते रहते हैं।
चलिए, हम आपको विश करते हैं ऑल द बेस्ट आपके आगे के जर्नी के लिए भी। और कहीं ये रूमर ये भी फैल रहा है कि एल्विश कह रहे हैं कि आप गेस्ट अपीयरेंस चाहें तो अर्चित भी चलेगा मेरे संग, अकेले नहीं आ रहा मैं। देखो वो ये जनता का प्यार रहा तो क्या पता दोबारा वाइल्ड कार्ड में चले जाए। बस वो है कि ऑनलाइन हाइप मचा के रखो आप लोग कि वी वांट अर्चित बैक इन द 50 बिकॉज़ एवरीवन हैज बीन। डिड यू एक्सपेक्ट दिस इतना रिस्पांस होगा? नहीं, देखो ये है तो मैं ये चीज करके भी आया था ना, थोड़ा इसलिए सैड था मैं कि टीवी पे कैसे वो चीज निकल के आएगी, जनता प्यार करेगी नहीं करेगी, पर मतलब जो मुझे प्यार मिला बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस है, तो मजा आ रहा है मुझे, बस यही कहूंगा। चलिए अर्चित, और थैंक यू सो मच हमारे संग जुड़ने के लिए एंड कांग्रेट्स, जो आपकी जर्नी रही वो काफ़ी धमाकेदार रही और उम्मीद करते हैं आपका आगे का जर्नी भी ऐसे ही रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कैमरामैन आकाश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स, दिल्ली। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी जल्द आपको दिखने वाली है सिनेमा घरों में, ये फरवरी के महीने में। और इसकी लीड एक्ट्रेस जो है, जो इस फिल्म के जरिए डेब्यू भी कर रही है बॉलीवुड में, वो हमारे संग जुड़ गई है इंडिया न्यूज़ पर। प्रगति तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या फीलिंग है अभी, आपका डेब्यू होने वाला है और अभी आप प्रमोट करने आई हैं फिल्म दिल्ली में, तो क्या फीलिंग है अभी, व्हाट डू यू महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है हर एक्टर, हर एक्ट्रेस इसी दिन का इंतज़ार करते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। और मेरे पास मेरे से मिलने इतने सारे लोग आए हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। मैं नर्वस हूँ, मैं एक्साइटेड भी हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि लोग मुझे बड़े पर्दे पर कैसे पसंद करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये फिल्म आपके पास कैसे आई, वो कहानी भी आप बताएं हमें। ये बात है पिछले साल की, जब संदीप सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और राइटर भी हैं, वो मेरे पास आए फिल्म की स्क्रिप्ट लेके। और जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो ये यूजुअल से काफ़ी अलग थी, ये काफ़ी अलग लव स्टोरी थी, बहुत ही ट्रेजेडी है इस लव स्टोरी में और बहुत कुछ है, बहुत उतार चढ़ाव है, तो मुझे काफ़ी पसंद आई। और मेरा कैरेक्टर बहुत प्यारा था, बहुत सिंपल कैरेक्टर है, तो मुझे लगा कि यहाँ से मैं शुरुआत कर सकती हूँ, तो मैंने इस फिल्म को हाँ कहा। अभी हमने हाल ही में देखा एक और फिल्म आ रही थी घूसखोर पंडित, उसको लेकर भी काफ़ी बवाल मचा। घूसखोर पंडित एक फिल्म थी मनोज बाजपेयी की, उस पर काफ़ी बवाल मच गया क्योंकि फिल्म के टाइटल में पंडित था और उसके आगे घूसखोर लिखा हुआ था, तो ब्राह्मण समाज ने काफ़ी आपत्ति जताई थी। आपके फिल्म में भी एक समाज का जिक्र है यादव जी टाइटल में, तो कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहेंगे, हो सकती है या फिर कुछ ऐसा है नहीं फिल्म में जिसको लेकर यादव समाज नाराज़ होगा? नहीं, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। हम अपने कंसेप्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, हमें पता है कि इसमें कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। और हमने ये ध्यान भी रखा है कि किसी भी एक तबके की भावनाएं बिल्कुल भी हर्ट ना हो, तो हमने ये ध्यान रखा है। तो कंट्रोवर्सी जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी ट्विस्टेड लव स्टोरी है बस। या फिल्म क्या किसी सच्चे व्यक्ति पे आधारित है? ये सवाल मेरे दिल में भी आता है बहुत बार, क्योंकि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने अभी तक मुझे ये बताया नहीं है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी न किसी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड ज़रूर है, तो ऐसा मुझे लगता है। और लेकिन राइटर ने अभी तक रिवील नहीं किया है। और यादव जो होते हैं वो काफ़ी उनमें गुण होते हैं, वो सब दिख भी रहा है आपके एक टीज़र सॉन्ग में भी और टीज़र में। वो कैरेक्टर हमने पूरा रखने की कोशिश की है कि जो हमारा रहता है, बेसिक जो हमारा कल्चर है, कॉम का जो कल्चर है, वो सब हमने दिखाने की पूरी कोशिश की है, तो कैरेक्टर में वो झलकेगा। आपका कंटेंट भी लोग बहुत पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पर भी, तो ये कंटेंट क्रिएशन कैसे आपने चालू किया और कैसे आपको लगा कि अब क्लिक हो रहा है ऑडियंस के साथ? कंटेंट क्रिएशन मैंने 5 साल पहले चालू किया था और उस टाइम YouTube काफ़ी ट्रेंड में था, तो हमने YouTube से शुरुआत की थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कब वो इतना ज़्यादा बूस्ट हो गया और सारी चीज़ें वायरल होने लग गई। कह सकते हैं कि ये लक बाय चांस था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको इतना लंबा परस्यू करूँगी, लेकिन अब मेरा इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में, ये आर्टिस्ट लाइफ में इतना दिल लगने लगा है कि मैं इसे छोड़ने की सोच भी नहीं सकती हूँ। शुरुआत बहुत रैंडम थी, लेकिन मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। जी। हमने देखा अभी हाल ही में बृंदुल तिवारी दिखे थे आपके भाई बिग बॉस 19 में, उनको बहुत सारा प्यार मिला था, आपने कैसे उनकी जर्नी को देखी? मेरा भाई है, तो मैं उसके साथ बहुत टाइम से हूँ, ऑब्वियसली बचपन से ही साथ रहे हम, तो उसके बहुत सारे अलग अलग किरदार मुझे वहाँ पे देखने को मिले। मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था इतना,
तो वो बिग बॉस में रोया भी और वो अपनी चीज़ों के लिए जब उसने स्टैंड भी लिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मतलब मुझे उसके कैरेक्टर के अलग अलग कलर्स देखने को मिले। तो आई एम सो हैप्पी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसे, इतना प्यार दिया है, इतना पसंद किया है। लोग मतलब मैं कह रही हूँ छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक सब उसको प्यार करते हैं। और मेरा भाई जो है मतलब मेरा खुद अब मेरा भाई है इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर वो सच में एक अच्छा इंसान है। तो वो लड़े भी नहीं ज्यादा घर में, इसलिए क्या कहा भी जा रहा था उनको। वो एक दायरे को मेंटेन करके रखता है कि हाँ भाई एक रिस्पेक्ट है, उसकी बाउंड्रीज हैं, तो वो उसको मेंटेन करके रखता है। और इन रियल लाइफ वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, वो बहुत काइंड, बहुत हम्बल है और वो उसमें दिख भी रहा था, इसीलिए लोगों ने उसको पसंद किया। उनको मगर पसंद आ गई नटालिया, तो क्या आपको भी पसंद आई? अ, देखो मेरे भाई की पसंद मेरी पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको कोई भी पसंद होगा मैं उसका साथ ही दूंगी। अब आप तो आ गई है मूवीज में, तो क्या मृदुल भी आएंगे? मृदुल फिलहाल तो YouTube कंटिन्यू करेगा क्योंकि हाँ ऑब्वियसली वो चैनल जो है वो उस पर इतने ज़्यादा लोग हैं चैनल पे जो जुड़े हुए हैं और वो हमें क्वेश्चन करते रहते हैं अगली वीडियो कब आ रही है, अगली वीडियो कब आ रही है, आप कहाँ गए, वो वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम चाह के भी उस चैनल पे काम करना नहीं छोड़ सकते। तो मृदुल है फिलहाल YouTube को कंटिन्यू कर रहा है, मैं अभी फिल्मों की तरफ बढ़ रही हूँ और अगर मौका मिलेगा तो मैं और मृदुल खुद भी फिल्म बनाने की तैयारी करेंगे जी, ऐसा प्लान है। हो सकता है ये बहुत जल्द। जी हम कॉमेडी फिल्म्स बनाना चाहते हैं, मैं और मेरा भाई जी। तो उम्मीद करेंगे कि वो बहुत जल्द आए, मगर अभी आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे इस फिल्म के लिए। और एक लाइन हो जाए, क्योंकि आपने गाना भी गाया इस फिल्म में, तो एक लाइन हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, एक टीजर हो जाएगा फिल्म में क्या क्या उनको देखने को मिलेगा। फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो एक नहीं, एक गाना का लाइन। हाँ, तुझ में मैं थोड़ी थोड़ी सी खोने लगी हूँ, बस तेरी मैं होने लगी हूँ। तुझ में मैं थोड़ी थोड़ी सी खोने लगी हूँ, बस तेरी मैं होने लगी हूँ। बहुत बेहद खूबसूरत आपने गाना गाया। और ये गाना जो है वो दिल्ली में ही शूट किया गया है, तो दिल्ली के भी नज़ारे आपको इस फिल्म में दिखेंगे। पूरी दिल्ली के नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं आपको फिल्म में, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फिल्म के लिए। टू यू, थैंक्स फॉर कमिंग। कैमरामैन हिमांशु के संग उदय प्रताप सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं खास इंटरव्यू न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज पर। वी आर जॉइंड बाय जानवी किरण केलेकर, एक्टर, और ये द 50 रियलिटी शो से इविक्ट हो गई है। कैसी रही उनकी जर्नी और अब क्या कहेंगी उस इविक्शन पर? वेल, जानवी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो मच। सो कैसी रही ये जर्नी? एंड जब आप शुरू कर रही थी शो, क्या आपको उम्मीद था कि इतने जल्दी आप बाहर हो जाएंगी और इस तरह से? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगा था कि मैं एंड तक रहूंगी, बट अभी नसीब का खेल है। गलत जगह में फंस गई, गलत नॉमिनेशन में फंस गई। सब स्ट्रॉन्ग प्लेयर खड़े थे, तो अभी हो गया इविक्शन, अभी क्या करें। जी, कुछ कुछ चेंज करती अगर अब आप वापस देखती उस जर्नी को और इस मोमेंट को? कुछ चेंज करती, कुछ बदलती? बिल्कुल नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो भी हुआ वो गलत हुआ, अनएक्सपेक्टेड था। अपने ही लोगों ने धोखा दिया, ऐसा हुआ। और मेरा गेम तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। मैंने सारे टास्क खेले हैं, सारे टास्क जीते हैं इनफैक्ट। सो मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। मैंने मेरा 100% दिया शो को। बट मैंने जैसा मैंने आपको बोला पहले भी कि मैं गलत नॉमिनेशन में फंस गई। जी। और जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे वोट कर सकते थे, जी। वो सारे मेरे साथ खड़े थे नॉमिनेशन में। हाँ। तो अंदर मुझे वोट करने वाला कोई नहीं था। मतलब रजत मेरे साथ था, दिग्विजय मेरे साथ था, मनीषा मेरे साथ थी, निक्की मेरे साथ थी, अरबाज मेरे साथ था। जो मेरे दोस्त है, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, वो सारे के सारे नॉमिनेटेड थे। तो ऑफ कोर्स मतलब मेरा अंदर कोई फ्रेंड नहीं था। सो जो अच्छा मेरा फ्रेंड था, मेरा भाई था, उसने तो खुद मुझे नॉमिनेट किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे नहीं लगता मेरा गेम कोई वीक था। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी। और जैसे लायन ने भी अनाउंस किया
कि मेरे सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स नॉमिनेट हुए हैं, जी। तो ये वाला इस सीजन का तो अपने मतलब में ये देखने काफी, वाला होगा। हाँ, जी 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 अपने में काफी तारीफ है ये। जी जी जी। तो बस लायन ने बोल दिया, वहीं पे मैं जीत गई। सो यस। ठीक, अच्छा, अभी जो कौन है, हुआ। कौन है द लायन? ये भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। कौन है द लायन? वी आर वेटिंग कि ये रिवील हो। मुझे भी एक्साइटमेंट है, मुझे भी एक्साइटमेंट है, मुझे भी चेहरा देखना है लायन का। हाँ हाँ, कुछ क्लूज मिले आपको? जी नहीं, बिल्कुल ओके नहीं, बिल्कुल ओके नहीं। वो बहुत ओके। बड़ा सस्पेंस हाँ है। हाँ, पर आप चाहेंगे कि जी अगर आपको मौका मिले वाइल्ड कार्ड के तौर पे, तो आप वापस जाना चाहेंगे हाउस में, पैलेस में? जी जी जी, बिल्कुल 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 ओके जाना चाहूंगी। ओके। जी, अब मैं मजा आपसे आएगा, पूछ, अभी तो मजा आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि अब काफी कुछ सीख लिया है, और जैसे अब आपको पता है कि किसने धोखा दिया और किसने नहीं। अब मैं आपसे पूछना था जी जब जानवी की, इतनी गर्मा गर्मी हम देख रहे हैं हाउस में, ये गर्मा गर्मी की वजह क्या है? इतनी गर्मा गर्मी और डे वन से ही पैलेस में शुरू हो गई है, चाहे वो रजत की बात हो, प्रिंस की बात हो, अर्चित मैक्सन की बात हो, या करण की जी। बात हो, सिद्धार्थ की बात हो, अरबाज की बात हो, इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है हाउस में? मुझे लगता है ना कि सब मतलब गरम दिमाग से ही अंदर आए हुए हैं। हम्म। मतलब कुछ भी हो जाए, बातचीत करनी ही नहीं है हमें। जी। हमें डायरेक्टली मारना है एक दूसरे को। ऐसा सोच के आए, मुझे पता नहीं। और ज्यादातर जो झगड़े हैं वो बाहर के हैं, हम्म। अंदर का कुछ नहीं है इनका। तो जब ये लोग झगड़ते हैं तो मैं ऐसे बैठती थी, अरे ये कब हुआ था, ये क्या जी। बोल रहे हैं ये सब। तब मुझे निक्की ने वगैरह समझाया कि अरे नहीं नहीं, इनके बाहर के झगड़े हैं। तो हाँ ये सारे लोग ना बाहर के झगड़े लेके अंदर आए हैं, ओके। और फिर एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाँ। गालियां दे रहे हैं। सो कुछ समझने के मतलब लायक ही नहीं है। सब सब मतलब कुछ भी हो जाए, मारना है, बस मारना है, बस इतना ही है। अच्छा, ये रियलिटी शो का अनुभव आपके लिए कैसा रहा? ये आपकी जर्नी जो अब रियलिटी शो में कंटिन्यू हुई है, द 50 के थ्रू, हाउ इज दिस रियलिटी शो अनुभव आपके लिए? और क्या आप खुश हैं ये एक्सपीरियंस से भी, और भी रियलिटी शोज अब करना चाहती हैं आगे भी, या संतुष्ट हैं आप? जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे ओके बहुत सारे रियलिटी शोज करने हैं। ओके। और आपका जो पहला सवाल था, स्पेशल थैंक्स टू द 50 जी। जियो हॉटस्टार की, इन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। पूरे इंडिया में से द 50 कंटेस्टेंट, द 50 सेलिब्रिटीज में से मेरा एक नाम था। ये बहुत प्राउड की बात है पहली तो मेरे लिए। ओके। सो आई एम वेरी हैप्पी। और अगर मुझे चांस मिला कि और भी ज्यादा हिंदी रियलिटी शोज में, तो मैं हाँ डेफिनेटली करूंगी, डेफिनेटली। ओके नाइस। अच्छा, अब लायन कौन है ये तो आप बता नहीं रही हैं, या आपको खुद भी, जैसे आप कह रहे हैं, नहीं पता है? मुझे नहीं पता, मुझे हाँ, ही नहीं पता। मगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज। मगर ये जरूर आपसे पूछूंगा कि आपके नजर में इन द 50 पैलेस सबसे बड़ा हीरो कौन है, और सबसे बड़ा जीरो कौन हीरो तो मुझे मतलब कोई नहीं लगता है वहां पे, एक्चुअली नहीं है? लगता है। क्योंकि क्या है ना, मतलब सब किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस के नीचे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं बस। हमारी टीम बोले तो मुझे कोई हीरो नहीं लगता और कोई जीरो भी नहीं लगता एक्चुअली। हम्म। क्योंकि सब अपने अपने खुद के लिए खेल रहे हैं। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अम, अच्छा करना, मतलब झगड़ा कम करना चाहिए उन लोगों को, गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जो प्रिंस के सब इन्फ्लुएंस में है वहां, जो प्रिंस की टीम है, हम्म। मतलब अगर प्रिंस बोले कि अभी नाचना है तुम सबको, तो सब नाचेंगे। प्रिंस बोले अभी आपको खाना खाना है, पर थोड़ा सा ही खाना है, तो थोड़ा सा ही खाएंगे। ये जो प्रिंस ने जो बनाया हुआ है वहां पे, तो वो असली मास्टरमाइंड है प्रिंस, ऐसा मैं बोलूंगी। बट वो ये भी बात है, वो ना सब झूठ है, हम्म। सब झूठ है। क्योंकि प्रिंस भाई ने एक बार दिव्या को बोला था कि नहीं नहीं, जाह्नवी को नॉमिनेट करो। हम्म। हाँ। तो मैंने प्रिंस को बोला कि प्रिंस भाई आप मुझे क्यों नॉमिनेट। तो प्रिंस भाई बोले नहीं नहीं जाह्नवी, आपको क्यों मैं नॉमिनेट करूं, आपको, आपका मेरा कुछ झगड़ा भी नहीं है, आपको मैं क्यों नॉमिनेट करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नहीं बोला, आप उसको पूछो, मैंने आपका नाम लिया था, उसको पूछो। तो
मैंने बोला ठीक है, अगर नहीं दिया होगा, उसने खुद से ही मेरा नाम लिया होगा, पता नहीं अभी क्या हुआ दिव्या को। फिर बाद में अब जब मैंने बाहर आके मैंने टेलीकास्ट देखा, तो भाई प्रिंस ही जाके उसको बता रहा है कि नहीं नहीं अभी जानवी का नाम लेना है, जानवी का नाम, और यहाँ पे आके मुझे बता रहे हैं कि नहीं नहीं जानवी। मतलब आप कहना क्या चाहते हो भाई? आपको क्या कहना है? मतलब झूठ की बुनियाद पे आप अगर ये सब साम्राज्य खड़ा कर रहे हो तो वो बहुत गलत बात है। ओके, तो मास्टरमाइंड है, मगर आप कह रहे हैं कि ये झूठा साम्राज्य है उनका, वो वाकई में प्रिंस नहीं है। तो मैं तो उसको हीरो नहीं बोलूंगी, इसलिए मैं उसको हीरो नहीं। जीरो कौन है फिर? जीरो तो मुझे नेहल लगती है। मुझे वो बंदी बिल्कुल पसंद नहीं मुझे पसंद है। मतलब अगर कोई अच्छा खेले भी, फिर भी उसको उसमें से ना कुछ गलती बात निकालनी है। नहीं तूने ये किया पर ये क्यों किया? और एक टास्क था जिस कॉन्फिडेंस से वो गई थी, नहीं कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी, जो पहेली सुलझानी थी हमें और एनिमल्स करेक्ट करने थे। सो मेरे ख्याल से नेहल को भी भेजा था वहां पे और वो सब गलत करके आ गई अंदर। फैंस के लिए उसने जीता नहीं, तो खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती है। तो मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका एटीट्यूड ही मुझे पसंद ओके, तो नहीं। वो मुझे वो सबसे बड़ी जीरो जीरो। हाँ, और जी आखिर में अगर ऐसा ही चलता रहा जो आप देख रही हैं, गेम्स और जो अलायंसेस बन गए हैं, तो हु डू यू बिलीव इज द विनर अकॉर्डिंग टू यू? कौन बन सकता है विनर? एंड एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बाहर आ सकती हूँ तो कुछ भी हो सकता है। मैंने तो पूरे 100% मेरा दिया था गेम के लिए, टास्क अच्छे खेले थे, फ्रेंडशिप भी थी, सब था, सबसे मैं अच्छी, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब कंटेंट देना था तब तक कंटेंट दिया, बट फिर भी आज मैं बाहर हूँ। तो इस शो में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, देयर इज नो कुछ भी हो गारंटी, सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है जैसे आप कह रही हैं, मगर दो तीन कौन टॉप लग रहे हैं अभी आपको? टॉप तो लग रहे हैं मुझे, रजत जाएंगे, रजत जी जाएंगे मुझे लगता है। और ये बहुत ही सैड रियलिटी है, बट फिर भी प्रिंस जाएंगे। ठीक है। और अगर प्रिंस ने चाहा हाँ, तो उनकी वाइफ भी जाएगी। अच्छा। सो कहीं ना कहीं प्रिंस, युविका, रजत आपको दिख रहे हैं टॉप 3। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिक्शन है, देखते हैं। ये लायक नहीं है, मतलब रजत का ठीक है, ये बाकी लायक नहीं है, बट मैंने बोला कि ये सैड रियलिटी है, तो वो जा सकते हैं। ओके, सैड रियलिटी है, मगर रियलिटी शो है, कुछ भी हो सकता है जैसे आपने कहा। जानवी, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं आपके जर्नी के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमारे संग जुड़ने के लिए और न्यूज़ एक्स। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू।
कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। Hello and welcome. You're watching Newsx and I'm Vaishali Kohli. Now, a 22-year-old student from Karnataka has gone missing in the United States, raising concern among authorities, his family and friends. His name is Saket Srinivasai and he was pursuing his master's in chemical and biomolecular engineering at the University of California, Berkeley. He was last seen near the campus on February 9 or 10, and since then his whereabouts have been unknown. Saket, who completed his Bachelor of Technology in Chemical Engineering from IIT Madras in 2025, had come to the US to continue his studies. Local police have classified him as an at-risk missing person and have launched a detailed search. His backpack containing important items like his passport and laptop was found abandoned on a doorstep in a nearby neighborhood, adding to the concern. The Indian consulate in San Francisco has expressed deep concern and is working closely with his family and local authorities to assist in the search. Police have asked anyone with information about Saket to come forward immediately. Friends and classmates describe him as a dedicated and hard-working student, and his sudden disappearance has sent shockwaves through the UC Berkeley community. As the search continues, authorities and family members are hoping for his safe and speedy return. With that, let's first take a look at who the missing person is, what happened, and what is being done. So let me take you through that, viewers. We're talking about a Bangalore student who's gone missing in the United States. Now, what happened? Saket Srinivasai, a 22-year-old student, has gone missing in California. He was last seen on February 9 and 10. That's an image of him right there. These are his details. Now, locations including Lake Anza, Berkeley Hills, and near the 1700 block of Dwight Way. His backpack containing passport and laptop was later found on a doorstep in Park Hills, and the police say he went missing unexpectedly and the search is ongoing. That's what's happened so far. Can we have the next slide? All right, now he's from Bangalore, Karnataka, and is studying in the US. Saket is a postgraduate student at UC Berkeley in chemical and biomolecular engineering. Those are his academic details. And he completed his bachelor's in chemical engineering from IIT Madras in 2025. He has been studying in the US since 2025. So he just moved there last year. Now, Berkeley police have classified him as an at-risk missing person. Search is ongoing in Berkeley Hills, Lake Anza, and Tilden Regional Park. Authorities are asking anyone with information to come forward, viewers. These are the search efforts that are on currently. And his roommate has posted appeals on social media, and friends and classmates are sharing updates to raise awareness. His family is in constant touch
with the authorities. All of these family and community efforts are currently ongoing. Saket has been missing for several days. The case has received attention in India and internationally. This is the current status of this case. And now I'm going to go across to my colleague, Belly Thomas, who's joining me with more details. Belly, what more can you tell us? Yes, Belly, I'd request you to unmute yourself. Can you hear me? Yes, Belly. Please go on. Saket Srinivasaya is a 22-year-old Indian student in Berkeley, and he has been missing since Tuesday. And the Berkeley Police Department is seeking the public's assistance in locating him, and the authorities have classified him as an at-risk missing person. Srinivasaya was last seen in the 1700 block of the Dwight Way on Tuesday, and he's described as an Indian man who stands 6 feet tall, 6 feet 1 inch tall, and weighs about 160 pounds, and he has short black hair and brown eyes. Police have not disclosed further details about the circumstances surrounding his disappearance, but said that he is considered at risk. The Consulate General of India in San Francisco has also expressed concern over this case, and in a statement, the Consulate General of India in San Francisco has stated that they are deeply concerned about the disappearance of Saket Srinivasaya, an Indian postgraduate student of UC Berkeley, hailing from the state of Karnataka in India. The consulate is in touch with the family and also is in contact with the concerned local authorities to locate this student. Vaishali. I have Ambassador Sushil Singhal, who's a former diplomat who's joining me on the broadcast. Ambassador Singhal, a very shocking case emerging from the US. A 22-year-old student from Karnataka has gone missing. What would you like to say? Well, it's very, very sad. I think, I can understand the family must be really, really stressed. Such a young boy. And, they're saying that, his backpack is there, but there is nothing is known about him, what has happened. And of course, as you mentioned, the consulate is in touch with the family as well as with the police authorities. The kind of incident which are happening in USA, as we all know, it makes very, very, stressful for the families because, I would not like to speculate here, but the atmosphere in USA is very, very, difficult for the immigrant, for the people, for the non-Americans, I will use the term, and so it becomes very, very, threatening for them. And I hope that this person he's safe, and police is able to find out what really happened, where he is, and I'll be, but it's because of the situation there. It's a bit makes everybody nervous. I would use the term here. That sometimes the kind of elements are there. They try to harm the people, because we have seen some incidents where the Indian students were attacked. But in this case, there is no evidence, of course. But where he is, maybe he's been maybe kidnapped or something. Maybe there's maybe ransom demand for him coming shortly. I hope that he's safe and police able to find him shortly. Ambassador Singhal, I want to ask you about the fact that when the US police classify someone as an at-risk missing person, how does that change the urgency or diplomatic engagement in this case? When they say at risk, that means they fear that this person has been harmed in some way, kidnapping or some other thing has happened. So it becomes very, very urgent to figure it out, to find out, to investigate that what has happened to him and where he is. At risk is puts him in a very, very I will repeat myself, in a category where there's a danger to him, to that person.
Ambassador Singhal, thank you for joining me on the broadcast. And now, earlier today, viewers, in the Mulund, Mumbai, a part of an under construction metro pillar on LBS Road collapsed onto the road below. Tragically, one person lost their life and 3 others were injured, some seriously. The falling concrete hit a car and an auto rickshaw, and emergency teams rushed the injured to nearby hospitals. Authorities, including the fire brigade and police, quickly responded to clear the site and ensure safety. The Mumbai Metropolitan Region Development Authority has said it will cover medical expenses for those affected and is investigating the cause of the accident. Following the Mulund Metro tragedy, Congress leader Varsha Gaikwad posted on X and has criticized the government, saying citizen safety was being ignored and demanding accountability for the accident. Congress leader Varsha Gaikwad has strongly reacted to the tragic metro pillar collapse in Mulund. In a tweet, she called the incident not an accident, but a murder caused by administrative negligence, and questioned whether the safety of Mumbaikars has been compromised for contractors' profits. She has demanded strict action against the responsible officers and contractors, saying that mere inquiries are not enough. Gaikwad also criticized the government for spending crores on advertisements while citizens' safety is at risk, and promised that her fight for justice will continue until the guilty are punished. Shahid Ansari is joining me from Mumbai on this. Shahid, आप हमें लेटेस्ट क्या जानकारी दे सकते हैं और ये जो स्टेटमेंट आई है कांग्रेस की तरफ से, इसके बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? देखिए, पूरे मामले में जो है पुलिस जांच कर रही है और जैसा कि पहले भी इंडिया न्यूज से बात करते हुए जो यहाँ के जो जोनल डीसीपी हैं, उन्होंने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि पूरे मामले में जो भी है, अभी तो एक्सीडेंटल डेथ का मामला तो है, उसके साथ साथ जो ठेकेदार या ये लोग जो भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात अहम है कि जो नियम और कानून को जो है अगर किसी ने जो है अनदेखा किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये बात उन्होंने स्पष्ट कही है। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से 4 लोग जख्मी हुए हैं और जख्मी होने के बाद जो एक शख्स की मौत हुई है, वो जो हादसे के वक्त जो है पूरी तरह से जो है उसमें दब गए थे और दबने के बाद जब उनको वहां से निकाला गया तो उसी दौरान उनकी जो है मौत हो गई। हालांकि हॉस्पिटल ले जाकर उनकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी अहम बात यह है कि मेट्रो के जो भी काम चल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है जोनल डीसीपी ने कि हम इस मामले में जो है इस पूरे मामले में और भी क्या उसके ऊपर जो काम चल रहा है उसको भी जो है यहाँ उसको भी इस मामले में उन्होंने ये कहा है कि हम इसको लेकर पहले जो भी काम चल रहा है उसको रोके, मतलब कि ये देख कर कि उसको रोकेंगे ताकि जो है और कोई भी हादसे ना हो, और जो भी काम होगा उसके लिए भी नियम कायदे अगर हैं तो उसके मुताबिक ही ये सारी चीजें होंगी। और शायद बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी ना। मुंबई डेप्यूटी मेयर संजय घारी has issued a statement on Mulund Metro collapse, saying 4 people were injured in the incident, including 1 fatality. He said 2 injured persons are in a critical condition and are receiving ICU treatment. He added that Eknath Shinde has taken cognizance of the incident and will order an inquiry. He also stated that those found guilty will face strict legal action in Mumbai. Let's listen in. इस घटना में 4 जन इंजर्ड हुए, उसमें एक की मौत हो गई है। वो जिसकी मौत हो गई है वो यादव फैमिली से बिलोंग करता है और वो कल कड़वा से यहाँ पे आए थे। उनके घर में आज शादी थी बेटी की, यहाँ खरीदी करने के लिए यहाँ पे आए थे और दुर्दैव से उनमें से एक जन की मौत हो गई। रामदीन यादव करके उनका नाम है और 2 जन सीरियस है, आईसीयू में उनको रखा हुआ है। एक जो है वो नॉर्मल है और उसको प्राथमिक उपचार करके यहाँ पे छोड़ेंगे। और जो एक महिला ही है, महिला को थोड़ा यहाँ पे आँख के ऊपर लगा हुआ है और थोड़ा हाथ को, और उसको अभी डॉक्टर डिस्चार्ज दे देंगे। सीएम से कुछ बात हुई, एकनाथ शिंदे जी से बात हुई, मुख्यमंत्री यहाँ पे बात कर रहे हैं। शिंदे साहब को इस घटना की पूरी मालूमात हो गई है। उन्होंने जो इसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठाएंगे। इसकी पूरी इंक्वायरी होकर के जो फॉल्टी है, जिसने ये गलत काम किया है, उस सभी इंजीनियर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या जो कोई भी हो, उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। शाहिद अंसारी इज जॉइनिंग मी। शाहिद, ये जो संजय घारी की स्टेटमेंट आई है उसके बारे में और क्या बता सकते हैं?
देखिए, इस पूरे मामले में जबकि पहले मैंने आपको बताया है कि जोनल डीएसपी ने यह स्पष्ट किया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभी संजय गाड़ी ने भी जो है, उप महापौर जो है, इन्होंने भी जो है बता दिया है कि भाई ये सारी चीजें जो भी हुई हैं और इसमें जो भी खताकार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो उस दौरान जो है नीचे के हिस्से में लोगों को हटा दिया जाता है। उसकी वजह यही रहती है कि किसी भी तरह से कोई हादसा पेश ना आए या जानी या माली नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि काम के दौरान नीचे की ट्रैफिक का मूवमेंट रहा है, आना जाना जारी रहा है और बंद नहीं हुआ, और यही वजह रही कि जब हादसा हुआ है तो उस दौरान जो है बड़ी तादाद में वाहन वहां से गुजर रहे थे और फिर उसके बाद जो हादसा पेश आया, आपने वीडियो में दर्शकों ने देखा है कि किस तरह से जो है बड़ा मलबा जो है गिर गया है। तो अब चूंकि अभी ये तो जांच का विषय है, अब सारी चीजें जांच के बाद जैसे जैसे हो जाएगा, संभव है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, बने रहिए शाहिद. Now, following the collapse of a metro pillar, authorities have launched rescue relief and safety review at the site. One person has died and 4 others have been injured. A part of a cement metro pillar collapsed during construction and fell onto vehicles near the Johnson & Johnson company in Mulund. शाहिद, हम ये दोपहर से इस बारे में बात कर रहे हैं, बट थोड़ा हमें बताइए उनके बारे में जिनकी बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई है इसमें, और 4 लोग जो इंजर्ड हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है हॉस्पिटल में? हाँ, देखिए, कुल 4 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। एक शख्स जो थे उनकी जो है मौत हो गई है, उनकी उम्र कुछ 50 साल के आसपास है, राम यादव करके हैं, और उसके अलावा जो बाकी 3 लोग हैं, एक महिला भी है, बाकी 2 लोग और हैं, वो भी जो है जख्मी है, उनका इलाज चल रहा है। और अभी की बात करें तो राज्य सरकार ने जैसा स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जो जख्मी है उनका भी जो है इलाज किया जाएगा। अभी भी ये सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, हालांकि अभी तक उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, क्योंकि तबीयत जब तक उनकी अभी भी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि वो मलबा उनके ऊपर गिरा, उसकी जद में हुआ है। तो जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा तो उनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन अभी संभव है कि उनका इलाज चलने में काफी समय जा सकता है। जी, बने रहिए शाहिद. Now, meanwhile, some new visuals are coming in from the site of the incident. You can see on your screens, viewers, that the police and traffic authorities have cordoned off the area, and traffic has been diverted after a part of the cement metro pillar collapsed and fell. The debris has also been cleared from the site. शाहिद, हम अपने दर्शकों को ये विजुअल्स दिखा रहे हैं जहाँ पे पुलिस ने सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि देखिए, चूंकि जहाँ पे ये घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, अब ये जांच का विषय है। पुलिस की जांच जब तक मुकम्मल नहीं हो जाएगी, वो इस इलाके को जो है इसी तरह से बैरिकेडिंग करके रखेंगे। यहाँ किसी को भी जो है आने जाने के लिए इजाजत नहीं होगी, क्योंकि एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब तक जाए हादसे का जो है पंचनामा नहीं होगा, वहाँ पे जो है सैंपल वगैरह कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है इस इलाके को बैरिकेडिंग करके रखा जाएगा, ताकि जांच जो है सही तरीके से हो। और जो ऊपर से जहाँ से गिरा हुआ है वहाँ पे भी जो है पुलिस की टीम जाएगी, ताकि वहाँ पे उनके पता चल सके कि आखिर क्या वजह रही, क्या कमी रही है कि इस काम के दौरान जो है वो नीचे गिर गया। जांच में ये बात भी देखिए, प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि जहाँ पे ये काम चल रहा था कि उस जगह पे ऊपर के हिस्से में उसे जो फिक्स किया गया, उसे जाम करने के लिए जो मसाला वगैरह लगाया जाता था, वो अभी भी नहीं लगाया गया, अभी सिर्फ रखा जा रहा था, और इस दौरान फिर ये हादसा पेश आ गया। जी, शुक्रिया शाहिद जुड़ने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज अ केस ऑफ ब्लेटेंट नेग्लिजेंस. एंड नाउ मूविंग ऑन. A court in Balasore on Friday sentenced to death a man convicted of killing his wife by throwing acid on her in February 2023. Special Judge Dr. Abdul Sameem Akhtar awarded the sentence under the SC/ST Prevention of Atrocities Act. Besides a death penalty, the court also imposed a 50,000 rupee fine on the convict. Reports said that Chandan Kumar Rana, a resident of Santragaria, had thrown acid on his wife Benita Singh and 3 others, including her elder sister Barsha Singh and Barsha's 2 minor children, on February 20th, 2023. Benita succumbed to her injuries while undergoing treatment. On February 4, the court had held Chandan guilty. 6 other accused in the case were acquitted. Chandan had married Benita Singh, the younger daughter of Kartik Singh. However, within 1.5 months, marital discord surfaced after Benita discovered that Chandan had already been married and had 2 children from that marriage. She then left her husband's house. Later, when the accused visited his in-laws' house at Bhimpura on February 20th, 2023, a heated altercation broke out. In a fit of rage, Chandan allegedly threw acid on the family members. Benita's father, Kartik Singh, then lodged an FIR at Sahadevku police station.
अक्षय महाराणा is joining me with more details. अक्षय, इस खबर के बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बालेश्वर स्पेशल जज कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल समीन अख्तर ने एक अहम फैसला दिया हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी फैसला है कि एक पत्नी को उसके पति सीट से अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद जब गंभीर हालात में उनको कटक के सिविल में भर्ती किया जाता है, उसके बाद उनकी वहाँ मौत हो जाती है। ये तमाम बारे में जांच के बाद, तमाम पहलुओं को खंगालने के बाद जब ये मामला सहदेव खुंटा थाने के केस संख्या 56/22 2023 के मामला है। इस मामले में कहीं ना कहीं तमाम छानबीन के बाद जब आरोपी वहां से फरार हो जाता है, उनको अब पकड़ने की पुलिस कोशिश करता है। तमाम के बाद जब पुलिस उनको पकड़ लेता है, उसके बाद ये कार्रवाई होता है और कार्रवाई लंबे समय चलने के बाद अब ये अहम फैसला आया है। ये अहम फैसला कहीं ना कहीं जो विक्टिम है उनको कहीं ना कहीं एक राहत मिलने वाला फैसला है, जहां उनके पति को यानी जो चंदन राणा है उनको फांसी की सजा सुनाई गई है और ये कहीं ना कहीं एक अहम फैसला माना जाता है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Now, the Bangladesh Nationalist Party has thanked Prime Minister Narendra Modi for congratulating Tariq Rahman on the party's decisive victory in the national elections. In a post on X, the BNP said the outcome reflects the trust and confidence of the people of Bangladesh, which they've placed in its leadership and the democratic process. The party reaffirmed its commitment to democratic values, inclusivity and progressive development, and said it looks forward to engaging constructively with India to strengthen bilateral ties based on mutual respect, sensitivity to each other's concerns, and a shared commitment to peace, stability and prosperity in the region. Arzu Seth is joining me with more details. Arzu, what more can you tell our viewers? Arzu, am I audible to you? Party BNP on Saturday acknowledged the Indian Prime Minister Narendra Modi for his congratulatory message following the victory in Bangladesh parliamentary elections earlier this month. And in a post on X, the BNP expressed appreciation for Modi's message and recognition for its leadership. Thank you very much. It was written in the post of Modi, and we appreciate your kind acknowledgement of Mr. President, Prime Minister's leadership in security.